Yo, chat, I'm live and we are here for another Jagarata of tournaments. 3 streams in a row. Let's go for a chat. So we start with the first one. MPL India Chess 2 Day 2. Now, first thing is, I think Gukesh has withdrawn from this tournament. I think he has some maintenance issues. I just checked. So I think Gukesh will not be playing this tournament anymore. And basically, whosoever has played against Gukesh, their scores will be nulled. So basically, if you defeated Gukesh, you're kind of unlucky. If you lost to him, you're very lucky. And regardless, Gukesh will not play this tournament anymore. But बाकी सारे लोग वहीं के वहीं हैं. Nihal, Arjun, I think we'll focus on Nihal and Arjun's games. And it's going to be very important now. Yo chat, क्या हाल है? What's up? What's up chat? What's up? What's up? Nihal on fire indeed, dude. Nihal is playing Visay Kanar, by the way, and Arjun's playing Harsha Bhartakoti. I guess we'll go to Nihal's game and Arjun's game alternatively. ये सैड क्या चल रहा है भाई तुम्हारी लाइफ भाई? ये सौरभ कुमार सैड वाले भाई 2 साल हो गए सौरभ भाई तुम्हें चैट में. तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी भाई? कब तुम सेटल हो गए यार? आप ठीक हो भाई? चल रहा है, बस कट रही है भाई. गले की बैंड तो बजी है, बट इट्स नॉट द वर्स्ट माय थ्रोट हैज बीन. आई हैव सीन वर्स, सो आई एम लाइक आई कैन हैंडल दिस आई थिंक फॉर नाउ. एंड लकीली कल 9 बजे इसका शाम को रेस्ट डे है, तो कल 9 बजे शाम को है नहीं. सो आई विल गेट दैट रेस्ट अ लिटिल बिट टुमारो नाइट एंड देन परसों फिर से सेम आज की तरह होगा. टीनेज में कौन सेटल मतलब कोई तो हो यार, कोई तो लाइफ में हो. एनीवेज chat, do like the stream and let's go. We will start in just a few seconds. I think the first game. कौन है कि Gukesh will not be playing chat. He could not find internet connection. Now I have personally been a victim of that as well because वो ऐसी मजे में लिख रहे हैं सैड वन भाई. वो ऐसी बेसिकली आजकल चैट में ना स्ट्रीम से पहले ट्रेंड चलने लगते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर सैड या हैप्पी समथिंग लाइक दिस. Anyways, we have Arjun's game. So chat, Gukesh is not playing this tournament. He has some maintenance issues. I also suffered from this when I was commentating on Chess 24 last time, so I can relate to it. Oh, we have the Veresov, maybe the Jobava London. Let's see. Yo Chesji bhai, and d5 played bishop. We have the Jobava London by Erigesi Arjun. Will he go knight b5 or will he just play solid? Yo Akshat bhai, yo Captain Wagar, is you streaming a full-time job? What do you think? आपको देख के खुशी हुई. Thanks भाई. खुशी हुई आपको भी देख के यार. Gukesh not playing what? Gukesh is not playing the tournament because apparently Gukesh को चक्कर हो गया यार because he could not find internet connection. It happens chat. इंडिया में बहुत होता है ये. बहुत होता है यार ये. You cannot find internet connection sometimes. It happens. अरे thanks for the gifted membership भाई. स्टेफन को मिली इस बार किसी जान पहचान के बंदे को. Thanks for अक्षत भाई. I still cannot figure out how it works though. I went to many live streams today trying to figure out कि भाई कैसे भेजते हैं. मेरे को समझ नहीं आया, but thanks a lot भाई. I am enjoying winter in summer. भाई ये सही है यार. 6 महीने आई थिंक winter ही मनाओ. I think बढ़िया है भाई ये. Oh, he went knight b5 and now c6 I think. Sorry, मेरा नाम नहीं दिखा गया भाई. लड़कियों को और गिफ्टेड मेंबरशिप वालों को तुम्हारा नाम नहीं दिखता सौरभ भाई. ये तुम्हारी गलती नहीं है. भगवान का दिया हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है एग्जैक्टली. सदर्न हेमिस्फीयर एग्जैक्टली. And now chat h4 played, so Arjun is going for some sort of attacking play. Let's see what Harsha plays. मेरे आज ही एक्चुअली न्यूजीलैंड से कजन आई है यहाँ पे इंडिया में. सो शी वाज टेलिंग कि कैसे मतलब उनकी एक्चुअली शादी होनी है आई थिंक लेटर दिस ईयर. सो शी इज कम हियर फॉर स्टफ. वेल ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट मैरिड. तो शी वाज सेइंग कि मतलब कैसे ना मतलब वहाँ पे लाइक कभी हुआ ही नहीं मतलब ये सब अल्फा वेरिएंट बेटा वेरिएंट और कौन सा था भाई ये जो हमारा जो इंडिया में तहलका मचाया जिसने लाइक इतने सारे वेरिएंट हुए नहीं. सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ है भाई उनका ओमिक्रॉन बस. That's kind of crazy, right? They did not even see the delta variants and so on. आपको इंटेलिजेंस का आइडिया है? ACM हाँ भाई आइडिया तो है. सिग्मा नहीं है भाई. सिग्मा वेरिएंट का नाम नहीं है, वो तो मेरा नाम है. Anyways, Gukesh won't play any games or no, he will not play. And जितने गेम्स हो चुके Gukesh के they will be nulled basically, zero हो जाएगा. New Zealand does not have chess culture. I think it is true. Yeah, that's true. New Zealand PM is great. That's true. अभी मंकी पॉक्स वेटिंग भाई. मैंने सुना 550 केस हो गए भाई मंकी पॉक्स के. भाई क्या चल रहा है ये? What the hell is going on chat? अब मंकी पॉक्स ही बचा है क्या? यो मतलब भाई Duda is for sure unrated भाई. He qualified the candidates man for sure. एक गेम खेलोगे बिल्कुल भाई. I think 3 दिन बाद. भाई मैंने आज देखा, you will not believe this. Apparently there is this caterpillar
जिसको अगर तुम थोड़ा छेड़ो ना, लाइक इफ इट गेट्स स्कैर्ड इट कैन टर्न इनटू अ स्नेक. आई वाज लाइक व्हाट द हेफ इज दिस. भाई एक कैटरपिलर स्नेक में बदल जाता है भाई. मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा है. आई वाज लाइक सो स्कैर्ड भाई. कैटरपिलर स्नेक में भाई. काश मैं भी स्नेक बन जाता भाई जब कोई मैं डराता. लीव ह्यूमैनिटी रिटर्न टू मंकी. वाह या लडविक पे एग्जैक्टली. अरे ये हुई ना भाई हाई फाइव. लडविक में देखा भाई मैंने इंडीड. आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या है यार. इंडिया में उसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं भाई वो. नहीं भाई एम्बर हर्ड की बात नहीं कर रहे. कुछ भी नहीं भाई. दिस इज फैक्ट. लडविक की वीडियो देखो लेटेस्ट. आई वाज लाइक ये क्या है. Arjun has studied Hans Riemann Joao London course. Yeah, but he's not studied my course here on the London. So that's why he's going for this. If you had seen my course, he would go for the main London, by the way. न्यूजीलैंड जाके आप भी ओलंपियाड भाई. अरे यार देखते हैं यार. हद क्यूट है भाई. सीख बिल्ली हद क्यूट है यार. Let's go 95 by the way. We should delay castling. मतलब we can also have this option by the way. So let's just play 95. That makes a lot of. Yeah, he plays 95, keeping all options flexible. You do not move the bishop. Maybe I will take. Maybe I will not take. You don't know. Maybe I will just play bishop e2. So you keep it flexible and play 95 first. विषय गेम शाम को है भाई. शाम को है. अरे सर्च लडविक भाई recent video. Caterpillar looks like a snake. Doesn't. हाँ looks like a snake but we don't give a shit right. हमें देखा हमें snake लगेगा ना भाई. ऊपर से पूरा येलो येलो उसके दांतों पे है मेरी शर्ट की तरह. It looks like poisonous. सांप को देखना है. मेरी एक्स को देख सकते हो भाई सकेत भाई. हाउस योर थ्रोट. अरे भाई हाउस द जोश की वाली फीलिंग हो गई बट उसका अच्छा नहीं है. बट चला लेंगे काम यार. आप भी ले लो साहिल भाई और रियल लाइफ कैट गैम्बिट करो. हाँ बट जैसे में वीडियो फुटेज नहीं है ना. आई कैन नॉट शो माय ओपोनेंट की भाई देखो असली बिल्ली है. 95 प्लेड नाउ. हर्षा बरतुकड़ी सिंह. लेट्स गो टू निहाल्स गेम. निहाल गेम में क्या चल रहा है भाई. निहाल इज ब्लैक बाय द वे. सब्सक्राइबर्स की पेस आपकी एज की तरह ही बढ़ रही है भाई. ये क्या तमाशा है यार. ये आयुष भाई क्या हाल है. विषय मैं इसको हरा पाएगा भाई. लेट्स होप सो यार. लेट्स होप सो. आई एम होपिंग फॉर इट कि वो हरा पाएंगे. लेट्स होप सो. चुस्की बॉटल ले ली ना. भूल जाता यार. लेनी पड़ेगी यार. की फॉरगेटिंग. टाइम ही कहाँ है भाई. दिन में टाइम की बहुत कमी है मेरे पास. अभी समय की बहुत कमी है. निहाल इज वीटिश. अरे यार एनीवेज स्किन कलर नहीं भाई. पीसेस का कलर. एंड आई थिंक ही कैन आल्सो गो 94 हियर. Try to basically use this pinned knight somehow. He could castle. I mean that's what I would play. But निहाल को जानते हुए like he might just go here. वो स्नेक देख के आ रहा हूँ. Thanks for ruining my day. भाई खतरनाक है यार वो. समय की कमी तो अभी सबकी लाइफ में है. भैया आज ही समय से बात हुई थी मेरी आज सुबह. पता नहीं उसने एक मैसेज किया था. मैंने उसको कल कहा था कि भाई मतलब टेक केयर करके बिकॉज ये कोविड. तो आज ही बात हुई थी. तो आज के लिए मेरा समय का कोटा पूरा हो गया. Vichy has white versus Magnus and that too after a rest day. Yeah, so that is a great deal, right? So he can prepare really well against Carlsen. 5 साल पहले की वीडियो है ना. या अभी अपलोड हुई है. अभी अपलोड हुई है यार रिसेंट. गला कैसा है भाई. गले की लगी पड़ी है. Chat like the stream. It's going to be Nihal Sareen. It's going to be Arigesi Arjun. It's going to be Raunak Sadwani. It's going to be and Sahil Tikku commentating on it. Let's see भाई कौन जीतता है भाई ये टूर्नामेंट. बिकॉज बहुत कुछ स्टेक पे भाई. $100,000. That's 100,000 times my net worth. And yeah, and of course some great players like मधवंती का ओलंपियाड खेल रही है. Like इंडिया के बी टीम और सी टीम का ओलंपियाड के सारे प्लेयर यहाँ पे हैं. So I think we need to really focus on who will play well, and they will also focus on it because after all, they need to decide कि top 4 players हर टीम के कौन होंगे. Who will be the guy? Who will be the extra जो lower boards का खेलेगा? And that might be based on performance in this tournament. It really depends on that. चैनल ने बताओ साफ वाला. लडविग E4 E5 Knight H3 आना चाहिए. किस पोजीशन में भाई. गुकेश को क्या. गुकेश को नेट नहीं मिला यार. गुकेश को नेट ही नहीं मिला भाई. बताओ $100,000 का भी दाव हो तो इंडियंस को नेट नहीं मिलता भाई. मैं आई कैन टोटली रिलेट टू दैट भाई. लिटरली भाई इंडिया में नेट की इतनी कमी है. प्लीज भाई सर्विस प्रोवाइडर्स प्लीज. थैंक्स कैरोलॉन्ग. साहिल टिक्कू अवेलेबल फॉर सेल फॉर 73 रुपीज. बाय 1 गेट 1 ऑफर. अच्छा नाइस. What is in London system and Joa London? Jobava London में the knight is on c3 and in the actual London system you win the game. That's the difference. बेचारा गुकेश hashtag. भाई बेचारा नहीं है यार. देखो when I could not commentate one day, like जब मैं commentate नहीं कर पाया
तो एट दैट पॉइंट इट्स लाइक मतलब इट वाज माय फॉल्ट इन द एंड. नो, लाइक आई कुड नॉट गेट इंटरनेट, मेरा नेट चला नहीं एयरटेल का, सो आई कैन नॉट ब्लेम लाइक लक ऑन दैट. आई कुड हैव हैड टू इंटरनेट कनेक्शन लाइक आई हैव नाउ. आई हैव बीएसएनएल एंड एयरटेल. कल को एयरटेल ना चले तो बीएसएनएल बैकअप के लिए रखा है मैंने. सो ही आल्सो नीड द सेम मैन. यू कैन नॉट ब्लेम लक लेटर ऑन. आई मीन यू कैन ऑन दैट डे बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. Joe Mama London, yes, Joe Mama London. That sounds like a better name, to be honest. Back to work. Take care. बिल्कुल अक्षत भाई. Let's go chat. G4 played by Arigesi Arjun. He's launching an attack. ये नाइट क्या करने आया है B4 पे भाई? ये क्या करने आया है भाई? अगर धक्का लाऊंगा तो अच्छा C6 जाएगा. ओह, अच्छा, makes sense. Yo gaming guys भाई क्या हाल है? BSNL, यो वीके भाई क्या हाल है? BSNL हाँ भाई यार, बैकअप के लिए लगाया मैंने. यहाँ पे 2 ही कनेक्शन आते हैं, एक एयरटेल और एक BSNL. कुछ है ही नहीं और कोई चॉइस ही नहीं है भाई. गुकेश वाज ऑलवेज एनीवे स्ट्रगलिंग, सो दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. आई एम नॉट श्योर यार, मतलब बिकॉज तुम खुद सोचो ना, फॉर प्लेयर्स हु हैव प्लेड अगेंस्ट गुकेश, चिदम्बरम फॉर एग्जांपल, ही विल बी रियली पिस्ड because he got 3 points clearly. Now if he does not win the tournament and if he loses by 3 points, he'll be really mad, and I can totally relate to him. So it's like it will be kind of weird. नाइट आराम करने आया है भाई. आराम अपने घर में होता है भाई, दूसरे के घर में नहीं. आई मीन अगर आप मेरे घर में आके मिलने आ जाओ मुझसे और बोलो मैं आराम करने आया, भी लाइक भाई व्हाट द फक. सो आराम करना है तो अपने घर में करे भाई. जस्ट सेइंग. फैक्स किए हो. फैक्स क्या होता है भाई? फिलहाल कौन लीड? फिलहाल चिदम्बरम भाई लीड में थे, बट अब तो पूरी स्टैंडिंग्स ही हिल गई होंगी भाई, पूरी की पूरी. सेलेक्ट थी क्या होता है मेरी दिन की डैश. ओके संकेत भाई, ये क्या था मुझे समझ नहीं आया. Anyways, let's go to the game of Nihal Serene again. और निहाल ने नाइट टू D5 खेल दिया है. सो वाइट के पीसेस थोड़े से अजीब लग रहे हैं चैट. फॉर एग्जांपल नाइट टू A5 एंड द क्वीन इज विल हैव टू गो टू D3 एंड आई कैन टेक ऑन D3 नाउ. एंड वाइट के स्ट्रक्चर के तो इतनी बुरी हालत है जितनी मतलब या और पॉन भी मर रहा है भाई. छी ये तो खत्म हो गया यार वाइट ऑलरेडी. निहाल डिस्ट्रॉइंग वैसे कनार. आई जस्ट सॉ द स्नेक. एग्जैक्टली भाई. Yo, Tanish bhai, do you think Carlsen will get as much fame as Kasparov Fischer after he retires? For sure, dude. I mean, for sure. He'll be the most famous chess player on the planet until I finally get the Super GM title. I mean, it's going to be there for sure. Let's go to the game of Mutraba Gua against Vantika. यार Vantika के सारे बेनोनी क्यों आते हैं रे? मतलब सारे गेम बेनोनी. Like अब तक पांचों राउंड में she's got the Benoni structure as white and black. ये क्या चल रहा है भाई? What is this? What is this nonsense? I mean, कुछ और भी क्या? ये क्या हो रहा है भाई? Anyways, let's go to the game of Gukesh once. Gukesh तो खेल ही नहीं रहा है. My bad. Sorry Gukesh. Let's go to the game of Arjun. 4 स्ट्रीम लाइक कर दो भाई. 200 लाइक हो जाए जल्दी से तो मुंह में पानी आ जाए भाई. जल्दी से let's go. अरे अरफन भाई ये क्या ही है भाई? गुकेश का क्या हुआ? गुकेश भाई सो गया यार. आपके चाचा जी मिले थे मुझे दिल्ली में. मेरे चाचा जी, क्या नाम है उनका सनम भाई? मुझे बता दो यार. कल वैंग हाउ का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा? वैंग हाउ का? हाँ मैंने वैंग हाउ का देखा क्या? नहीं, मैंने अनीश का देखा, विशी का देखा. मैंने वैंग हाउ का नहीं देखा यार. अभी देखना पड़ेगा. उसने लिखा था ना कि मतलब ही इज ओके लूजिंग टू विशी आनंद. या आई मीन आई एम आल्सो ओके यार. मेरे भी ईगो नहीं है. आई एम आल्सो ओके लूजिंग टू विशी आनंद. भाई स्टैंडिंग दिखाओ ना. रुको यार. ठीक है. एनीवेज कहाँ थे हम? गुहा सिर्फ पॉन से खेल रही है क्या भाई? गुहा लड़का है भाई. नो ऑफेंस, गुहा लड़का है यार. गुहा सिर्फ पॉन से खेल रहा है, खेल नहीं रही. वंतिका लड़की है भाई. लेट्स मेक दैट क्लियर. गुहा को लड़की ना बना दें. अब स्लीपिंग भी दिखा दो. स्लीपिंग नहीं दिखाना यार. स्लीपिंग इज फॉर पर्सनल एंटरटेनमेंट ओनली. क्या जोक था वाह बेटे. थैंक्स भाई. लेट मी लुक एट द एक्चुअल स्टैंडिंग्स दो एक बार. आई थिंक चेस 24 की स्टैंडिंग्स एक्यूरेट होती हैं. लेट मी शो यू वंस. ये स्टैंडिंग नहीं दिखाई थी. अरे माय बैड. रुको, मैं गलत समझाया. मैं ही डम्बू. रुको. लेट मी शो यू द स्टैंडिंग्स भाई एक बार. आई थिंक तुम इसकी बात कर रहे थे शायद. सो रौनक स्टिल इन द लीड. आई थिंक दे हैव नॉट एडिटेड द पॉइंट्स येट. तो अभी स्टैंडिंग दिख नहीं रही है. अभी गुकेश को बाहर निकाला नहीं उन्होंने टूर्नामेंट से, तो स्टैंडिंग अप टू डेट नहीं है. तो स्टैंडिंग चेंज हो गई अभी. सच बोलो ना, गुकेश इज नॉट प्लेइंग. ठीक है ओनली यार. अब तुम सच पूछ रहे हो तो यार गर्लफ्रेंड ने डेट पे बुलाया था, गुकेश चला गया यार. आई मीन अब क्या करें यार. आई मीन आई डू नॉट वांट टू रिवील दिस बट
क्या तुम इतना मजबूर कर रहे हो तो आई हैव टू से इट नाउ. आई मीन ऑफ कोर्स इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसके पास, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई. डू यू थिंक अर्जुन कैन मेक अ कमबैक टुडे? या ही हैज टू डूड, ही हैज टू, and he has that position. Yeah, he can play queen d2, even castle queenside, and then launch an attack on the king. He's prepared for it for now. This will be kicked back, and then the bishop can go to d3. So I think he has a decent position here. Arjun on how many points? Arjun is way back, man. He's on 3 points, I think. Without being rude, Wang Hao का इंटरव्यू देख के भी फायदा नहीं, आधा तो कुछ समझ नहीं आ रहा. यार I don't know if that's true. I've not seen it. I can't comment. 378936. ये क्या है भाई? What the hell is this? मेरा बर्ड, मेरी एज उम्र तो नहीं लग रही यार ये. Chad Gukesh is not playing because कुछ चक्कर है उसका. Apparently he does not have internet connection and he could not play the tournament. That's very weird to me because if $100,000 were at stake, I would probably have it. But I can relate to it because I also had the same issue when I was commentating on Chess 24. तो मेरा बिल्कुल same issue हुआ था and I can totally relate to it. But yeah, it is weird. And justice for the people who actually defeated him yesterday. So it's kind of unfortunate. I feel bad for them actually. भगवान से सिर्फ 2 साल छोटे हो तो इज्जत करो भाई, फिर इज्जत करो मेरी, तुम समझे. मोबाइल डेटा पे खेल लेता, अरे नहीं वो तो इम्पॉसिबल है यार. Because you need that, camera, Zoom calls, everything to make sure of fair play. You cannot do it on phone. ये सीओ भी नहीं है भाई कि कोई मतलब अपना कहीं से बैठ के खेल रहा है. भाई गला सही नहीं लग रहा आपका. टेक केयर. वो थैंक्स अबाउट देवांशु भाई फॉर द काइंड वर्ड्स. सूर्या गेम किधर है भाई? सूर्या गेम इधर है यार. ये सूर्या गेम है. फॉर नाउ सूर्या स्लाइटली वर्स आई थिंक. वाइट के पास सेंटर बड़ा खतरनाक है. ही जस्ट हैव वन एक्टिव नाइट, सो सम चांसेस, या मतलब लाइक दिस. बट फॉर नाउ वाइट डज सीम टू हैव द सेंटर, सो वाइट इज बेटर. ही आल्सो हैज द बिशप पेयर. Surya slightly worse, I would say. Nihal's game, if we go, a lot happened, chat. Knight a5, queen d3, takes, bishop c3, pawn takes, knight takes, bishop d2, now knight d5, and luckily this knight is defended by the rook. And now rook c1, knight c6, rook b1, f6, preventing knight e5 ideas. And now he will slowly, he can even castle, he could even play king f7. Slowly he might even play rook a7, bishop d7, and this rook to a8, possible. रुकेश के मैचेस में ओपोनेंट को ब्रेक मिलेगा क्या? हाँ ब्रेक मिलेगा. आई थिंक आप ब्रेक मिलेगा. आप डायनासोर एक्सटेंशन देखे थे ना लाइव? हाँ यार बिल्कुल भाई, वहां पे रैट पॉइजन ही मैं मरते हुए देखा था. एक फर्स्ट बॉट ऑफ द डे यार. जस्ट ट्राई दिस चीपेस्ट वाला पहला बॉट है. वेलकम. यू आर बोर्न राइट आफ्टर द अर्थ वाज क्रिएटेड. नाइस. बाय द वे पुराने भाई जीत रहा है क्या? आई थिंक द बार शोज इट्स मच बेटर. मैं ध्यान से, I thought it's slightly better, but apparently it's much better for some reason. I don't know why. Chess 24 दिखा रहा था, अभी वापस चला गया. Vantika is apparently winning against Mitrava Guha. Really? Vantika is apparently winning all her games, but somehow she does not end up winning them. Let's see. She's again better here. The knight on h5 looks quite stupid, I have to admit. If you go back, the d6 pawn is also hanging. So I think Vantika might just win this one against Guha. Let's go Vantika. Revenge for me. Let's go. Gukesh is not playing, chat. उसको कुछ चक्कर हो गया. He's not playing because of some internet issues and he will not be playing tournament. He's withdrawn. For once, Vantika up on time. Vantika draw, not really. What do you think top Indian seed player has chance to be in? What young Indian chess player has a chance to be in top seed? Top seed, I think you mean the winner in this case. I would say, for now, Nihal looks the favorite, man. Nihal or Chidambaram, both of them. अभी देखा लुडविग का वो बाइक वाला सीन बहुत सही था. हाँ भाई लुडविग इज द बेस्ट टीम ऑन द प्लैनेट मैन. डू वॉच हिज कंटेंट. यूट्यूब वालों को $1 million मिले हैं टू प्रमोट दीज बॉट्स. क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ भी. ये किसने बोला भाई तुम्हें? हु सेड दिस? गुकेश का सिचुएशन का कमेंट पिन कर दो. आई शुड प्रॉब्ली डू दैट. गिव मी अ सेकंड चैट. रुको. Okay, that I should pin. Chat, do like the stream, bhai. Let's go. Let's get to 200 likes. वो turtle वाला भी मस्त था indeed. Prag नहीं क्या? Prag is already qualified, chat. Prag is already playing the main CCT event. So ये खेलने का उसके लिए point नहीं है. And he's already earning a lot more money there. मेगानदान बातें हैं. अच्छा, मन गणित बातें. अच्छा. टॉप इंडियन यंग प्लेयर्स में टिक्कू जी नहीं है. नहीं यार. उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपने टॉप यंग इंडियन बोला. उसमें 3 एडजेक्टिव थे. टॉप, यंग और इंडियन. उसमें से एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टॉप की है और यंग की और इंडियन की भी हो सकती है. हिज ओपोनेंट विल गेट फ्री 3 points. नो, दे विल बेसिकली गेट अ बाय. आई थिंक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टोटल स्कोर में.
अर्जुन का गेम दिखाओ टिक्कू जी. अरे अर्जुन गेम चलते भाई, लेट्स गो अर्जुन गेम. अर्जुन जी भाई सफेद कलर से खेल रहे हैं एंड उसने G ओपन कर लिया है. आई डोंट लाइक हर्षा's पोजीशन हियर. द ओनली क्वेश्चन इज हाउ डज द क्वीन कम इनटू द प्ले. एक बार क्वीन घुस जाएगी ना, it will be over, but somehow there's knight c2, so you can't really move the queen here for now. Bottom Buddha India placement Tikku ji for sure. Who is leading? For now it's Chidambaram. Indian की problem नहीं है भाई, मजाक था यार. 14th August trophy. Beside VD, who should be at top now since Hari Adiban and all are just not in form since long time? Who should be is kind of not a correct question, right? Because should be कैसे मैं अपना नाम ले लूँ भाई, मैं आपका नाम ले लूँ भाई. Should be is not the correct question. I think the question is who could be, not should be. Could be के चक्कर में I would say I think it has to be one out. If you are discounting Hari Krishna, which I'm not sure about, in that case it has to be, I think, apart from Vidit, Nihal slash not even Nihal right now. Probably Arjun. H6 is possible for sure. For sure, I think it might be a good move because after H6, G6 is first, and that really makes his bishop really bad. And also, I can sacrifice on G6 later at some point. Yeah, Arjun is the most likely man. Although he's not playing so well here, but I think we might see change of fortune in this today. Kashmir is an integral part of India. Yes, bhai. Is Magnus losing his class? Bhai, आज ही मैंने second channel video लिया. Magnus is back, bhai. Do check that video out. Adiban को top 100 से भी out हो गया है. I know, man. And you know what? Like, the first national tournament I played ever was in 2013. I left just after that. But regardless, Adiban was the champion there. He was 2-1, 8-1 back then. Kolkata mein tha. And he's always been the guy who's been very ambitious and really strong. So, Sethuraman was the top of the tournament, but he defeated Sethuraman in that tournament. And I think Adiban is, I mean, he's a bit busy with his personal life, I guess, marriage and everything. He will come back, dude. He will come back. And then he will even reach 2700 again. I think so. At least that's my perspective. It's just about morale, I feel, a little bit. Bishop h6 is possible. But the issue here is if you play this, I mean, there is no, I would say, clear threat because I can just take on h5 and I defend g7 now. And that's why the bishop is on e8. So I would say probably first play h6. That's a more logical move. You could bishop e2. I mean, looks a bit slow, right? Looks a bit slow. I think it's slow. Black can also play d4 and you can break in the center while your king is in the center. I don't like it. So I think h6 is the best move. And then kick the knight back quickly. Jaldi se धक्का लगाओ उसको. ये knight बहुत तंग कर रहा है यार. मतलब we can't move the queen to the king side purely because of this knight. Anand, for absolute amazing performance thus far in the current tournament. Indeed, man. What performance by Anand. It's insane. What performance, dude. ये कितने बार आते हैं भाई आजकल? By who all played you defeated in current players playing in this tourney? I mentioned this yesterday. I have not played Nihal. I have drawn Vaisakanar. I have drawn against Arjun. I have not played Harsha. I have not played Puranik. I have not played Surya. I have defeated Vantika. I have lost to Guha. I have not played Abhijit. I have not played Murli. I have not played Puranik. I have drawn twice against Leon. I have not played Raunak. I have not played Gukesh. I have lost and won against Aradhya. I have lost to Chidambaram. And I have lost to Harsha. भाई कितने बार आ रहे हैं भाई? ओके चैट देखो, जब भी गला तेरा सताए खाएं विक्स. नॉट स्पॉन्सर्ड. प्रग को फॉर्म को देख के उसको 80 में रखना चाहिए ना भाई. ये बात तो है यार. देखो रिसेंटली प्रग एंड गुकेश हैव काइंड ऑफ प्लेड रियली वेल, सो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस for them to be in team A. I have to agree with that. But on the other hand, I mean, I don't think they can change teams. By the way, bishop h3 is the blunder from Arjun. Apparently just knight takes h5 or even just bishop takes h5. It's supposed to be much better for black now. So Harsha Bharatokoti can take a huge lead in this game. Will he do so? Let's see. Who do you think will win this tournament or this match? I think both are very different questions. Chad, what do you think? टिक्कू बोस नहीं करूं. बोस नहीं है भाई. I mean, बोस क्या ही करूंगा भाई. These guys are at 2700 now. I'm at 2200. That cannot be a boast. But of course, once they become world champion, then the boasting will start. Chess G, nice idea. Bot counter लगा दो. You love against me. You lost against me. अच्छा. I am still undefeated against you. That's true, boy. I'm also undefeated against Carlson, by the way. Arjun once again, Chad. One move blunder and now bishop h5 or knight h5 gives blacks a clear edge. Pal pal na manne tikku jiya. Wah.
देखो एनजेड हो गया है, एनजेड का हो गया है भाई, कुछ भी भाई, मैं गया तो हूं नहीं गई, और मैंने कहा मेरा कंफर्म नहीं है भाई, इट कुड बी एनजेड, इट कुड बी जर्मनी, इट कुड बी नोवेयर, सो लेट्स सी. इमेजिन प्रग बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन, डूड, आई एम गोइंग टू बोस्ट सो मच, इतना बोस्ट करूंगा मैं, आई मीन मैं अखबार में आर्टिकल डाल दूंगा. प्रग का आर्टिकल रोज आ ही रहा है, बगल में पेड आर्टिकल, द गाय हु डिफीटेड दिस गाय. ऐसे आ होगा आप मेरी तरफ ऐसे. Will machine win Norway chess? Let's hope so, dude. Let's hope so. Today's match is very important because he's playing Wesley So, who's the second guy in the ranking. So let's hope so he can win today. आप चेस बेस्ड ओरिजिनल इवेंट में आ रहे हो क्या? या फिलहाल आई हैव नो रीजन यार गेमिंग वाइज टू बी देयर, because I don't think I'm involved in any way. Most likely not. If somebody rises very quickly, right? Therefore, usually they fall spectacularly as well. And I hope Arjun is not that case because he's played consistently for a year so well. I think this might be a random occurrence, but let's see. We'll follow this tournament and we'll get to know very soon. Who do you think was the most promising talent India produced? Like since which not necessarily he succeeded though. I am not sure. I have seen many talents who have a rating of 1800 but do not have the resources. So it's very hard to say. For example, Arjun Chopra is a huge talent. He has played like 50-60 tournaments in total and he reached the GM title. So he's a huge talent, but he did not get the same resources as somebody else. So it's not always about talent, yeah. Nakmanson Gambit, good or not? It's good, man. It's decent enough. When will you return to competitive chess? When I can earn enough money to go and play abroad. India में खेलने का तो point है नहीं, norm तो बनेगा नहीं यार. उसके बाद FM ऊपर या NM ranking में F1 is 100 points ऊपर, but to be honest FM को हिकारू ने इतना रोस्ट कर रहा है ना, अगर मेरी 23 रेटिंग हो भी गई ना जब भी, मैं FM तो लेने नहीं वाला. लेना ही नहीं है. जैसे को हम FM को अपडेट कर देगा भाई. अच्छा खासा NM टाइटल है भाई, कितना क्यूट टाइटल है. अगर चेंज करना है तो कम से कम IM तो चाहिए भाई, कम से कम IM. NM FM तो मैं लूंगा ही नहीं भाई. आई प्रॉमिस टू यू ऑन चैट राइट नाउ, इन 260 लोगों के सामने FM तो लेना ही नहीं भाई. Parimojan Negi was one such talent. Yeah, I remember talking to Parimojan Negi as a kid. Yeah, मतलब उसकी एक्सेंट बचपन में ही थी भाई. चैनल भी ग्रो हो रहा है भाई. ग्रो तो हर चीज होनी चाहिए लाइफ में. What sports do you like apart from chess? I do like sleeping a lot. I mean, it's really fun. I am really good at it. How big the Norway chess tournament is? Really big, by really big. Big. Queen b6 fine. Queen b6 looks like a very active move because you attack this and you attack this. But I feel that after queenside castling, maybe white has again kind of gained the edge because हमारा king safe हो गया. So instead, it might be better to use this somehow. So for example, you can play queen to e7, and if I castle now, I try to castle now, at least, this is some pressure here. I could move the bishop somewhere, play rook to d8. So white's pieces are a bit awkward. Queen b6, I think. It also attacks e6. I have to admit that part. But I think maybe the king side can be weak, yeah, because once you see now the queen has moved to the queen side, the king side is very weak. From e7, the queen can defend the king if required to. Also defends the f7 square. So I think maybe that's a better move, yeah. Gukesh को कोई hotspot दे दो. भाई he could not reach, man. Grandmaster गौरी के टाइटल ज्यादा fake accent लगा मुझे. भाई तो उसने पीछे f2 मार दिया भाई साहब. हर्षा भरत कोटी ने ब्लंडर कर दिया है भाई. ओ माय गॉड, ही ब्लंडर्ड. आप रीजन आई एम नॉट FM का अपलोड कर रहे हो भाई, वो नहीं करूंगा यार. FM का कोई इतना लालच नहीं है मुझे. FM भाई सब आप अपने पास रखिए, मुझे FM नहीं चाहिए भाई. King G2 now and Erigasi Arjun is again winning chat. Question for you. King G2, Rook takes F4. And I think you can simply play. Question क्या है भाई? Rook F1 you can play. And there is no check on G4. And white is completely winning. So Erigasi Arjun will win. 15 रुपए का रिचार्ज कर दूंगा मुकेश के मोबाइल पे. वो नंबर दे दो, मेरे पास है नहीं यार अनफॉर्चुनेटली मुकेश का नंबर. हेलो टेसरैक्ट वर्ल्ड, प्रणाम. Who do you think will win this tournament? I think the biggest winner of this tournament will be पता नहीं. Sorry, non-sticku unsees some chat unintentionally.
If I would be unintentionally ignoring some chats, I would probably ignore this matches first. मेरी आदत है सारी chat bluntly पढ़ने की. That's why I speak out a lot of controversial shit, which I should not. भाई निहाल का मैच दिखा दो. अरे हाँ भाई निहाल की गेम. Nihal is better chat. I think chat question for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So apart from the extra pawn, what do you think is the reason कि Nihal is better? एक तो pawn हो गया, ठीक है. What is one more weakness in White's camp? Come on chat, let's go. What is one more weakness? Tikku is a very nice human being. Yes भाई. Thank you यार. कश्मीर फाइल देख के आए, किसको ऐसा नहीं लगता तो. Yeah, pawn structure, and more so than the double pawns, because the double pawns are not weak, they are well defended. It's more about the d5 square. Like I have the knight coming to d5 whenever I want to. I can't take this pawn ever. Like white has defended this really well. I really doubt, because I need a knight f5 for that, which is not possible. So it's more about the d5 square here. So Nihal is better. White has for now created a blockade on dark squares, but slowly but surely after bishop d7, a3, maybe rook a8, rook a4, black will slowly enter via this file, and it should be game over. If Arjun is playing like this, Nihal will definitely crush him in JCC. I have to agree, man. That's on 6. That's on a tournament. 5 तारीख तक ये tournament है और 6 को वो है, बताओ. Exodus in Kashmir started again. अरे यार. Why is Kalashnikov opening as good as his name? No. Hey, Sal, cookie watch. We have just started. Yeah, it's not. We just started. Not much has happened. Let's go through all the games once, chat. By the way, Raunak Sadhwani, the leader of this tournament. How can we forget him? और जैसे ही हमने खोला और उसके opponent ने blunder कर दिया. Apparently he was better and he had to play rook b1, which makes sense. Bishop b3 here, the idea is knight to c4, I think. But now black can play bishop d7. And if knight to c4, he has knight to e4. I think this is the move, Mendonca Leon Luke has missed. I don't know, he's the fan of Nihal Mukesh, but regardless, knight e4 is so logical. And now this bishop is hanging, this pawn is hanging, d6 is controlled, e5 is defended, and I think Raunak is just winning here. So maybe white can have something else. Let's go to the game of Vantika once. Vantika is again completely winning. She always is. She always is for some reason. Yeah, so I think she's still winning. ये सारे pieces थोड़े attacking तो लग रहे हैं, but if white can push them back, इतना खतरनाक center आ जाएगा कि white will win this. Let's go to Arjun's game again. Yeah, rook g3 played, rook d8, knight to f3, and now chat, Arjun is completely winning. 6 को Norway and JCC is clashing. I know, we can cover both, कोई stress नहीं है, क्योंकि 6 को I think MPL नहीं है, so it will be much easier. How is Arjun doing? Arjun is doing good, man. How's the dog doing? वो था ना, वो याद है, how the dog doing? कुछ था ना, कुछ meme था, if I remember correctly. How the dog doing? नहीं, what the dog doing? Yeah. I think you will remain as a player who defeated all prodigies but never become a GM, similar to Vanchuk in a sense. भाई यार मजे लेने तो यार कम से कम तिरछी नजर से मजे लो यार, ऐसे सीधा सीधा आपने बेइज्जती कर दी मुंह पे यार. What the dog doing exactly? Exactly. As Norway's classical, it should be a fine, no? Fine. ठीक है भाई, एक मीम है भाई. What the dog doing? It's a genuine funny meme भाई. बहुत फनी मीम है यार. ये पुणे में चालू है वही टूर्नामेंट है क्या? नहीं, वो अलग है भाई. वो क्लासिकल है, OTB है. दिस इज ऑनलाइन. वहां का जितना मतलब जितना पूरा प्राइस फंड है उससे तो यहाँ का एक फर्स्ट प्राइज होगा. इवन दो दिस इज ऑनलाइन, बिकॉज टॉप प्लेयर्स द कंट्री आर प्लेइंग, इट्स ऑफ मच हायर वैल्यू. द प्राइस फंड्स आर हायर. लाइक चेस सक्स मैन इन टर्म्स ऑफ प्राइज मनी. रूकेश वन प्ले अटैकिंग द क्वीन. भाई क्वीन पे पूरा का पूरा अटैक, एक क्षण के लिए भी क्वीन को अकेले नहीं छोड़ा है इसने. So when Arjun gears after the queen, he gets her. That's evidence. Gukesh has withdrawn chat. मैंने पिन मैसेज रखा है उसमें. He withdrew because of internet connection. अर्जुन आ गया क्या नंबर 1 पे? नहीं भाई अभी नहीं आया यार, अभी लॉन्ग वे टू गो. टिक्कू भाई कैसे हो? सोनी जी, अरे सोनी नहीं हम. Queen g3 wins exchange. Not really, because Queen g3 would be a blunder, because takes and it's just equal. I exchange pieces, I'm still a pawn up, so it's all chill. Black is lost regardless what he does. Anish Giriya course INR 2.5 lakh का है. नहीं भाई, I think 25,000 का होगा, not 2.5 lakh. I really doubt it.
कभी ऐसा हुआ है आंसर पेपर के पेरेंट्स का साइन चाहिए होगा और तुमने खुद का साइन कर दिया और टीचर को नहीं बताया था? नहीं यार, मैं बहुत बहुत शरीफ बच्चा था, मेरी हिम्मत नहीं होती तो काम करने की यार। आई वाज सो शरीफ मैन एज अ किड, इतना शरीफ था कि मतलब इतनी हिम्मत, आइएगा H1 पे आइएगा, बैक रैंक दिएगा वेरी वियर्ड भाई, आई वुड नॉट प्ले क्वीन H1 रिगार्डलेस। ब्लैक ने बिशप 2 मारा ही क्यों भाई, भगवान जाने यार, ज्यादा हैंकी पैंकी सोच रहा था बंदा, कह रहा था आज मैं अर्जुन को मेट करके हटाऊंगा, अरे हार गया अरे इतना शरीफ की प्रखर भी डर जाता था भाई। प्रखर मेरे साइज से डरता था भाई, मेरी बातों से नहीं। वो प्रखर पता ठीक ना था भाई, ही वाज 3 इयर्स माय जूनियर, जब मैं स्कूल में था वो इतना सा हुआ करता था भाई। अभी तुम देखते हो ना बंदा लंबा हो गया है, दाढ़ी बना लिया बंदे ने, मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर का इंटरव्यू ले रहा है लौंडा, मतलब गर्लफ्रेंड भी बाहर पटा ली है भाई, ऐश कर रहा है बंदा लाइफ में, बड़े बड़े मिलियनर यूट्यूबर्स को पेल रहा है वर्बली। बट उस टाइम में छोटा बच्चा हुआ करता था ना, उस टाइम पे उसको हम बहुत खेलते थे Nihal game दिखाओ, let's go to Nihal's game भाई। Nihal has played he indeed, a very good move, and I think the next rook a4 is incoming, and then you know what he can do is he can defend this pawn maybe with the king or the knight. I don't know how he will defend it though. Maybe yeah, it's not so easy because you don't want to capture and get this done. But if he can defend the c6 pawn, he can then play rook b7 or rook b6 and then play b4, b3 and so on. Brilliant YouTubers, exactly. Surya Bhai is not in good form for a long time now. Yeah man, that's true. Gaming with stickers moment, ये क्या है भाई? शरीफ तो जॉनी भैया भी हुआ करते थे भाई, शरीफ जॉनी में है यार या नेकेड और एक्सप्रेस हर जगह है भाई, इट्स एवरीवेयर मैन, नेकेड भाई हर जगह है, हर जगह है नेकेड भाई Why Arjun's name is not in the table? Because chess24 is a bit of a noob. ये लो भाई अर्जुन का नेम भी आ गया विशी की लाइव रेटिंग आई थिंक कल जितनी होगी यार, 2756 Who is leading? It's Raunak I think for now. Ban ही करना पड़ेगा बस indeed. Chat, do like the stream भाई. Let's get to 200-300 likes if possible. And if you're here for the first time, do subscribe the channel guys. हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ भाई. Let's get to 25k subs as soon as possible. मजा आ जाए यार, दिल खुश हो जाए यार. Let's go. And अभी तो ओलंपियाड आ रहा है भाई, अभी तो इतने टूर्नामेंट बैक टू बैक भाई हम स्ट्रीम कर करके मरने वाले हैं यूट्यूब में ग्लिच आया है, कम्युनिटी पोस्ट ऑटोमेटिक 2-3 घंटे बाद डिलीट हो जाती है, वाह. Let's go to the game of Arjun man. I like that position a lot. Queen e7, Queen h2 check, King f1. भाई ये तो खत्म हो गई यार, Queen g7 मेट आ रही है, खत्म. So Arigasi Arjun will win the game chat. He will win this game. That means Arjun is slowly gearing up towards coming back to the lead. So Nihal serene under pressure to maintain that lead. फैमिली आंसर के पापा हो नहीं भाई, हम सब भाई और बहने हैं भाई, नॉट भाई बहने, कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ट्राई आउट, एटलीस्ट शिवेन भाई तो पूरा ट्राई करते हैं. इतने टूर्नामेंट है बैक टू बैक की सब्स और सुपर चैट की बारिश होगी. ऑनेस्टली यार आई वुड लाइक इफ आई हैड अ चॉइस, जस्ट टू पुट इट, इफ आई हैड अ चॉइस टू गेट लाइक 1 lakh super chat and 0 subs in one stream, or like 1000 subs and 0 super chat, I will choose the 1000 subs because I think channel grow करना is more important. Just putting it out there. लियोन और रौनक का गेम दिखाओ ना एक बार भाई. लियोन और रौनक देखते हैं भाई, बिल्कुल देखते हैं. ओ काफी कुछ हो गया भाई. G4, Queen E2. By the way, Rook to A4 was a crazy move here. Queen E2, Knight H5, Queen C4, Bishop D7, Rook B1, Castles, Queen F7. ये क्या ही मूव थी भाई. What a scared move, right? This is very weird. पैसे का बोझ नहीं है भाई. आई वैल्यू द चैनल मोर देन द मनी. इट्स नॉट अबाउट योर पैसे बहुत है, होते तो भाई मैं अभी कहीं मालदीव में चला गया होता भाई एंजॉय करने के लिए. बिकॉज पवन एंड अर्चित है बैकअप में. अरे यार स्टेफन भाई एंड हिज ऑकवर्ड मैसेज विल नेवर एंड. एनीवेज टिकू भाई राइंग ही विल टेक द मनी. भाई you can believe what you want, that's totally up to you. Who can be the successor to Magnus according to you? भाई so far I think it's not clear because nobody has dominated the chess ratings like Magnus. So even if somebody defeats Magnus will come rearing back again and defeat that guy in the next tournament. So it's not like you can compare him to Magnus even if he wins Magnus against Magnus once. Yeah, we'll stream Grandmasters. Let's go to the game of Nihal Sareen. क्या चल रहा है निहाल की गेम में? Nihal is still trying to win chat, but the thing is, opposite color bishops make it, give it some drawish tendency.
The best thing Nihal wants is to pick up this a2 pawn, but I think white is going to pick up the a3 pawn instead, and it will be difficult for Nihal to win this though. Arvind, by the way, we've not seen that game. Arvind again better with 2 bishops and some weak pawns here, so and some weak diagonals here as well. So it feels like Arvind might continue his winning form here. Are you better than Vishy? Nice one, yeah. You should be a comedian. Why is this equal? I'm not sure which game I'm talking about. Okay, Arjun's game is over. There is, I think, a couple of checks available for black, but then the game will end. Bishop h5 check. Maybe just king, even king e3 should be fine, or just giving up the rook, man, because back rank issues. So I think Arjun is going to win this for sure. It's completely lost. Let's go to the game of, yeah, he plays check, but yeah, he plays king d3. He doesn't even think because queen f8 mate ho rahi hai. You can't even take the rook, or queen d8 actually. Yo, Vash bhai, let's go chat. Do like the stream. Let's get to 300 likes. Anyone can be a comedian. अब रैना अंकल के बच्चे को ही देख लो. रैना अंकल के बच्चे को ही देख लो. Okay, I don't know who that refers to. Will you be attending training camp? जितने इज्जत आदित्य भाई ने मुझे दी है ना स्ट्रीम्स पे, I think जिंदगी में कभी कोई देगा नहीं. नहीं भाई, I'm not that strong भाई. I'm not that strong for you आदित्य भाई. हेलो साहिल, बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम. वेलकम अमन भाई, क्या हाल है? समय की बात कर रहा है? क्यों भाई, समय तो मस्त है यार. रैना अंकल का बच्चा इक्वल टू समय रहना. भाई रहना बहुत है यार, मैं बहुत रहना को जानता हूँ यार. मैं कश्मीरी हूँ भाई. नो ऑफेंस, आई नो मेनी रहनाज. सो दैट्स द मेन थिंग. आदित्य डजंट नो यू आर एनएम. अरे भाई, मैं एनएम हूँ भाई. मेरी रेटिंग 2200 है भाई. So to play the Olympiad in India, you need a rating of 2600. I know there are streamers who started playing chess 6 months back and now playing the Olympiad for their country, but they're playing for other countries, not India. Tikku bhai, mere paise lauta do. Wah. Is it not playing? He's not playing this one, bhai. He's playing in Prague. That will start from 8th. By the way, king c4, king pura dance karne nikla hai, and I think Harsha Bhartakoti is going to regret sacking that bishop for free. Let's pick up this pawn, dude. Let's pick up this pawn. खाना लौटा दो. कभी नहीं लौटाऊंगा भाई. सुरेश रैना as well. हाँ, वो भी एक actually. और सुरेश रैना. Who is leading the tournament? I think it is Raunak. IM means 2400 rating यार. NM means 2200. Vantika दिखाओ. You mean Vantika's game? Oh भाई. Vantika just blundered, dude. Vantika just lost the game in one move. No, Vantika, no. Oh my god, she should have played queen to d4 and she's +4, +5. She played d7 and now bishop takes d7 and black blundered. She should have taken on d7 and black blundered. Now Vantika is again winning. Arey kya cute folk hai re. Oh, thank you Vantika for taking the revenge from Mitra Guha mere हारने के लिए. Thanks a lot, bhai. मजा आया यार. So that's awesome, bhai. Takes. That's over. Let's go to the game of. By the way, Arjun has won indeed. He has won the game. Harsha has resigned. Let's go to Nihal's game now. Very important game here. Nihal is winning, but can he finish him off? Are you a Kashmiri Pandit? Yes, ephemeral. Respect हमेशा रहेगी भाई. I just thought in general you might be get a chance to be there someday, man. Maybe I'm not sure when, but maybe you never know about the future. You never know. I never thought I'd be streaming 2 years back, so you don't know what can happen in life. Let's see. This is women's chess. अबे यार, एक तो सेक्सिस्ट कमेंट साइड रखो तुम, ठीक है, कि दिस इज वुमेन्स चेस. दूसरा भाई वो गुहा मेल है भाई. बेचारे को तुम फीमेल बना दिया भाई फालतू में तुमने. बाहर डांसर हो. Are these rapid games rated? These are technically, right? I mean, online teams rated होंगे. Leon better now, really? Okay, chat, I want to focus on Nihal's game now. Let's see how he finishes him off, because Vaisak has 20 seconds, so the game should not last very long. And here I think maybe he should not trade rooks, because after rook takes b2, bishop takes b2, there will be pressure on f6. He plays check first. Now king f1. You didn't know 3 years back you won't be going to Serbia again after May 2020. May 2021 भाई. अर्जुन निहाल का फाइनल कब होगा? आई थिंक अर्जुन निहाल का मैच, आई थिंक, आई डोंट नो किस राउंड में है, बट आई थिंक इट्स टुमारो और लास्ट राउंड टुडे. आई एम नॉट श्योर व्हिच राउंड इट इज. राउंड 8 और राउंड 9. भाई घूमने चलोगे? कहाँ ले जा रहे हो भाई? भाई खाना खा लो भाई. खा लिया यार. हाउ डू जेम्स चूज बिटवीन टूर्नामेंट्स लाइक वीडी प्लेइंग इन प्राग एंड नॉट इन नॉर्वे? बिकॉज नॉर्वे का इन्विटेशन नहीं मिला होगा वीडी को यार, बिकॉज नॉर्वे हैड दिस थिंग इन माइंड कि दे विल हैव अ एनिवर्सरी एडिशन.
and they invited players who are 2750 plus in most cases. So VD is not 2750 plus. He's trying to get there. So he's playing tournaments like Prague, जहाँ पे he gets invitations. Yeah, मतलब, and if he wins that, तो he gets more invitations. Speeches वाला 6 तारीख को है भाई. ये खत्म होगा और वो start होगा. Yes, VD might have already left. I don't know. I think he was there on CBI stream yesterday, but I'm not sure if when he's leaving. 100k prediction November 2023. भाई बहुत लेट है भाई. तब तक इंतजार नहीं कर सकते भाई. बहुत लेट है वो. Unfortunately. Yo राजेश भाई क्या हाल है? What's up? Okay भाई Bishop 3 खेल दो. Game over. I think Nihal is winning. Are you a GM or do you just do streaming as a part-time passion? I am not a GM and I don't even do it as a part-time passion. It's I'm an NM. That's 2200 rating. Although I would love to be a GM and I would love to do it full-time as well. So it's kind of nowhere there. You didn't know 3 years back that you're gonna steal someone else's channel. Just kidding. Collab with Hikaru. Dude, of course, man. Everybody wants to collab with Hikaru. But Hikaru has like, जितने Hikaru के subscriber हैं उससे ज़्यादा तो हमारे followers हैं. So it makes a difference. Vishli versus Soto. Yeah, very important game today by the way. November 23, be kind था. भाई ठीक है यार, मतलब प्रियांश भाई, मतलब अब ठीक है, रोस्ट करना है तो मुंह पे नहीं करते भाई, थोड़ा पीठ पीछे करते हैं ताकि बंदे को सीधा हर्ट ना हो. सीधा दिल पे बात करते थे तुम तो यार. इमेजिन तुम लड़की के पास जाओ, कहो यू नो hey I just saw you you know and I was telling my friends how cute you are and I would like to date you if you are free. अबे चल कल मुंह है. कम से कम इज्जत से मना कर देती भाई. I would totally accept, but इतनी बेइज्जती. Mitra Guha had once beat Carlson in an online blitz match. Yeah, I think so. That's true. Can Will surpass Vishy's rating? For sure, man. Samay ka phone number hai. I don't know why that's important, bhai. Larkyologists are out of Sahil's experience. Who is the favorite candidate? Sahil Tikku. I think it's probably going to be Ding Liren in terms of who has the best chances to win. But who I want to win, I have not decided yet. Who will I be supporting? I'll decide later. I'll focus on it once it arrives. Yeah. Let's see. Remember how Hikaru crushed you in an online game? मेरा खून खौल जाता है वो सोच के. याद ना दिलाओ मुझे. Back stretch करते रहना after every 30 minutes. If I was a fitness influencer and I was a girl, that would make a lot of sense. Otherwise, I'm not really sure about this. Did you just stick on D2? Or am I stupid? I think I just captured on D2 accidentally. Yeah, it was me. Of course, it was me. VD का tweet देखा राजा, ignored lol. I have not seen VD's tweet by. I did not open Twitter since yesterday. Why is Injun doing Nashe? It was not Injun, it was me, bhai. I feel Firuza is the next winning champion. I am not sure about that one. I think Firuza is definitely I think Firuza is one guy who will struggle in the candidates. That's my perception. VD ने क्या tweet किया था भाई? मैं देखा नहीं. Let me check it out. क्या tweet किया था विदित ने यार? I will check it out and let you know as well. ऐसा क्या tweet था भाई? कोई बोल रहा है. Let me check. One of my best moments in Prague. Okay, I can't see anything there with this, any crazy tweet. So only were traveling to Prague, so nothing spectacular there. Can Vishy win Norway Classic? Yes, man, he can and he will. And let's go. ये क्या था भाई दौरे भाई होता है कई बार यार ड्यूरिंग माय नशे जब मैं करता हूँ तो टिकू जी विशी वर्सेस सो प्रेडिक्शन माय प्रेडिक्शन ब्लैक विंस इन आर्मेगेडॉन दैट विल बी ऑसम ड्यूड इफ दैट हैपेंस आई विल डांस ऑन स्ट्रीम बिकॉज़ वेस्ली सो को उड़ा दिया तो मजा आ जाएगा वंतिका ब्लंडर नो वंतिका नो अरे यार हाउ इज वंतिका लूजिंग दिस अगेन हाउ अरे ये कैसे हुआ रे ड्रॉ तो यही हाथ में था अबे यार शी मिस्ड क्वीन टेक्स ए टू और क्वीन टेक्स मारा इसने ओके फिर क्या था भाई फिर कहां ब्लंडर अरे बिशप d5 मिस कर दिया रे उसने अरे दैट्स सो बैड and now she's completely lost. Arey yaar, so sad for Vantika, man, because I mean she's playing such a strong tournament and it's like so difficult. You need that luck sometimes, yeah. Sometimes you need that luck. It's not going her way. Yeah, bad luck to Vantika, by the way. She's completely lost now and low on time. You will defeat Vantika easily. I don't think so. I think she's slightly stronger. I have defeated her before, but that was many years back. We are both like 1600 1810. Bot active raho. Chat. एक जादू करते हैं पता है
I'll teach you the magic today. आपके सामने ना अभी 100 कुछ लाइक्स है. अगर आप लाइक वाला बटन दबा दोगे ना, उंगली वाला, तो वो 400 हो जाएंगे भाई. Can you imagine that magic? सिर्फ उंगली रखने से नंबर बढ़ता है भाई. Crazy. Do like the stream, chat. Sorry, bhai. Do like the stream. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Let's go. Unexpectedly low quality game. छोटी बच्ची हो क्या? सारे 8 गेम लगा दो राइट साइड में. Why only 6? भाई की chess 24 6 ही दिखा रहा है भाई. And now it's lost, chat, because I can just play the bishop back and then king to f3, then d3, and it's resignable. Can't wait for novice chess indeed, man. It's going to be fun. Harassment? What? पर ये मैजिक डिसलाइक बटन पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? इट डजंट वर्क भाई. यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया वो. Cringe. Thanks भाई. It was intended to be that way. But doesn't Guha have higher rating than Vantika? She still played well. Yeah, but she's having so many winning positions. She's not able to convert them. Like, it's one thing to lose convincingly. It's one thing to have a completely winning position and then lose it. Raunak game. Yeah, very important by the way. Raunak's game as well. So Raunak is black and I think he's winning this, right? Oh no, white has 2 pawns as well. My bad. Ruko. But oh bhai, who is winning this game? Dude, this is so crazy. Position dekho, just b2. Let's go b2. b2 must be winning. It must be winning. b2 must be winning. Even rook s6 must be winning for sure. He captures. Yeah, he captures. And now b2 is completely winning. Bhai, kya hi position hai, dude? Both sides are trying to queen. Discord DM dekh lo, Sahil sir, bhai, tweet, I'll check it out. Bhai, kya mast hai yaar. And now there's no way. Even though you have a rook and a knight, you can't stop this pawn. And I can just take your pawn, unfortunately. So that's the issue, bhai. Crazy. Acha, no favorites as Anish Giri didn't make it. Acha, okay. Just joined. Could you please tell me about Nihal's game? Nihal is still playing, chat. I think Raunak is going to win. He continues his winning streak. So Raunak Sadhwani on fire, man. He's literally on fire, dude. Somebody please get some fire extinguisher. Anyways, and now it's okay. It's resignable now, chat. Bishop e3 check, king c1, rook c2 check, king b1, and some rook e2 here, and it's game over because the bishop has to move. And if you move the bishop, I can just take on f2. Let's see what happened. He played b4 instead, king c1, rook c2 here, b3, and this is completely lost. And Nihal Sareen also winning his game. So we are seeing slowly but surely Nihal Sareen and Raunak Sadhwani coming to the lead. Even Arjun won the first round today, but so far, what performance by Raunak? Yeah, crazy. How are your predictions from Tanya's stream going today? I will have to check. I expected Nihal to win. He is winning. I expected Arjun to win. He is winning. I expected, I think Guha to win. He's winning. I expected Raunak to win. He's winning. So my predictions are going pretty decent, yeah. I think वो सिर्फ एक ही stream में काम नहीं करते. Go to the previous game. Do you mean this one? This is lost, of course. I mean, I have a queen now. Just bishop e5, then king e2, and that should be resigns. First bishop because control 93 check, bishop e5, and then I play king e2, and then queen f1, and that's mate. You expect a lot. क्या expect किया भाई? Do you know Shivkya Rohila? I don't. अरे किया है कंजूस को बोलते हैं चिक्कू और बेस्ट कमेंटेटर है साहिल चिक्कू. वाह वाह भाई यार, आप पोएट्री ट्रैक करो जी भाई, काफी पोटेंशियल दिख रहा है मुझे. Okay, let's. Okay, I mean, he will take. I will take. I will push the c pawn. I have one more pawn remaining. There's no counterplay. Arvind also won, by the way. Arvind Chidambaram has won his game. So all the leaders continuing their wins. Yeah, that's crazy because Raunak won, Nihal won, Chidambaram won. So top 3 winning their games. They're not taking it lightly at all. क्या बात है भाई? Only game remaining is the Raunak game now. Let's finish it off. Yup, Nihal has won, chat. Vaisak has resigned. It is game over because there's nothing, because I have discovered check threatened. And if you go king a1, I can just play rook a2 mate, and that is game over. So with that, Nihal has also won. Arjun has won his game as well. We saw, Chidambaram also win his game, and that means Raunak most likely also going to win. So all leaders winning this tournament. That's crazy. It's going to be very tough at the top, dude. कौन जीतेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है. Gukesh के क्या हुआ? 2680 classical तो है भाई. He's not playing this tournament, man. He actually got some internet issues, so he's not playing the tournament anymore. मैंने पिन में लिखा हुआ है. Standings we'll have a look at as soon as this game ends. We'll have a look at the standings chart. बस एक look at the standings very soon. White will resign very soon because I think this queen g8 here and black is winning. लगा था slow mode है, slow mode नहीं है भाई.
Pinned and win for Nihal, indeed. Sahil is the best. Thanks, Rajesh bhai. पैसिफिक में है पानी, विशी को नॉर्वे से ट्रॉफी लानी, सॉरी इन एडवांस. एनीवेज सॉरी चैट फॉर दैट. कितना कमा लेते हो महीने का टिक्कू भाई? भाई आप बोलो तो ईमेल भेज दो यार, आपको मैं अपना वो आईटीआर भेज देता हूँ, कितना इनकम सब कुछ. और कुछ और भी चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड का नंबर चाहिए होगा, या शादी के प्लान्स में भी, फॉरेन के प्लान्स जो हैं, सब कुछ आप मुझे भेज दो ईमेल. आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. यूनिटाइज भाई, आपका असली नाम भी दिख ही रहा है मुझे, यूनिटाइज अच्छा नाम है. साहिल नॉस्ट्रेडेमस. नहीं नहीं भाई. Okay, now just push the ball. Let's go, man. Let's go. And why is Leon still playing? I mean, does he really think he can draw this? Really? I mean, he has. I removed my notification. भाई करो enable भाई. विशी 3000 क्रॉस करेगा क्या इस टूर्नामेंट? नहीं भाई, इतना फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीते हम. He is put up a trap यार कि मैं चेक दूं किंग G5 and I take and take. But come on, dude. I mean, this is lost यार. Leon should resign. शादी के प्लान्स चाहिए. नहीं भाई. चैट कितने लोग चैट में भाई, कितने लोग शांत बैठे. कम ऑन चैट, हाय चैट, कम ऑन. सबके सब एक बार चैट में हाय लिख दो भाई. लेट्स गो. हाय हाय. बच्चों के भी प्लान्स है, बच्चों के प्लान्स नहीं है. कोई प्लान नहीं बच्चों के यार. ईमेल आईडी बता दो उसको, बढ़िया बदले मैं ही कर लेता हूँ. वाह वाह. Wasn't able to follow this tournament. What are standings? अरे भाई कितने लोग चैट में भाई, लिखिए नहीं रहे भाई, सब लोग शांत है. चलो बिल्कुल शांत है, बैठे हैं भाई. Do you think Vishy has a realistic chance for next candidates? Yeah man, for sure. Hey Smriti, long time. Hey Aviral, Sujot, Tamim, Vitesh, Rajan. भाई कितने लोग हैं, नाम पहली बार देख रहा हूँ भाई. अर्नव, glad to have you. राहुल, अरे नाम तो सुना ही होगा, सुना है नाम. Hey Isha, how are you? Glad to have you on the channel, bhai. Let's go. So time to look at the standings now, chat. I think okay, let's finish the game first. Standings अभी यार, standings game तो खत्म दो यार. Let the game finish. Let me open the standings till then, because standings are going to be a bit confusing, chat, because कुछ लोगों ने गुकेश के साथ खेला हुआ है and he has withdrawn, so their points have been added. They'll be later removed, so standings might not be absolutely accurate, but they'll be kind of accurate. So for now you can see Arvind Chidambaram leading with 12 by 15, Nihal on 11 by 15, but as we know, Raunak is also winning. So Raunak will go to 13 points. So Raunak Sidwani will lead the tournament. That's crazy, right? Walkover milega exactly, but the points will be removed, yeah? Let's go see. Okay, come on, yeah. This king here maybe. Yeah, the king comes here now. It's over, chat. मेरा नाम पहली बार सुना टिक्कू भाई, आपका नहीं है, कई लोगों का नाम पहली बार सुना था मैंने. हेलो यार, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. थैंक्स सौरभ भाई. ये कौन से सौरभ कुमार है? हमारे एक सौरभ कुमार अपने भी हैं भाई, जो काफी टाइम से चैट में है. वो तो सिर्फ गालियां देते हैं भाई. थैंक्स सौरभ भाई. Why did Gukesh withdrew? He withdrew because basically he did not have internet connection, bhai. As we know, India had internet connection during the Olympiad, so this is nothing new for us. What the F? Is this drawn? What? This is drawn? Are you kidding me? How is this a draw? This can't be a draw. How? What? No, wait. Now King C1 back. Now it's winning, right? It should be winning now. Yeah, it should be winning, right? It's a draw. Oh my god, it's a draw. What the hell? It's a draw. Leon bhai, OP in the chat. मैं कह रहा हूँ रिजाइन कर दो भाई साहब. क्या ट्रैप निकाला है रे. And now Rook G6 is the only move to draw. Will he find it? Rook is the only move. Only move. What a draw, dude. and he finds it. I said while Leon is playing. Yeah, that's why he's 26 now almost. Leon nuke Mendonca. Yeah, man. I think Raunak will be stunned. He'll be stunned. He is just like me here. मैं और रौनक का same expression, because he did not know it was a draw, yeah, because he also moved the king. If he knew it was a draw, he would not play his king out. So he was just like me. So I feel a bit human now, yeah. Raunak fell for the same trap. He is going Leon Levon mode. रौनक आज पिएगा बहुत. अरे नहीं बच्चा है यार. अरे भाई ये तो crazy draw है यार. I have never seen anything like this. Have you? Guys, Arjun future World Cup winner by beating New Zealand finally. ये क्या है भाई? भाई साहब क्या draw है यार. And Raunak is struggling. He cannot find a single move.
He cannot believe it's a draw. He cannot believe it's a draw. But it's a draw, dude. What a save. What a save. हाँ तो बच्चे नहीं पी सकते क्या? नहीं यार, लीगली पी नहीं सकते यार, एटलीस्ट लीगली. वीडियो बनाओ इस पे, घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझको. चैट बेसिकली द आइडिया इज कि whenever the king escapes to queen, I will give you continuous checks. And the crazy part is, for example, king to e3. Now I can't give a check, but I can play rook to c6. And how do you queen this? There is no way. There is no way to queen this. You need the king back. And for example, if you play queen to b3, let's say I play queen to b3. Okay? Now, chat, what do you play? Come on. White to play. What does white play here? मैं 6 साल का हूं और 3 पैग हर घंटे. वाह. I steal your queen. बढ़िया है भाई, बढ़िया. मेरी क्वीन छोड़ देना यार. Queen might not work actually. Queen might not work. King h7 might be losing as well. It will not work, chat. Take the pawn, indeed. Yes, rook takes c2. We just capture this because queen takes c2 leads to g8 queen and it's a draw. And they have agreed to a draw. What a draw by Leon, man. Crazy. I thought he should have resigned, but he had faith and he drew this game. Hats off to Leon, man. And I have drawn against him also twice. Just a boast there. So let's go to the game. Let's go to the next round. The next round games have already started, chat. They're starting in 1 minute. Next round, Raunak against Vaisak. We have Erigesi Arjun against Diptyan Ghosh. And Nihal Sareen against Vantika. Let's go to Nihal against Vantika. This will be a nice game to look at. Rook is sexy. He's forcefully overpowering the queen. Wow. NM sir, how are you? I'm Baliya Ajbhai. Kaise ho aap? Show the line how it was winning before. Yeah, I should probably. Give me a second. I'll show it how it will draw. Yeah, basically, chat, instead of trying to... here, he plays c2 and rook f6. Yeah, basically, you need to quickly play queen to b3. And the thing is, if, for example, now I play rook g6, I play king to b2, and let's say I queen, ये बहुत crazy variation है, I queen with check. And that's the difference. इतना देखना था, which was very difficult to see, to be honest, कि check के साथ है and you allow white to queen. It doesn't feel natural to allow white to queen. So that was very weird, and I totally understand Raunak how he fell into this trap. So great play by Mendonca, Leon Mendonca there. Let's go to Nihal against Vantika, chat. Very important game. Standings, yes. With this, chat, Raunak could not win. So Arvind Chidambaram taking the lead, but you have to remember his point against Arjun will be discarded, so it will not count, and that means most likely Raunak is in the lead right now because he has not played Gukesh so far, and that means Raunak Sadhwani is still in the lead. Right, Nihal is tied with him as well, so you know Nihal also catching up with Raunak now. Yeah, a lot of fun. थोड़ा बड़ा कर दो स्टार्टिंग यार को. Let me make it a bit bigger ताकि it's visible clearly. I guess it's visible still, but let's make it a bit bigger. Bigger is better. Yeah. So as you can see, Chidambaram has played Gukesh here. So that most likely यहाँ पे Gukesh है ना? ये कहाँ गया? ये yeah. So he has played Gukesh, and that means that this guy's point will not count. His win against Gukesh will not count, and that means that he is going to be behind these guys, but not by much. So this will be a very close battle, chat. All the leaders are winning. Let's see who wins the next round. Let's go to the match, and the games have begun. Nihal has played d4 already. भाई साहब कोई वेट ही करने को तैयार नहीं है भाई. d4 played immediately. It will not count because Gukesh has withdrawn from the tournament, chat, as in the pinned message, because of internet issues. He had to withdraw. Arjun is playing, chat. Nihal is playing. Raunak is playing, and many youngsters are playing. In fact, India's entire team B almost and entire team C almost is playing. So for a new player, which advice would you give to learn games from position player or to learn games from tactical? Both. There is no one answer. Both, Arshad bhai. Both. If you only learn one, you'll be weak at the other. The winner of the entire league, not one tournament. The first one was won by Arjun. The winner of the entire league will get a chance to play the main event. And we have e6 by Vantika. Maybe we'll see a Benoni again by Vantika. No, this was finally a Queen's Gambit declined. Oh, not the Queen's Gambit declined. Actually, we have this. I don't know what it's called. I forgot the name. But yeah, this is a very weird setup. It's kind of similar to the Benoni. Apart that the pawn is on e6 and not on g6. Gukesh has played against Nihal. No, I don't think so. OTP hai kya? Internet by internet. It's online, chat. What is prize money? $100,000. $100,000 overall. The winner each event can also play to 160 event as far as I know. Really? I'm not sure about that one.
I am not sure about that much SDY. I am not sure. Maybe that's true. I'll have to check it out. But I think, as far as I know, the guy who wins the entire league gets to play the entire series. Yeah, मतलब many events. ये मुझे I'm not sure this one. Replacement नहीं है chat. They just gave it a buy. One each player gets a buy in one round. Roses are red. Violent isn't blue. You are streaming, and that is true. Wow, what poetry, man! Awesome. H4 played now, so basically the ideas of bishop d3, e5, knight g5, queen h5 come into play now. So Nihal trying to attack Vantika brutally here. I am not sure of any good games of Karpov. There might be many actually. I have not looked at any such book. Google कर लो भाई, कोई ना कोई पक्का मिल जाएगी. I have not seen any specific book on Karpov's games though, unfortunately. Show Magnus. Magnus is not playing this tournament भाई. वो शाम को है. Magnus वाला tournament शाम को है भाई. That doesn't sound good. What? अच्छा वो निहाल वाला. अरे मतलब on the board. Come on, dude. I mean, you have to be very subjective here. We're talking about chess, of course. What is currently standing on the top? Right now, I think Nihal and Raunak are at the top right now. Vishy's opponent today, he's playing Wesley So with the black pieces. If he can defeat Wesley, that will give a great boost to his chances to basically, win the tournament. So Wesley is ranked second right now in the tournament. So it will be very important for Vishy to not lose the game and maybe win the game. प्रखर से बात हुई क्या होती रहती है बीच में? Currently, who is a favorite chess player? A favorite chess player? Anish Giri, yaar. Why no one playing Caro-Kann? I mean, Caro-Kann can be played. I personally don't like it too much because it's like a bit slow. And I guess many people share that opinion. Show Climax game as well. Chop chewing on Indian games का मतलब Indians का. अरे. I think पता नहीं होगा यार. Vantika looks good. यार क्यों चलता है भाई? मतलब तुमने कभी ये तो बोला नहीं विशी लुक्स गुड, तुमने कभी ये तो बोला नहीं अर्जुन लुक्स गुड, तुमने कभी ये तो बोला नहीं कि भाई मतलब क्या नाम है इसका निहाल लुक्स गुड या आई डोंट नो अधिबान लुक्स गुड. भाई लड़कों भी कॉम्प्लीमेंट दो यार. दिस इज नॉट फेयर मैन. आई ऑब्जेक्ट टू दिस. लंदन खेलते हो वो भी तो स्लो है भाई. लंदन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट बन जाती है उसमें. ऑपोनेंट डर के यार या तो डर के मारे या बोरियत के मारे हार जाता है. प्रखर को लाओ स्ट्रीम पे भाई. प्रखर अभी बड़ा आदमी है भाई. उससे आई थिंक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा भाई ऑनेस्टली. आर्यन तारी मजाक कर रहा हूँ ऑफ कोर्स. आर्यन तारी लुक्स गुड तो बोलते हैं सब. मेरे सामने कभी नहीं बोला भाई. प्लेयर्स कंप्लीट ऑफ 5 टूर्नामेंट्स फॉर दिस गोल्डन टिकट. अच्छा ओके. Sahil looks good. Thanks, bhai. Black's play is similar to that of Karpov. Too. I think Kasparov said that Carlsen's style of play was a combination of Karpov plus Fischer. That's what Kasparov said about this. Because they don't look good. Yeah, but I mean, थोड़ा balance करो ना यार. I mean, come on. Guys also have feelings, dude. I mean, खाली हमेशा बस लड़कियों की तारीफें. Alexandra looks good. Andrea looks good. ये लो भाई. परस भाई को देखो यार. तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? उनकी वीडियो देखो ना जाके. What are you doing here, Paras भाई? You could be watching their videos right now. Caro-Kann can be played. वाह, क्या wordplay. Someone had called Magnus cutie. I have no clue who that is, honestly. What happened to Nihal game? Nihal game is still going on. I was focused on this game. This is the Nihal game, by the way. This is the Nihal game. Let's go to Arjun's game once. Okay, this is interesting. Okay, very weird setup here. I don't play the English though, but okay, d3 and then d4. Very interesting choice by Diptyan there. I don't think this should be the best way for white to play though. Very obvious. Let's go to the game of Raunak again. Raunak's game will not start because his game ended late, yeah? So it will start in 5 minutes. Let's go to Nihal's game. What about Anish Giri? Yeah, he also looks good, yeah? Please send us samosas fast. भेज रहा हूँ. You had called Magnus cutie in defined Magnus in one word video. अच्छा, ये वीडियो कब आई भाई? How do you know about this video? Dude? How do you know? ये वीडियो डाल दी जिसको हमने. Have they put up chess.com? Have they put up this video? I did not see this video भाई. ये कब आई वीडियो भाई? He is a wizard. Anish is also okay, but Sophie को ये लो भाई. कब की डली है मुझे पता ही नहीं इस वीडियो के बारे में. I have no clue.
Anyways, we'll check it out. काफी दिन हो गए. Really? कोई link share कर देना. I have not seen this video यार. Kraken got state award from Putin. I know, man. Somebody tagged me on Twitter saying कि Kraken got an award from Putin. New video idea. Anyway, chat, we should easily played. And now, chat, I think it's very obvious what White's next plan is. It's e5 and then to launch bishop at 7. If Black plays b6, White plays e5, bishop b7. I don't think Nihal will shy away from this. Knight g5, king g8, queen h5. And Vantika can resign. So I think because of that, Vantika has to be really careful here. She cannot waste any moves. Federal tournament खेलो यार, Federal tournaments. Stranger Things देखा, हाँ देख लिया मैंने. बाद में देखेंगे चर्जी भाई. I think I will find it on the channel for sure. I will find it later. मुझे Discord में share कर देना maybe. And to be honest, Nihal's position is looking great, right? I mean, his king is in the center, but there's no stress here. There's no open center. He has a huge center with 3 pawns. He has rook on b1, putting some pressure. He has 2 bishops pointed towards Black's king. So I like this for Nihal. I think Nihal, Vantika definitely worse here. I mean, practically at least in this position. She probably has to play only moves. And it's not easy. प्रखर सैंडी के साथ कंट्रोवर्सी बन के बड़ा आदमी बन गया है. तुम भी समय से कंट्रोवर्सी कर लो भाई. कंट्रोवर्सी करके कोई बड़ा आदमी नहीं बनता भाई. यू हैव टू बी राइट इन दैट कंट्रोवर्सी. एंड कंट्रोवर्सी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता है. Since you have watched both Dark and Stranger Things, which do you think is better? Personally, I feel Dark is much better. I like Dark better as well. I have to admit, it's better. It's more, you know, ऐसे इतना complex है. It literally breaks your mind sometimes. And someone called you creep in comment section. Really? है ची. अच्छी बात है ये. अच्छी बात क्या है भाई? भाई कोडिंग छोड़कर चेस देखने लग रहा हूं. अरे ऑसम भाई, चेस इज ऑसम. Okay, so Vantika is thinking for too long. She is 9 minutes, dude. She is 7 minutes behind the clock. 7 minutes पीछे है भाई. Duda looks great though. Finally, thank you. Somebody finally complimenting a guy. Yeah, that's what we want. Yeah, we want equality, man. Not gonna lie, you look like Karan Johar with your new specs. Arey yaar, what did he say? Coding chhodkar. Arun Thari looks sexy, nice. Who is supporting between VD and AG in CBI club game? Firstly, just because of patriotism, I inclined to VD. Nice, Oli, nice one. You pulled off a summon there. Controversy अक्सर humor से ही create की जाती है. Nice. कल OTP है भाई. Tactics solve करो. हमारा course ले लो संपा भाई. It will really help you. Dana said that Nihal is very good tactically but lacks deep opening preps, which doesn't matter in blitz and bullet, but will have a long time formats. You think so too? Possibly, yeah, possibly, because he crushes everyone in online chess, yeah, but he struggles a bit at OTP chess, so that might be one reason for sure. Chad, by the way, I don't know why Vantika is not playing, because she's literally been thinking for like 8 minutes now. Not 8, but yeah, kind of similar, because Nihal has 16 minutes, she has 7 minutes. That's not a fair battle anymore. She really needs to find some good moves, and maybe just taking on d4 and then playing e5 here, trying to block e5 as white at any cost might be a good start. लड़की लोग नहीं है, लड़के कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, but still man, still कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए यार. प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हो? नहीं यार, आई एम नॉट गे. अरन तारी की जितनी सिंपिंग करते हैं उतनी फीमेल चेस प्लेयर्स की कंबाइंड नहीं है. मैग्नस क्यूटी दो वॉच स्ट्रीम वेयर ही वाज स्ट्रीमिंग ड्रंक ऑन ट्विच. आई हैव सीन दैट स्ट्रीम भाई थोड़ी बहुत. साहिल टिक्कू लुक्स गुड, झूठ बोल दिया, खुश रहो. मैं अभी की अभी ना पानी ऐसे फेंकने वाला था भाई, मुझे ध्यान आया मेरा ही कैमरा खराब होगा भाई. लेट्स नॉट डू दैट शिट. अपने कोर्स के बारे में बताओ भाई. जिसको चेस इंप्रूव करना है, इट विल बी अ ग्रेट टूल. As long as you're ready to work hard to improve, that will be a great tool. You have the best material to learn from. जितने सालों का मैंने खेला है चेस, whatever I learned, I've put into those courses, along with Parnali, by the way. E5 के बाद इंजन क्यों रोया है? Because E5 blocks E4, right? So now Nihal can take a pawn, but it's a double pawn, and it can be captured later after rook e8 ideas. So it's kind of a half a pawn, not really a full pawn, but it's a half a pawn at least. So he's slightly better, but not by much. And if
That's a good move though, I think. Nihal on the other hand played d5. He did not double his pawns. He just played d5 and gained space. That's a more practical way to play the game because you just have a protected pass pawn on d5. You can later also play c4 and create this strong pawn chain which gives you a long-term edge. I like Dubois mating attack. Nice. भाई फर्स्ट रेटिंग कितनी मिली थी 1905 थी फर्स्ट रेटिंग मेरी यार जो पहली आई थी फिर डे के लिस्ट में. चैट डू लाइक द स्ट्रीम भाई. लेट्स गेट टू 300-400 लाइक्स एंड इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब. लेट्स गो. थैंक्स अ लॉट चैट. हरे कृष्णा आल्सो प्रीटी गुड. यही हुई ना बात भाई. लेट्स गो टू द गेम ऑफ Abhijit Gupta. By the way, we have to see how well he's going to play. Yesterday I predicted that he will be back, but today he lost his first game. So he has not had a good start and he's still at the bottom of the table. And in this game, let's have a look what he's doing. So far it's equal, but he will not be happy with his performance so far in this tournament. By the way, let's go to the game of Erigasi Arjun. He's trying to play on the queen side. He's pushed his pawns. So maybe he's trying to go h5, h4 as well. Although white should be fine. I mean, he could just play b5 and white should be absolutely fine. So far, no clear play for Arjun. So I think white should be fine as well. Black will also try this. But when you play queen e6, maybe d5 can be an issue sometimes. Who's better among Ding and Vishy? I think on paper, Ding has to be better now slightly. But considering Vishy's form, I think he might be better as well. Who knows? 195 कैसे थी? खुद दो आईडी का घपला किया क्या? नहीं भाई 109 थी यार. क्या चक्कर है उसमें? Any chess pickup lines? I have not ever thought about this topic, but I think it's a topic worth thinking about. How to use a pickup line with a chess player. Maybe I can think about this. B-sets भाई देख लो तो करते हैं ना स्ट्रीम यार एक chess pickup lines बनाते हैं भाई. Best chess pickup lines. After stream, Serge Dubov asked Shevchenko question on YT is a clip from last kind of stream, and isn't Dubov got nickname Gigabytes? Acha. Overall, Vishy is better 5 times world champion and Ding is second at his best. Yeah, but the thing is, Ding is still world number 2 right now, so he's stronger on paper. आपको क्या लगता है who is the most creative among young players? Creative. Creative is a very difficult thing to judge because creative में you also need to know the person a little bit. I feel it's not just over the board. ऐसा मुझे लगता है. Maybe Prague, yeah. Maybe Prague is the most creative. It is possible there among the youngsters because इसका play बहुत insane रहा है recently. He also defeated Ding, yeah. It's not easy, man, to defeat Ding, Carlsen, Mamityarov, like इतने सारों को एक ही tournament हराना. It's not easy. Even with it he defeated, I think. So it's not easy, man. लगे भाई अपना चैनल चेस वाले स्पॉन्स थीम पे थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मल और सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं. वो होता है फॉर्मल स्ट्रीम्स पे. आई थिंक यू कैन गेट दैट वे. इट्स नॉट लाइक व्हेनेवर यू आर ऑन फॉर्मल स्ट्रीम इट गेट्स अ बिट दैट वे. इट गेट्स अ बिट फॉर्मल. हैप्पी बर्थडे टिक्कू भाई. 14 अगस्त को है रे. अभी टाइम है रे. You versus with 100 classical games, how many can you win? I think I'll probably end up winning a half point or 1 point. At least that's what maths says so I will agree with maths there. But that's when we'll get tired of winning. He's like 69 nil. He's like, "Arey yaar, kitna jeetunga mere?" And then he's half asleep. Maybe then I get to draw a game. Why do you really play in OTB tournaments? Because I have to commentate, man. If I go to OTB tournaments, that's like a 10-day gap, and 10 दिन का gap लेना, and you have to prepare also. So it's like a longer gap. It's not easy, man. Norway में depth 51 होती है या सिर्फ 18? मतलब? Gukesh can cancel. Yes, Gukesh can cancel indeed. He has withdrawn from tournament, so all the games will be nulled. Whosoever plays Gukesh, his points will be cancelled. I'm sure Chidambaram is not happy about it, but जो भी है सो है. Have you defeated GM? Yeah, man, multiple times. इतना ही बेकार नहीं खेलता यार. You are like a knight. I always fear you in time pressure because I have to do the work in 10 seconds. ये क्या है भाई? American players India कब आएंगे? By the way, American Olympiad team is so crazy, man. Just bought a chessable course, E4 course. It was awesome. Oh sorry, you are not Anish Giri. अब भाई हमारा कोर्स भी ले ले भाई. उसके बाद आप बोल पाएंगे हमें. Gukesh withdrew indeed, man, because of internet issues. My rating is 2201 today. टिक्कू डार्लिंग जा रहा मैं. एक सेकेंड. Chess pick line. Can I put my rook in open shell? Nah, that sounds terrible, bhai. By the way, a4 played now, and probably Black should go d5 and maintain this pawn chain.
this very, very strong pawn chain, and maybe white will go b5. But still, I feel black has enough space in the center and some play on the king side as well. Yeah, he goes d5, so Arjun goes d5, rock solid pawn chain now. And he will also have the a pile. He will also the a file and let's play on the king side. So he should be absolutely fine here. Queen e6, bishop h3, and then knight g4 after the queen goes to h3 could be a plan. King g7, rook h8 later could be a plan. Knight f8, knight g6 could be a plan. So many ideas of black as well. He has one weakness on c6 that he can defend with his rooks, and then he should be fine. किस पे हंस रहे हो भाई? बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई भाई. किस बात पे हंस रहे हो भाई? चैट किस बात पे हंस रहे हो भाई? Nihal is already winning. Really? Let's have a look. Nihal game. Okay, a6, c4, bishop d6, h5, h6, g4. भाई साहब पूरा अटैक लॉन्च कर दिया. Knight f6 and g5. Yup, chat. Nihal is completely winning this game. King h7 now, but yeah, it doesn't look like there's any play for black at all. बेचारे को और फ्रस्ट्रेशन हो गया. ये क्या भाई? Why has Gukesh's game not started yet? Because he is not playing, man. He withdrew because of internet issues. आपके लिए पिकअप लाइन. Hi, I'm Sahil Tikku. उसे लड़की for sure pick you up and throw you. भाई कितना 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 बेकार जोक था भाई. I think Nihal makes a lot of draws because he likes to simplify his position, then grind his opponents in the end game. That's why his opponents take easy draw by playing good end game. But that skill VD also has, and VD managed to win mostly. So I don't know where Nihal is going wrong. You born the day India achieved independence in the year 75. Tamim bhai, relax karo bhai. If I am a grandpa, then whose grandpa am I? Anyways, attendance mark कर दी मैंने. बढ़िया भाई. VD managed to win mostly. Exactly. VD has this style as well. He will grind in the end game and he does manage to win mostly. So it is possible to play like that. That's awesome. Sorry bhai. Okay, एक और बॉट भाई फेंको उसको बाहर. क्रीपी स्माइल अलर्ट तो दे देते. अरे चैट, डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गो. 300-400 लाइक. लेट्स गो. Vishy doesn't win. Vishy is not playing this tournament. He's playing at night. Okay, that also sounds wrong. Vishy is not playing at, he's playing at night. Even that sounds wrong. क्या चक्कर है भाई? हमारा दिमाग इतना गंदा हो चुका है यार. क्या घटिया स्माइल था भाई. अक्षय कुमार करे तो अच्छा, हम करे तो घटिया है. भाई वीडी का जब भी सोचता हूँ टाटा से लेके आता है वो दैट पॉन फोक. अरे यार उस राज अपन 2 बजे तक पिया. वन ऑफ द वर्स्ट स्माइल्स. ये बॉट कल ताना के स्ट्रीम में भी आ रहा था बहुत बार. रियली? ताना ने की स्ट्रीम कौन सी? ताना ने कोई और स्ट्रीम भी कर देगा उसके बाद, शायद करी हो. अर्जुन लुक्स टोटली आउट ऑफ टच. आई एम नॉट श्योर मैन. अर्जुन इज प्लेइंग वेल टुडे. ही इज प्लेइंग वेल टुडे. ही वाज नॉट प्लेइंग वेल यस्टरडे, बट टुडे ही इज फाइन सो फार. हाँ, ये रहा साहिल भाई. क्या हाल है? हमें भाई कुछ और भी लिख लो. तानिया ने एक प्लेइंग बुलेट स्ट्रीम किया था. अच्छा, ओके. जहां टिक्कू भाई जाते हैं वहां ये बॉट आता है. आई डोंट थिंक दीज बॉट्स आर फॉलोइंग मी. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. वीडी का जब भी सोचता हूँ ग्रैंडफिल्ड की आ जाती है. अरे यार. एनीवेज, लेट्स गो निहाल गेम भाई. भाई तो क्या मूव है? क्वीन टू d2 यार. सीधा इज लाइक भाई रुक टेक्स d4. फर्स्ट ऑफ ऑल रुक टेक्स d4 एंड टेक्स ऑन h6. खत्म. तान्या की सारी स्ट्रीम्स देखते हैं टिक्कू भाई. भाई तान्या क्या स्ट्रीम इतना कम करती है. सो आई हैव सीन सम ऑफ हर स्ट्रीम्स, बट ऐसा नहीं है कि मतलब सारी स्ट्रीम्स आई एम नॉट सो श्योर. बिकॉज यूजुअली मैं वो स्ट्रीम देखता नहीं ना यार. मतलब ऐसे इफ समबडी इज प्लेइंग प्रॉप नाइट आई रियली वॉच दैट स्ट्रीम. इफ समबडी इज प्लेइंग समथिंग एल्स आई रियली वॉच दैट स्ट्रीम. तो मतलब कंटेंट मतलब आई डोंट नो, डजंट अपील टू मी टू मच. आपने कभी कैंसिल होने वाले काम करे हैं? भाई कैंसिल होने के लिए फेमस होना पहले जरूरी है. सो दैट्स द थिंग. व्हाई गुकेश इज नॉट प्लेइंग? भाई ही हैज सम इंटरनेट इश्यूज. जिसको इंडिया शॉर्ट्स आर फनी नाउअडेज. आई नो दे गेटिंग फनी एंड फनियर. अरे सूर्य भाई थैंक्स फॉर सब्सक्राइब भाई. हाय यार, हाय बोलने के लिए इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है यार. दिस इज नॉट ओनली फैंस, बट थैंक्स अ लॉट भाई. थैंक्स अ लॉट यार. अप्रिशिएट इट. आपने प्लग को भी हराया है? हाँ, हराया तो है यार. बाय द वे क्रूक जी प्लेड नाउ, बट आई थिंक maybe chat bishop f1 and bishop h3.
like this maneuver जहाँ पे I can remove the knight and then take on h6. Maybe that is possible, yeah. Bishop f1, bishop h3. What a cool maneuver if it works. I think it might be possible. It might be possible. Tikku is cracking one of the one-on-one series of 10 chess matches. Who will win? I think even if I play against him, he will automatically win because I will not play against him. Hello everybody. Hello Aish bhai. सब लोगों को लगता है कि प्रग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता है, निहाल क्यों नहीं? क्या कमी है निहाल में? क्या है प्रग में जो निहाल में नहीं है? क्या है उसमें? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? सॉरी, तुम्हें डायरेक्ट चेंज हो गया. आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि निहाल ने कार्लसन को हरा दिया. दैट्स व्हाई दे से दैट. एंड आल्सो हिट विद डिंग एंड ऑल दीस स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स. वंस निहाल आल्सो कंटिन्यूज डिफीट दीस प्लेयर्स, आई थिंक दे विल आल्सो से दिस अबाउट निहाल. टिक्कू भाई आप हो फेमस, आपको पता नहीं है आप हो. मुझे तो नहीं पता है भाई. मॉड बनने का एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होता है? यही होता है भाई. बट स्टेप 1 टू मॉड एग्जाम बी रेगुलर. वो करना बहुत डिफिकल्ट है भाई. टिक्कू वर्सेस कराकन को फॉर श्योर टिक्कू विल विन. मैच खत्म होने का पहला टिक्कू कराकन की पिटाई कर देगा. वो पहले ना हो जाए यार. खत्म, वो छोड़ो. वाइट का बिशप बैड बिशप है ना. इट इज अ बैड बिशप बट यू कैन टर्न इट इनटू अ गुड वन. दैट्स द पॉइंट, राइट? यूज दिस बैड बिशप फॉर समथिंग. Will Vishanan defeat Wesley? So I am hoping, man. I am hoping for it. I am really hoping for it. Wesley को हराओ और दिन खुश करो यार बस. Am I regular? For a few days. Rook takes b7. Now rook takes b7 looks logical because if you take, I take on g4, and it is better for white. But maybe it's unnecessary a little bit. Exchange करने की जरूरत है because now black has the b file. Which I don't want to give it to black. If possible, you can play this though. It's not a bad move, but maybe the simple maneuver bishop f1, bishop h3 is a bit easier because you're not sacrificing material. Material क्यों sacrifice करना? When your simple answer, don't sacrifice material for looking cool. Yeah, it looks very cool. पता है मैंने कैसे हराया अवंतिका को? भाई रूक sacrifice करके रूक. मतलब it feels cool, but I think in the end, on the scoreboard only 1 point will be added. And at some moment you will play rook b7 and it will hurt you later on when you are down on material. What is one question that you want to answer but nobody asks you? That's a very interesting question. I don't think there's any such question. लोग तो मेरी चीरहरण कर ही लेते हैं भाई, पूरा सारे सवाल पूछ लेते हैं. I'm not really sure if there's such a question. It is not a bad bishop. It is just a pawn. ठीक है भाई, तो ऐसे करो. आप मुझे ऐसे 5 पॉन और दे दो और मैं आपको एक रुक देता हूँ. चलेगा क्या? चलेगा भाई. एक गेम खेलते हैं. आप मुझे ऐसे 5 पॉन दे दो और आप एक रुक रख लो भाई एक्स्ट्रा. वो बॉट मेरा ही है रेगुलर होने के लिए. अरे वाह आकाशदीप भाई, क्या शब्द है आपके. क्या शब्द बोले आपने, मतलब बिल्कुल घटिया. एम आई रेगुलर? हाँ, काइंड ऑफ. निहाल अवंतीलाल को फिर से रुलाएगा. क्यों भाई? विल यू मैरी मी हो गया सवाल. नहीं भाई, आई डोंट थिंक शादी की जल्दी है मुझे. हेलो टिक भाई, मॉड बना दीजिए. ये लो भाई. हेलो साहिल आनंद स्वामी. माय गॉड. एम आई रेगुलर भाई? ये क्या है भाई? कोई रेगुलर ग्राफ नहीं बनाया मैंने. Who will win endgame? Rook versus 4 pawn. I think Rook will win in most cases. Depends on, actually not. Depends on where the four pawns are. अगर 4 pawn अलग अलग है तो Rook will win most likely. 4 pawn connected है तो most likely a draw. अगर 4 pawn यहाँ है तो pawns win. By the way, what the hell? Who was Rook b7 भाई? कौन था वो Rook b7 वाला भाई? प्रणाम हो, आप देवता हैं, क्योंकि निहाल ने Rook b7 मार दिया भाई. आप क्या लाइफ बर्बाद कर रहे हैं चैट में रह के. आप भाई खेलिए टूर्नामेंट. आप एमपीएल का अगला टूर्नामेंट खेलें, ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और अगला निहाल को पेले भाई. So Bishop B7 and Rook G4 played by Nihal as well. Awesome. अरे ट्विटर क्यों हाईलाइट हो रहा है भाई? हट जा ट्विटर, दिमाग ना चाट. Anyway, let's go back. To how to beat the Grandmaster, step 1, get an AK-47. Wow. The idea was to capture this knight now, chat, and G8-6 is a threat, and that will be the last threat of the game, so that's the problem. And black has to probably play Queen F8, either defend this pawn. Queen to D7, okay. But G6 looks dangerous, Rook G3 looks dangerous. Maybe just Rook G3, not trying to close the king side maybe.
आपका और लवी का मैच कब होगा? बस यार जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे तब जब सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे। चैट डू सब्सक्राइब ताकि मेरा मैच लेवी से हो पाए। लेट्स गेट टू 100K मैन। वंस आई गेट टू 100K आई विल कॉल लेवी ऑन स्ट्रीम, आई प्रॉमिस। लेट्स गो चैट। 100K करते हैं भाई जल्दी से 100 की वॉचिंग है और 100K करते हैं। रुपी 7 कैसे भाई? बस जादू भाई जादू। स्टैंडिंग सीन के बाद देखेंगे भाई। अटैकिंग गेमर का बैन खत्म हो गया। कौन अटैकिंग गेमर भाई? अच्छा वो बैन क्यों किया था भाई? Who do you think is the biggest prodigy chess has ever produced? For me, it's Fisher or Casablanca. I'm not sure because I think prodigy के terms में, because nowadays people get it earlier and earlier, yeah. So I think मैंने किया था, अच्छा गलती से पता नहीं मैंने क्यों किया था. I think it's more like we cannot compare different times because nowadays you have the internet, you have so many resources man, so it's kind of unfair to compare. मतलब आजकल लोग literally मतलब you कभी भी कुछ भी कर लेते हैं यार मतलब, and you can literally go to the internet find all games live. पुराने ज़माने में ये गेम देखने के लिए आपको हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था. Then this game would arrive in some magazine. You would go to the market, buy that magazine, and then you would analyze that game by yourself without engines. And imagine how much hard work that was. I mean, ये मैंने बहुत पढ़ा है ऐसे कहीं इंटरनेट पे. Do read about this. It's so difficult to prepare earlier. Just subscribe to your channel and found a lot of nice content. OnlyFans की बात कर रहा था. White is also fine, I guess. Okay भाई, ठीक है, बढ़िया है. भाई वहाँ अपने OnlyFans से पैसे नहीं भेजे यार. कम से कम ₹1,00,000 तो भेजते भाई. Sorry भाई. Doesn't Ruby7 make sense that Vantika is short time? Yeah, it does. I think Nihal is also a bit overconfident, right? Because he thinks Vantika is much weaker than him, so he can get away with even the second best move and the cooler move. But if let's say Gukesh was playing this game or Arjun was playing this game, I'm not sure he'll go for Ruby7. That's my understanding at least. Can I play on both tournaments? My rating is only 1400. Yes, you can, bhai. Have you played any of these GMs? I have played half of them, I think, roughly. I lost to few, won against few, drew against few. विशी से पहले ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर कौन था? कोई भी नहीं भाई. आई सॉ चीटिंग वाला क्या हुआ था उस के साथ भाई? वो बच गया भाई, फिर ने कुछ भी नहीं किया यार. आई एम रेगुलर, जस्ट डोंट चैट, जस्ट एंजॉय मैच कमेंट्री. निखिल भाई, ग्लैड टू हैव यू स्टिल मैन. भाई आपको क्या लगता है कब तक होंगे 100K? भाई पता नहीं यार, भगवान के ऊपर यार वो तो. आई एम ट्राइंग हार्ड ऑन बोथ चैनल्स. किसी एक के तो कर देंगे इस साल के एंड तक यार. किसी एक चैनल के 100K इस साल के तक कर देंगे, मुझे लग रहा है यार. इस साल के एंड तक तो कर ही देंगे भाई. अगर इस साल के एंड तक नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे भाई, ऐसा मुझे लगता है. सुल्तान खान, या बट सुल्तान खान ने एंड में बोल दिया भाई, पीपल शुड नॉट प्ले चेस एंड शुड डू मोर प्रोडक्टिव थिंग्स विद देयर लाइव्स. सो ही लिटरली रोस्टेड चेस आफ्टर डिफीटिंग द वर्ल्ड चैंपियन. आई मीन थोड़ा सा, आई मीन टॉक अबाउट ईगो. Gukesh had withdrawn from tournament, sad to hear. Yeah man, because of internet, she could not have good internet, so he simply withdrew. Day 1 of trying to be a mod. Day 1, yeah, many days to come. मैं रेगुलर हूँ, फ्री मॉड नहीं हूँ. तो क्राइटेरिया नहीं है मॉड बनने के लिए. इट्स वन क्राइटेरिया भाई, वन क्राइटेरिया. One criteria is not to roast the London system. That's one more criteria, by the way. You are Rakesh, bye. Also, Anish was 30, so when he was 70-year-old, since he is also prodigy. Of course, dude. Anish got married at 21, I think. So he's always in a prodigy in everything in life. मैं 2 साल से रेगुलर हूँ भाई, मॉड नहीं हूँ भाई. 2 साल लेकिन अब रेगुलर नहीं थे ना यार, बीच में आते थे. Who was first GM and how the GM title came to be? I don't know who was the first GM. I know India's first GM was Vishy, I think. Or Vishy थे ना first GM, I think. Number of days required to be mod is inversely to super chat you gave. अबे यार, Stefan and his super chat jokes, dude. मैं तो रेगुलर हूँ, even you know this. चांटी बात तो सही है भाई. लंदन से अच्छी ओपनिंग देखी नहीं मैंने, ये हुई ना बात भाई. गुड स्टेप, वन गुड स्टेप टुवर्ड्स बीइंग अ मॉड समडे मैन. गुड स्टेप. बोथ चैनल्स, देयर इज अनदर चैनल. या भाई, देयर वन मोर चैनल भाई, दैट्स फॉर वीडियोस. Chat, by the way, this is over man. Just queen g5, win the queen to the game. Take on g6 also works. Now that was the problem, yeah. That's why I do not like sacrificing material for no reason, because if something goes wrong, then black can have some counter play. Although here white is still winning with these pawns. Let's go to the game of Raunak Sadhwani. Oh, Raunak is completely winning, dude. Black की रानी कहाँ है भाई? Where is black's queen? Where is black's queen, dude? Where is black's queen? भाई रानी कहाँ गई? Okay, Raunak is crushing it, man. हर किसी को पेल रहा है भाई.
Let's go to the game of Arigasi Arjun now. और ये देखो चैट, White ने ये pawn chain बना ली है. Oh my god! Look at this pawn chain, dude. Look at the king on d2. What is this game? I have never seen this, dude. What the hell is this? This deserves like a Twitter. This is like a tweet, man. What the hell is this? Have you seen anything like this ever? Have you seen this, chat? I have never seen anything like this. This is crazy. This is crazy. This is crazy. I mean, this is just crazy. ये क्या है भाई? मैंने खेल के 12-16 पे आ गया. Awesome. Fortress, I don't know, man, but this position is insane. What a pawn chain by white. What a pawn chain by white, and what a pawn chain by black. I think I should tweet this position out. Anybody looking for any positions for for his new book? रुको भाई, tweet करते हैं भाई. tweet करने मजा आएगा. Talking about pawn chains. Anyone looking for a crazy position for his new book? This is, I think, Ghosh versus Arjun. और मैंने Ghost लिख दिया. Ghost versus Arjun. Oh my god. Not Ghost. Ghosh भाई. Ghosh. Not Ghost. Anyways, let's tweet this out भाई. Okay, that is done. Tweet कर दिया है हमने. Awesome भाई. That's chill. मैंने पोजीशन में खेला है टूर्नामेंट में भाई. ये क्या यार, अपना इंजन एरिगेसी को क्या हो गया यार, पता नहीं यार. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसका इंजन आउटडेटेड हो गया है ना. पता नहीं अपडेट आने वाला होगा अब. Who is in this tournament so far? Raunak is leading by Raunak with Nihal. Let's go to Nihal's game. Because Nihal is also leading the tournament along with Raunak for now. Both are 11 points. So we might see a very important game of Nihal against Raunak. By the way, next round, who's playing? Oh, Nihal will get the bye against Gukesh. And Raunak plays Avantika. Oh, Raunak plays Avantika. And in the last game today, we have Nihal against Arvind and Arjun against Mitra. Bhai, बहुत crazy lineups hai. Will be a lot of fun. If you were somehow able to time travel and meet William Steinitz, would you think you would be able to beat him? Maybe, yeah, maybe. I think so. Yes. But I'm not sure. India में chess बनी तो कोई राजा महाराजा GM नहीं था क्या? नहीं यार. प्रोफेशनल कमेंट्री कभी करी है आपने? कई चेस 24 के लिए करी थी मैंने. And once for Chess.com India also for Title Tuesday. What happened to Gukesh? Bhai, he has withdrawn from the tournament because of because of internet trouble issues. And Chad, the knight only sees a dominant piece. Queen coming to h6, rook capturing on g6, and yeah, let's go queen h6 now. He plays it. You can't move the queen because of queen g7 mate. Rook g8 is not possible. Queen e8, queen g7 mate. So the g6 pawn is also falling. This bishop is coming to g5. Chad, this is completely lost. What a game by Nihal Sareen, showing his true class against Avantika. Avantika having a hard tournament in a way because she's playing so good, but she's not able to convert her games. But this game was, of course, one way. Yomish bhai, Vishy for candidates indeed. अब उकेश के ओपोनेंट्स को फ्री पॉइंट्स मिलेंगे. या बट हर किसी को मिलेंगे भाई. What was the reason chess becoming popular in India nowadays, regardless Vishy becoming world champion? I think it was a combination of Samay starting this trend and then Sagar bhai joining it, then Vidit joining it, so on, and the Wolf gang, so to speak. It was all the efforts which made chess popular in India. Of course, it's gone down quite a bit now. Even Levi said in his video, कि उसके जो impressions हैं per video, they have gone down by 70%. So it's very obvious कि chess का culture बहुत नीचे चला गया इस साल. But it's good to have at least some popularity in terms of the game. How did Kasparov beat Karpov? Because of World Karpov game, he plays almost near perfect. That's the point. No, he plays static chess and Kasparov was very, very dynamic chess. He got Karpov out of his comfort zone, I feel. Who was the first GM in India? I think Vishy Anand was the first GM. Where's Gukesh? He well left, but he left. उसी गर्लफ्रेंड का कॉल आया, उसने गाड़ी पकड़ी और ले गया भाई वो. और हमें बोला आई कैन नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज. बट एक्चुअल चक्कर तो कुछ और ही है. जस्ट किडिंग बाय द वे. रात को वो गेम भी एनर्जी बचा के रखो. अरे हाँ भाई, एनर्जी का चक्कर नहीं है भाई. टुंग टुंग टुंग, इट्स मोर अबाउट माय थ्रोट. एनर्जी का कोई चक्कर ही नहीं है. आप चेस के अलावा कौन सा गेम खेलते थे? फ्लर्टिंग का गेम हमने बहुत खेला लाइफ में यार. What happened to Gukesh? He did not have internet connection, yaar.
Ignoring Tiku, okay. Passively win कर सकते हैं high level games. Of course, man. Sometimes you have a slight edge, you just push it, grind, and don't take any risk and you win. Sometimes you want to take some risks. Depends. सुनो यार, आप चेस के अलावा कोई और गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो? बहुत हो गया आप चेस के अलावा कोई और गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? साफ साफ बताओ, ये बहाने मत मारो. नहीं यार, मैं नहीं खेलता यार. I used to play badminton sometimes. I used to play football as a kid. I used to play cricket as a kid. But I've settled down to chess now. I would love to play badminton and football at some point. But COVID के बाद वो पूरे सपने मेरे टूट गए. बैकग्राउंड मेल्ट हो रहा है. आई नो, लाइट गई भाई, इसलिए मेल्ट हो रहा है. वो भगवान आप आ गए. अभी जाना नहीं है मुझे. अभी नहीं जाना भगवान. थोड़ी देर छोड़ दो. हाँ अभी छोड़ दो भगवान. हाँ अभी चलो. चैट है ना मेरे साथ. हाँ चैट बोल दो मैं कूल हूँ भाई. प्लीज बोल दो मैं कूल हूँ. चैट बोल दो साहिल कूल. हाँ कूल हूँ मैं, बहुत कूल हूँ. हाँ ऑल चिल. स्क्रीन के कॉर्नर में मैसेज लिख दे, व्हाई युकेश विड्रॉन. आई हैव ऑलरेडी पिन्ड द मैसेज चैट. हु इज द सेकंड जीएम ऑफ इंडिया? आई थिंक इट वाज आई फॉरगॉट हिज नेम. बी से नाम था ना, बरुआ राइट. बीएम बरुआ राइट. ले जाओ इसे, बहुत क्रिंज है. अरे ये क्या है भाई, कल्ट नाम रखा है आपने. मुझे ले जाने की बातें कर रहे हो यार. कल्ट वाले तो ये बातें करेगा. निहाल इतना सोच रहा है. लंदन जैसी ओपनिंग मैंने कभी नहीं देखी. वाओ सारी, यू आर द बेस्ट. मॉड बनाओ. अरे वाह, आपने लास्ट में मॉड लग दिया, तुमने पूरा खेल स्पॉइल कर दिया. थैंक्स चैट फॉर द सपोर्ट बाय द वे. बरुआ देन थिप्से इंडीड. प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ मजाक, वी रियली लव यू. अरे समीर भाई, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स. बाय द वे, रूक F7 played and now maybe just queen g4 rook h3 and we finish the game. Yeah, queen g4 rook h3 and black resigns. I'm gonna play queen g4 and rook h3 I play. And what do black do? Black and no move. Black king naked dancey and black king had no move, no clothes on. I play queen g4 rook h3 and black resign and the king had nowhere to go. It crying like a beach. Oh sorry. What is the job? My job is to make people happy. Clickbaits भी बनाया करो, views ज़्यादा आएंगे. ठीक है भाई. अगली वीडियो टाइटल भाई, I defeated Vishi Anand. Can you try to make a video on every world champion like Khaled से style? Good idea भाई. I'll try to do it on second channel भाई. गौतम यार बहुत clickbait करता है, but it's required to some extent भाई. थोड़ा बहुत करना चाहिए, otherwise वीडियो के व्यू नहीं आएंगे यार. Queen g4, rook g8, queen rook h3, queen trap. Yeah, that's sad man. The reason for less viewers maybe is that people have to watch players rather than the chess games itself. That's possible भाई. That's true. Might be true. Bishop f1 का आइडिया क्या भाई? ये क्या creepy. अच्छा ओ with the idea of rook h3. अरे भाई स्मार्ट और सॉली भाई यार, आप जीएम बनो यार. आप क्या यहाँ कर रहे हो? जीएम बनो बिल्कुल. Also a good move यार. Bishop f1 with the idea of rook h3. Good move. Arjun game. Let's go. This was the Nihal game chat. Nihal is winning. Let's go to Raunak's game. He was completely winning and he's still completely winning. He's simply having a queen. Let's go to the game of Arjun. Arjun has slowly tried to outplay his opponent here. As you can see, you know, he set up this queenside play. He's blocked the b7 pawn, and white basically maybe wants to sack at some point, but his king is still kind of weird, you know, weirdly placed on e1. GG Vantika, yeah. It was an early winning is not bad. Thanks Cult भाई. पहले तो रोस्ट कर रहे थे, आप अब तारीफ कर रहे हो. Cult भाई आपको समझ नहीं आ रहा मुझे. Why don't you play in place of Gukesh? After all, you are first and I'm from India. I would love to play, dude. I mean, it would be an honor. But I don't think I want to lose like so many games in a single day. So, the final karunga stream, Shavai. Of course, karunga final stream. It will be on 6th. Bishop f1 is very strong, by the way, in Nihal's game for sure. I think Arjun is also winning chat. So, we are seeing the stronger players now take the lead. Let's go to the game of Arvind Chidambaram. Chidambaram is worse against Aradhya Garg. Oh my god. Will Aradhya Garg, the only FM in this tournament with a rating of 2275, which is almost the same as mine, spoil the tournament of Arvind Chidambaram? It does not look like good position for Chidambaram here. He's struggling, chat. He's struggling for sure. Knight de2, not a bad move, avoiding any damage to his pawn structure. The knight can go to g3 and later some sacrifices on f5 possible. Let's go a4, push the a pawn. Chidambaram's struggling here. Let's go to the game of Nihal. Has he finished the game? Not yet. Is FM greater than FM? No. Is he stronger than FM? Yes. Not greater though. Greater is a big word. कभी scary games के stream करो. Scary games क्या होता है भाई? Arjun will somehow survive and maybe win. I know he will, but still, for now he's struggling, yeah? Do you think you have potential to become a GM in 5 years? Okay, I'll clear this out. If I get to 100k this year, next year, by the end, I'll be at least
IM with a rating of 2450 and a couple of GM norms. I can guarantee it. If I get to 100k by end of this year, if I don't get to 100k, I have 0% chance. As simple as that. भाई ये गरीब सा बार हटाओ ना भाई, गरीब बार गरीब सा बार क्या होता है रे भाई, गरीब लोगों को भी जीने दो यार. कैसे सब्स्टिट्यूट करके आप ज्वाइन करो टूर्नामेंट भाई. आई कांट डू इट, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स यार. Because some players already played Gukesh, right? So they can't add any new player there. यार बार क्या फूक रहा है भाई, वो चेसकॉम का बार है, थोड़ा हाई तो हो सकता है यार. अर्जुन गेम प्लीज, अर्जुन गेम पे चलते हैं भाई. अर्जुन गेम इज अ bit complicated right now. He is winning because White's king is kind of completely naked, and he's trying to exchange pieces, and slowly he will play rook g7, he'll play rook g1, and then this king will get crushed, and this organization will simply stay standing here. You can't find him. You need to play in the US and get a rating of 2200. That's why it's rare, because you can't get it in India. आपकी वीडियो देखने में बहुत मजा आता है, आपसे कुछ सीखूं ना, बट इंग्लिश जरूर सीख जाऊंगा. ये क्या है भाई, भाई चेस भी सीख जाओ थोड़ा सा यार. हाँ ऋषभ भाई, बहुत अच्छा भाई. Chess is not a scary game, but highly calculated. True. What do you call someone who is regular person? Then bro, full support. Thanks a lot भाई. इसी बात स्ट्रीम लाइक कर दो भाई. Let's go. Let's get to 500 likes जल्दी से भाई. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel guys. हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ भाई. चलो भाई, let's go. Strongest country in chess right now, it's probably US. Maybe 5 years from now it will be India. Where can I find the standings? I will show you the standings by these are the standings. For now, Nihal Sareen has won the game. He's gone to 14 points. Raunak is also winning, and Chidambaram is struggling. So Raunak will join Nihal on 14. And by the way, slowly as we can see, slowly but surely, you know, Legacy Arjun climbing up. He's winning this game as well. He will go to 9 points now, so not too far behind. Yep, Nihal has one chat. Vantika has resigned because once she moves the rook, I mean, I can just play bishop or rook g8 mate. Sorry, it's this mate in one move. So that's the final game. Let's go to the game of Raunak now. Let's see what's happening here. Raunak has spoiled his position, chat. Raunak ने अपना bishop trap करवा लिया है, and Vaisak NR is back in the game. Nihal smiling. Nihal is going to take sole lead now in this tournament because Black has trapped his bishop on g3. Fide has tried to take your enemy title and give you GM. भाई Fide enemy title Fide का होता ही नहीं है भाई. कम से कम facts तो सही करो भाई. अरे आर का भाई चिल्लो के देखो ना यार. मेरी रेटिंग 1000 थी, पर मैं लंडन सिम खेलता हूँ अब 1300 है. ऑसम जे भाई, वेल डन. नंगे बॉट्स, कौन सा बॉट आया है? अभी कोई बॉट नहीं है भाई. Your screenshot suggests that you are achieving enlightenment. Yeah, it happens when a light goes. Yeah, it happens. Now black is actually better. Yeah, bishop h5 threatening, bishop takes f3, and suddenly you know white is getting mated. I don't think Raunak will win this. He will draw or lose. Oh, Arjun has won. Arjun's opponent, that is Diptyan Ghosh, has resigned, and with this you can see kya folk laga bhai. So rook g7, knight d2, knight f5, king e2 was a blunder, chat, and just knight d4 check here, pawn takes, and now knight to f4 check, giving a simple fork to the king and queen. And that's how you can see even top players or strong players can actually render simple tactics when they're under time pressure or when they're under huge positional pressure. So great game by Arjun there. He wins, goes to 9 points, and Nihal Sareen in sole lead of the tournament. Let's go to Chidambaram's game. What happens there? Oh, very interesting game. Chidambaram is completely lost against Aradhya Garg. That is insane. Chidambaram is completely lost against the lowest seed of this tournament, and that means it's going to definitely spoil his tournament, and he'll be very mad at himself. Aradhya Garg dancing around in his chair right now. Let's go to the game of Raunak now. Can Raunak come back? For now, it looks like a draw to me. Yup, exactly. Why is AG not playing Pride? He's Indian now. I think he's not a junior. That's the main issue. I think that's the main issue. Wow, NMs can beat GMs. Of course, Modi ji yaar. Of course. जब चाय वाला PM बन सकता है, तो क्या NM GM को नहीं मिल सकता? Run seems repetitive for black, but when you have not prepared the best opening for white, सस्ता सुंदर टिकाऊ. ये क्या है भाई? Going to play it now, and rook f4. Black is still trying to win this. आप IM भी नहीं होगा. Still this still cracks me up. Yeah, man.
Also, it comes immortal game. Think they had a similar precision. Also, Grand's game. Okay. How does one jump around in this chair? Like he can do it like this. भाई ऐसे jump कर सकते हो. Attacking game में गुस्सा हो गए. Who are you supporting? I'm probably supporting Arjun. I'm not sure about this though, because I think he has and he's in Team A, so we want him to be on top form. And if he's not in top form, then the Indian team will struggle. And that's why I want him to play well, because he's the only guy from Team A, right? There's nobody else from Team A playing this tournament. Why Surya is playing? I don't know why Surya is playing. I think he's the only non-junior here. I have no clue. Yup, it's very difficult, dude. Very difficult. Let's go to the game of. किसी game बच गया? दोनों game देखते हैं. Okay, this is lost actually. क्या ही देखना? This is lost, man. White is just extra piece and some extra pawn. So it should be over. All games say Surya against Mendonca. Let's have a look. Yeah, so roughly balanced, but very difficult. Yeah, Black's king is kind of weak. So expect White to put some pressure here. Surya to put some pressure. Let's go to the game of Abhijit against Puranik. Okay, dead draw. Equal material, nothing happening. Let's go to Raunak's game again. Shaurya 100. सूर्या की बेटी है ना, हेंस जूनियर. ये क्या यार? सूर्या गेम जूनियर से भी खराब हो गया है. भाई खराब नहीं बोलना चाहिए यार. किसी गेम खराब अगर तुम मेरे गेम खराब हो मुझे बुरा लगेगा यार. So किसी गेम को खराब नहीं बोलते. बोलेंगे दूसरे गेम अच्छा हो गया है. I think that makes more sense. Juniors have kind of risen, yeah. How old is Garg? I think he's like 19 or 20. Garg is male, bro. Of course he's male. किसने बोला फीमेल है भाई? Aradhya sounds a bit like it could be a girl's name also. Makes sense. Sahil being diplomatic. Not diplomatic भाई. Juniors तुम देख रहे हो कहाँ पहुंच गए भाई, पहले आया किसी को. What rhymes with heinous? Heinous के साथ. Dennis the Menace rhymes with it. Where is it? He's traveling to Prague, bhai. He's traveling to Prague. He's playing the Prague Masters from 8th of June. Why the youngsters can outplay experienced GMs? Because they're tactically very strong and their opening prep is immaculate, and they are highly motivated to crush you down in long games. And people who are a bit older have more responsibilities, more things in life going on. So automatically they are less motivated doing a chess game. It's just nature, yeah. I mean, when they become older, there'll be some new noob GM, you know, some name like, you know, Chinky Chameli, and he will defeat all these Nihals. So it will happen to every chess player. Arjun 20, Nihal 19, no Sachin. That's cool. Menace, Tennis, Dennis, Princesses. Exactly, dude. I am not GM भी चल रहा है. Yeah, but कोई Indian नहीं खेल रहा उसमें ना यार. कोई Indian नहीं खेल रहा यार. That's the thing. Tanya was playing and she lost. So now there's no point in watching the tournament. आपकी निहाल के साथ खेले हो क्या? नहीं यार. I've met Nihal though. He was playing Parsons Open in 2016. He was 22 तब. GM Chinky Chameli. Yeah, exactly. Chinky Chameli, not Chickney Chameli. यार copyright का चक्कर रहता है. Chinky Chameli. GF revealed. नहीं यार. Unfortunately, Chinky Chameli is not my GF. Regardless जितना मान लो. She's not my GF chat. Come on, yaar. Tiku wins over Nihal in Super Bullet. Live vs Nemo. I am not a GM. देखा नहीं यार. Live vs Nemo नहीं, मैंने वो देखा. Live vs Rosen में क्या पेला Rosen यार. By the chat, I think Black just made a mistake. He just blundered a pawn for no reason. यहाँ पे I have no clue why he did not try to do something else. What's wrong with rook e6? Oh! Rook takes and queen takes d5. Dude. Crazy. So apparently bishop g5 was the best move here. And if you take, then rook to e5. But yeah, this again looks difficult. This is difficult. So I think maybe Raunak will in the end end up winning, yeah? He might just win this. Stranger Things fan, yes. भाई फाइनल सीन कितना एंड था ना, कितना एपिक था ना इस बार की सीजन का. आई लाइक द फाइनल सीन क्वाइट अ बिट, एंड आई थिंक जुलाई वाला सीजन के लिए बहुत हाइप होगी. लेट्स सी. GM Mia Khalifa. Okay, I'm sure you're a big fan of her play, but I'm not. I have not seen many of her games. Standings, भाई standings अभी राउंड के बाद देखेंगे चार्ट. डेब्यू का टाइटल होता है क्या? होता होगा यार. I have no clue. होता होगा मे बी. When is Prague Masters starting? Prague Masters कोई टूर्नामेंट नहीं है यार.
स्पॉइल नहीं यार, स्पॉइल तो कुछ किया ही नहीं मैंने, स्पॉइल तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बताया कि आखिर तो अच्छा है। मस्त सब ग्रो हो रहे हैं, सब ग्रो हो जाओ भाई, तुम सब ग्रो हो जाओ यार, लेट्स गो, तुम सब ग्रो हो जाओ। डू लाइक द स्ट्रीम चैट। देखो अभी कितने लाइक है भाई, अभी हैं पूरे के पूरे 352 लाइक्स। जल्दी से 400 कर दो भाई, जल्दी से सब दबा दो यार, दबा दो जल्दी से 400 कर दो भाई। एंड इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर सामने सब्सक्राइब बटन होगा उस पर उंगली रख दो और पुश करके दबा दो यार, हमारी फैमिली में शामिल होगा भाई। Nihal won, yes. Nihal defeated Vantika, and Arjun defeated Gupta and Ghosh, and Chidambaram is losing to Aditya Garg, and finally we have Raunak who's still playing as Vaisak. जय महाकाल, लाइक बटन दबाओ इंडीड। सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आनंद हम्पी का, शर्म करो यार, मैंने मेरे को सारे मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए भाई, आई थिंक दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, कुछ भी पढ़ देता हूँ मैं यार। सब दबा दो भाई। 2022 अर्गाइल इज माय फेवरेट फ्रॉम सीइंग थिंग्स, ही इज टू फनी। हु इज अर्गाइल? मेरे को नाम याद नहीं आते यार, पता नहीं क्यों। रैंकिंग दिखाओ, ये लो भाई, देख लो यार, ये लो। Nihal is leading and Raunak will win. He will join him with 14 points. And Puruneka is also on 11. Oh, but he's out of 18. So his game has finished and now he's on 11. And Erigesi also joining the lead, yeah, with 9 points now. He's on top 6. That's crazy. That's the third timeout given to attacking gamer today. भाई attacking gamer की मजबूरी है लगता है. He has some मजबूरी भाई. Chinky is a racial slur. Okay, I don't know भाई, मैंने तो चिंकी चमेली बोला था for a next GM. I will avoid it then. I don't know about this. लंबी बाल वाला आर्गाइल, अच्छा ओके समझ गया। जॉनथन का दोस्त, अच्छा। I like Max. प्राग starting from 25 जून something really soft. Not 25 जून, it started from 8 जून भाई। आपकी रेटिंग कितनी है? 2201 स्वराज भाई। By the way, rook c8 played by white now. Rook e2 check, and now king f1 and rook takes b2, and just c takes d4 should give white a winning position. Although black will have some counterplay here because your king is cut off on the back rank, but it will not be easy because I am also sending d4, d5, d6, queen d5 check. What black can try to do is get these rooks on the 7th rank and try to give some back rank mate, kind of. Let's say rook h1 here, that will be mate, but it's very difficult to get because I have the bishop hanging here. Time control 15 plus 10 है यार। जॉनथन का दोस्त वाला, ओके ठीक है भाई। मैच खेलो मेरे साथ, 10-0 पेल दूंगा। टिक्कू एक्सपोज स्ट्रीम नाम डाल देना। नाइस एनएम टिक्कू है चैट में। बाय द वे, दिस इज अ ब्लंडर चैट। नाउ क्वीन टू c1 and when the rook moves, then queen c4 check, and the black king will step out into some new territory. I can pick up the b4 pawn as well. I can go queen f7 as well, and I think white is completely winning now. Your favorite in candidates? I have not chosen my favorite just yet. He finds it, man. He finds queen to c1, and now black is struggling. आप गुहा जैसे प्लेयर से क्यों हारे भाई? गुहा जैसा प्लेयर मतलब भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यार वो। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग डूड, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रुको भाई चैट, रुको। भूख लगी है यार, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना चाहिए भाई। Guha is strong, he will succeed. Yeah man, he's strong. Salai will choose Ding his favorite. Yeah, maybe that's likely. That is, now let's push the g pawn man to g6, and that should be, yeah, he pushes the pawn. It's over. आपने तारे जमीन पर एक्ट किया है क्या? हाँ यार, बहुत एक्ट किया मैंने तारे जमीन पर। मत करो, बहुत मनहूस लगते हो भाई। क्या किया मैंने? अच्छा, कद्दू ले लो ना यार, कुछ टेस्टी चाहिए यार, कुछ पेट भरना चाहिए यार, बहुत भूख लगी है यार। Raunak again in lead. Yes, Raunak and Nihal will be in lead chat. Argal is funny indeed. Can you show performance rating? We will have a look. I think performance rating तो है ही नहीं यार, इधर लिखी नहीं है rating performance I think. अच्छा लिखी है। नहीं लिखी भाई, unfortunately. Do not return it. पिज्जा खा लो, पिज्जा is too unhealthy man. कुछ हल्का सा घर का कुछ मिल जाए ना तो मजा आ जाए। इटालियन मंगा लो, फ्रेंच मंगा ले क्या? या रशियन? Raunak again is in rook endgame. Yeah, I know man, I know. But this is winning. This one is winning. Chat, what's the winning plan? Batao. What's the winning plan? Chat, batao. What's the winning plan here? How does white win this? Because if you push the pawn, I can always put the king here. What's the winning plan? Chat, batao. The winning plan is g6, and now you will
go to h4, give a check, and pick up g7, and then you queen the pawn. You could also have brought the king to g6, by the way, also a strategy. Both these moves are possible. Queen भी मार सकते हो, possible. But in the end, ये plan तो खेलना ही पड़ेगा. ये pawn मारेंगे, and then we pick up the pawn, we go g8, and it's over. Russian खाने की याद कराता है, काफी टेस्टी होता है. Who's the favorite in Stranger Things? Not sure. भाई अभी बोला pawn push गलत है. मैंने बोला क्या गलती हो गई यार? pawn push सही है भाई, pawn push सही है. My bad. मैं किंग से पहले सोचा था यार. My bad. भाई समोसा मंगा लो, and he has won. So Raunak Sadhwani has also won, bhai, and that means we look at the standings now. Let's close this round games and we'll head to the next round games. Nihal will get a bye this time, but Erigasi Arjun will play Aradhya Garg with the white pieces. Let's look at the standings. Raunak Sadhwani 14 out of 18, tied lead with Nihal Sarin 14 by 18. Next Dambram with 12 by 18. Puranik on 11, and Arjun ranks 6th now. He won 2 games in a row, and you can see how he's slowly coming back. And Aradhya Garg has won the previous game, and Aradhya Garg playing really well. Yeah, 7 points, not so bad at all. Defeating, I think he defeated, right? He defeated Chidambaram. So he spoiled Chidambaram's tournament quite a bit. And now we go to the game of Erigasi Arjun against Aradhya Garg that starts in 1.5 minutes chat. Will we see GM Sahil Tikku and GM Sagasha playing CCT someday, man? Some fine day that will happen. Chat, do like the stream. Let's get to 500 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Surya's 11th. Yeah, man. Surya not having a good tournament. Are there any Speed Chess Championship players in the same rating as you? I don't think so. I think I Am Not a GM is being played by players who have a rating similar to mine. But they also have more followers in general. And they usually call people who are more famous on Twitch than YouTube. So Chess.com is basically a Twitch platform kind of thing. They have people on Twitch. Bichara Nihal Gukesh, yeah, man. You're officially invited to give inauguration speech at FIDE Olympiad this year. Thanks, bhai. Thanks, yaar. FIDE pizza unhealthy नहीं मंगाना महंगा है बस. भाई महंगा भी है ही, but unhealthy होता है यार. That's the main thing. Did you see Saga Bhai's game against Vaibhavi OTB? नहीं यार, I have not seen it yet. I am अच्छा टाइटल नहीं लगता. भाई अधिबान को क्या हो गया यार? Really hoping he'll come back. But he'll be back. Don't worry, bhai. He'll be back. I have full faith in Adiban reaching like 2700 in the next couple of years. I have full faith. I am a Twitch streamer. Yes, Modi ji, आपको तो पता होगा, आपने सब कुछ ट्रैक करके रखा है. But लेकिन मैं Twitch पे बहुत रेयरली स्ट्रीम करता हूँ यार, once twice a month. वो भी मजे के लिए थोड़ी छोटी सी स्ट्रीम. भाई लंदन खेलने बोलो, भाई लंदन खेलना पड़ेगा. Come on अर्जुन भाई, let's go. बोल दिया यार. You are one of the best commentators. अच्छा प्लेयर तो बहुत है. Thanks a lot यार जीतू भाई. पेपर खा लो हल्का. वाह वाह. Adiban को टीम से, अरे ऋषभ भाई ऐसे काम नहीं करती है दुनिया. Adiban is a strong player. He deserves to be there, and Vishy deserves to be the team A, not team B anyway. So I think if he should play, it would be awesome. But I don't think he'll play now. Hey Rashid भाई, what's up? What's up? समोसा भी तो अनहेल्दी है, वो क्यों खाते हो? समोसा छोटा है ना यार. समोसे में कितनी कैलोरी होंगी? समोसा will can have 200-400 calories max. पिज्जा भाई चीज बर्स्ट में like it can have thousands of calories, dude. Really difficult game for Vishy from now on. Yeah, Vishy is playing Wesley So today, then Carlson in the next round. So next 2 rounds of Vishy, if he wins 2 rounds, chat, if Vishy wins the next 2 rounds, he wins the tournaments hands down. As simple as that. अगर Carlson और Wesley को हरा दिया, he wins the tournament, guaranteed. Adiban, the beast will come back stronger indeed. That's the hope. Following passion versus engineering. But I think you should probably keep both in hand until you build your system and your passion. Pizza has around 1200 calories. Yeah, exactly. And cheese bars add करो तो और ज़्यादा हो जाती है यार. Tea or coffee? Coffee always. Any chance for Arjun realistically? Of course, man. He won 2 in a row. I'm a coffee kind of guy. I mean, I like coffee. Cold coffee भी बहुत पसंद है मुझे. बोल डालो कुछ लंदन ओपनिंग स्लाइड नहीं यार. मुझे अपने बबल में रहना है भाई. ये लड़की के चक्कर में कोरियन अब अधिबान. अरे यार छी, बेचारी लड़कियों को घुसेट दिया, उनकी बीवी को घुसेट दिया उसमें. भाई जलेबी का क्या हुआ रे? जलेबी नहीं खाई बहुत टाइम से यार. नहीं यार, टेम्प्ट मत करो चैट. कबाड़ नहीं खाना यार. आई हैव टू बिकम हेल्दी डूड. तुम मुझे टेम्प्ट मत करो, मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी. मिल्क पसंद है? ऑफ कोर्स, इट्स फाइन. Order some bindi and bitter gourd and enjoy. Nice. Chat, next game is between Arjun and Aradhya Garg. Other rounds mein you have Vantika against Raunak.
So Raunak has a great chance to take sole lead here. Let's see what happens. How many rounds? Basically, I think there are going to be 15 rounds in total. 4 were yesterday, 4 today, 4 tomorrow, 3 on the last day. We've already finished 2 rounds, so 2 more rounds to go, chat. Why did Gukesh leave the tournament? Because of internet issues, Aditya bhai. There's some internet issues and he could not play on. That was the problem. Gukesh tournament से बाहर सिर्फ आज के matches. I think he's out from the entire tournament, यार. He cannot just not play 1 day. I wasn't sorry भाई. बटर चिकन खाओ यार, टेस्टी तो होता है. Zomato पर सीक्रेट सेक्शन है. अरे ये क्या यार, शाम में स्ट्रीम करोगे? ऑफ कोर्स भाई. कहाँ पर रहते हो भाई? कहाँ रहते हो भाई? कहाँ रहते हो भाई? यहीं पे हूँ मैं. Nihal game भाई. Nihal game will start very soon, but Nihal is playing. Nihal का bye होगा इस round में because he's playing. I think he's playing Gukesh now. Gukesh is withdrawn. I think momos are fine. Would starting at 19 years of age could we become GM? Yes, but very difficult. Arjun game will start very soon. Arjun का game है against another. वही खोल के बैठा हूँ मैं यार. अभी लड़कियां छोड़ दो. 1 साल में 200 के 2 साल में आए हमारे. वाह भाई, किसके लड़कीबाजी छोड़ के इतने सब्सक्राइबर हो गए यार? कौन है वो बंदा भाई? यूएसए की टीम देखी. हाँ भाई, मेरी नींद और चैन सब छीन लिया यूएसए की टीम ने. भाई इमेजिन करो यार. कारुआना भाई, कारुआना इज 2795 समथिंग. ठीक है. फिर इट्स वेस्ली सो एंड अरोनियन, दे आर 2775. देन इट इज डोमिंगेस 2765. एंड यहाँ पे इंडियन टीम में एक 2750 भी नहीं है. So how strong is the US team, dude? It's just insane. He will be on top, yeah, because he will get the free 3 points, right? I think if you just count, what we can do is we can count 3 points free for everybody. Let's see if anybody has lost to Gukesh, by the way. Gukesh किसी से खेला है? He drew against Harsha and Arjun, right? So let's look at Arjun's point. उसमें क्या दिखा रहा है अर्जुन के points में? Yeah, showing a draw. So yeah, you're right. Maybe he can take sole lead now. It is possible. There are no 3 free points. Everybody gets 0. Yeah, that's what I think. I thought 3 points देंगे, but 0 actually. You're right. Content चाहिए E4, E5. नहीं भाई, ऐसा content नहीं चाहिए. Rating नहीं देनी भाई. You said Vishy wins yesterday. You will eat jalebi. Yeah, but I want him to win in classical, yeah, not Armageddon. मैंने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में चेस इंजन बनाया. अरे that's so cool भाई, congratulations. देखो भाई, आपको मौका मिला तो ओलंपियाड खेलोगे क्या? Of course, dude. But I think it's like, you don't want to play the Olympiad when you're not prepared. So you would like to know many months prior, but you can never play the Olympiad for India, man, because 2650 रेटिंग चाहिए भाई. विदित 2750 नहीं है. हाँ पता है, वही तो मैं कह रहा हूँ. कोई भी नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ. विदित इज क्लोज बट नॉट देयर. दिल्ली में मीटअप करो. ओल्ड दिल्ली में खाना खाएंगे. करेंगे कभी यार. खान मार्केट में काफी खाना सही मिलता है. ब्राइटनेस लेवल इन्फिनिटी ज्यादा है क्या भाई? इतना चमक रहा हूँ क्या मैं? इतना बड़ा स्टार हो गया क्या? रुको यार, पहले तो मैं सेंट्रलाइज करूँ. मैं सेंटर में क्यों नहीं हूँ यार? आई हेट जब मैं सेंटर में नहीं होता कैमरा में. इट जस्ट क्रिएट्स दिस वियर्ड लुक. हाँ, नाउ इट्स फाइन भाई. ब्राइटनेस कम कर सकते हैं. रुको भाई. Yeah, now it looks better. Now it not looks better. ये रोशनी कहाँ से आ गई भाई? रोशनी को हटाएं. भगवान नहीं, भगवान. रोशनी नहीं हटा सकते हम लोग. What's the lineup for US team? Dude, I just mentioned it, man. It's annihilation. US टीम को निकाल नहीं सकते क्या? I mean, कर सकते हो यार. वेस्ली स्लो का स्ट्रीमिंग करियर स्टार्ट कर दो. मोटिवेट हिम टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग, ताकि सब यूएस टीम में स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दो. निकालो की तरह बड़े बड़े स्ट्रीमर बन जाए. एंड देन दे विल बी नॉट इंटरेस्टेड. 24.3 की ओपी. अरे हाँ, थैंक्स फॉर चैट यार. व्हाट्स द लाइनअप फॉर यूएस टीम? इट्स गोइंग टू बी यार अरोनियन, कारुआना, वेस्ली सो, डोमिंगेस एंड शांकलैंड. And chat, I don't know why they're not starting the game. It's already been enough time. Don't give visa to US team. अरे that's a good strategy यार. US team को वीजा मना कर दो and अपना गोल्ड कंफर्म कर लो. हाँ भाई, अगर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑन दिस तो कर सकते हैं वो लोग. That's possible. But they will get roasted for it. I'm an engineer, Ghost भाई. I'm an engineer, Mr. Ghost. Dominguez, Cuba दो. What's for the Indian? मतलब
फरीदाबाद में कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 45 यार. Indian lineup for team is Vidit, Harikrishna, Arjun, Sasikiran and SL Narayanan. Team B is Gukesh, Prag, Raunak, Nihal and Adiban. We should have been a great opponent for Karuna, for sure, man. How does Vishwanathan and Samir, what does Vishwanathan and Samir have in common? I don't know. I guess they're most popular in chess. Who are all there in candidates? Hi. Candidates में भाई कोई इंडियन नहीं है यार. Candidates में भाई there is Rajabov, there is Nepo, there is Caruana, there is Firuzcha, there is Duda, there is और कौन है यार? और कौन है रे? और कौन है रे? और कौन है यार? Who else is there? Ding, हाँ Ding. अरे thanks for subscribe यार. Ding Naka, yes, Ding Naka. Thanks a lot, yaar. Thanks for subscribe, bhai. Thanks for streaming. Impressed by your love for chess. Is chess becoming more of a memory game than a strategic game with preparation getting to the memory game? I think Fisher mentioned this in 20 years back. That is actually true. Rapport, yes, thanks chat for that. That is actually becoming true to many extent because you have to remember so much theory nowadays, and if you don't remember, you can be the best player on the planet, but you'll get destroyed over the board because of prep. So it is kind of sad. But that's true for most professions. Like if you want to become a strong engineer, you need to learn the concepts people before you know. If you want to become a strong theoretician, like astrophysicist, you need to understand all the concepts there are from before. So it's kind of true for all professions. So I kind of understand it. So, but yeah, it's kind of sad, of course. Thanks for super chat, bhai. Thanks a lot, yaar. Game has started, chat, and we have Vantika playing the structure. Chat, who is supporting Vantika or Raunak? Kisko support kar rahe yaar? Who are we supporting, chat? Vantika or Raunak? Let's go to Arjun's game. Arey bhai! Look what's on the board! भाई बोर्ड पे देखो क्या आ गया भाई देखो London system on the board, dude, and it is here indeed. Knight to h5, bishop e5, e6, bishop b5, bishop e7, and now chat, you will not believe it, but dc5 is almost winning for white already on move number 7. That's awesome. Do get my London system course, chat. वहां जाके check करो भाई, please. It's a great course. Oh, he plays g4, भाई साहब. किसी ने आंसर कर दिया 24/3 से कम हो गया. कोई बात नहीं, वो बढ़ जाएगा वापस. एक ही सब कम है. हाँ, किसी ने आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? पता नहीं यार. Do you remember flying mammals? No, bhai. Isn't chess becoming more orthodox? Orthodox, I'm not really sure. In fact, Carlson is trying to make it unorthodox. I'm supporting Aradhya on this because of London. Arey, yaar, come on. You have to win this, Arjun bhai. You have to win this at all cost. You have to win this at all cost, man. Absolutely important. Guys, when was the last time an Indian player in the candidates Vishy Anand के बाद कोई खेला है क्या? No Indian has played the candidate apart from Vishy Anand, so I hope there's somebody very soon. Knight to e4 feels like a loose move a little bit because g7 is hanging now. Is g4 in your course? Not in this exact move order because I prefer the move order with knight to d2 like or c3, not the knight f3 move order. That's why it's not this exact position is not there. You get 200 subs today. Really? I'm not sure. Which was the tournament where Arjun won 9 games in a row? I don't think there's any such tournament. Class in India tha kya? What's the criteria to qualify for candidates? Dude, there are many criteria. World Cup hai. बहुत सारी चीजें, I think. But it's you have to be at least rated 2700. I would say. At least 2700. Gukesh is not making moves because he's withdrawn from the tournament because of internal issues. Prakash bhai, he's not playing tournament anymore. And for now, I think bishop e5 was the best move. Arjun tries to save his extra pawn for longer. But this is not the best move because the bishop is trapped on h6. It has no way back home anymore. And Home Alone movie ki yaad aa gayi mujhe. And black probably has some compensation here for the pawn. Actually, it was
24k, but now it's 24.2k. Yeah, but that was before yesterday I started the stream. I think it was 24k yesterday before the stream. तो आप क्यों नहीं कर लेते क्वालिफाई? लंदन में तो पेल दोगे सबको. लंदन आएगा नहीं ना बोर्ड पे हर गेम में यार. और पेलना मुश्किल है. ड्रॉ करना आसान है, पेलना मुश्किल है. Any trap by black here? I think there's no trap as such, but I think he just quickly develop here, castle queen side, and then try to win this pawn back, and maybe he'll be fine, yeah. Lowest seed in candidates, I'm not sure who's the lowest seed. Probably Duda. I'm not sure about this though. इंडिया की सेकंड वुमेन्स टीम में कोई जीएम क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया वुमेन प्लेयर्स में जीएम नहीं है. वुमेन्स टीम में जीएम कम होते हैं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वुमेन प्लेयर्स आर लेस, सो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ जीएम्स यू कैन हैव इज लेस ऑटोमेटिकली. फिडे भाई फिडे, आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू थिंक while commentary. You can think of better moves than playing yourself. I'm more focused when you're playing, yeah. Commentary you can be relaxed. स्टैंडिंग बताओ भाई. स्टैंडिंग ये देखो भाई, ये है स्टैंडिंग. फिलहाल रौनक एंड निहाल आर इन लीड चैट. दीज टू प्लेयर्स आर इन लीड and they are both fighting for a win like crazy. So let's see what happens in these games. For now we go to the exact position. Let's go to the game of Raunak against Vantika. Raunak is black, so Vantika again having a slightly better position in the middle game because the knight on AC is a bit stupid. It has no potential for now. Even on C7 it's not doing much. It has no squares. So I think Vantika is slightly better, but she's not been able to convert these games. That's the main issue. So I hope she can put some pressure on Raunak at least. She's also low on the clock. That's one tradition because if you're a lower rated player, you want to think for longer to try to play the best moves, and then you lose on time. So she has to take care of her clock here. Let's go to the game of Aradhya against Arjun again. Yeah, it's not so bad. But if black manages to take on G5, I think black will be absolutely equal. So I think he will not have any edge. Maybe black can be better also, yeah, sometimes. Are you working engineering right or not right now? 28 ही वुमेन जीएम है वर्ल्ड में. सैड ट्रूथ. एग्जैक्टली. इतने इससे ज्यादा तो मेल जीएम्स इंडिया में ही है भाई. Knight backwards. Usually knight backwards is not a good move, chat. And now Arjun should quickly take on c6, and just take on c5. The c5 pawn is hanging, and that is a great move for now. Usually you don't capture away from the center, but here after he takes. Oh, sorry. Let me fetch this. Yeah. So once you take here, bishop takes, pawn takes. Here the knight cannot come up. If you come up, I'll take the knight. So knight has to go to f5 now. And now I can play knight to b3, defend this pawn. And this pawn is not easy to capture back. White holds on to this. So let's see what Arjun will play here. I think किसी को भी 3 पॉइंट, सबको 0 पॉइंट मिलेंगे, सबको 3 मिलेंगे regardless. So फिलहाल के लिए I think they will add 3 points, but I think they will adjust the rankings later on. यो लक्ष्य भाई ठीक है यार, चलेगा. What happened Gukesh भाई? इंटरनेट चला गया यार, ऐसा हमें ऑफिशियली बताया जा रहा है, but maybe his girlfriend called, who knows. Hey Saim bhai, how are you? By the way, 95 played now. Let's take this man. Let's take it immediately. And now DC5 played, and now black structure is just horrible. Look at these 4 pawns. They are so bad. So bad. Knight b3 played a good move. Now c3 and knight d4, and white is clearly better, chat. He's clearly better. If I was white here, I'd be dancing in my seat because I think black structure is just horrible. White will castle queenside, of course. He will not castle kingside. That looks very dangerous. Gukesh is 16. You can't make girlfriend jokes on her. Why 16 में लोग लड़कियां पटा लेते हैं आजकल यार. Have you eaten आलू की टिक्की? Yes, bhai. Isn't Gukesh under 18? उसकी भी girlfriend, भाई girlfriend हो सकती है यार. What was your girlfriend reaction after hearing about Aarti Tikku? Aarti Tikku does not exist in my life, bhai. Let me clarify that. That's very obvious. I am not married, so over. Make 10 channels with 100k subs each, then 1 channel with 1 million. The former is easy. I don't think so. I think making 1 channel 1 million is much more easier. What if 2600 rated player wins World Cup? Will they qualify for candidates? Yes, they will. But it's very unlikely for a 2600 rated player to win the World Cup because the 2600 players are much stronger. Yeah, feeling sad for Gukesh, man. That's true. Aarti Tikku is a fictional character, guys. Indeed, she is fictional, chat. Hence proved. Khatam. And now f5 is also hanging. Bhai sahab.
अर्जुन तो खा गया रे. Now Queenside Castles, and this should be over soon, chat. Chat, let's get to 500 likes. भाई जल्दी से like कर दो भाई. And if you have for the first time, subscribe. What happened to Ukesh? भाई Ukesh has some intentions. Print message में देख लो यार. What was their first income? I think Infers की थी first income तो many years back. H4, good move, defending the weakness on G5. Now black cannot take this pawn, so makes a lot of sense. And black is also stuck. He used to castle queenside. He castles, white castles. But it's very clear, white has 3 pawns here, black has only 2. So even white's king is safer. And also his knight is like such a dominant piece on D4, man. Such a strong piece. What a piece. What a piece. By the way, Rook H3 played, and the idea is Rook to F3 to simply take this pawn for free. And this looks like it's going to turn out to be really bad for Adegar. कितने राउंड्स बाकी हैं? आई थिंक 1.5 राउंड बाकी है आज के दिन में. आज पिज्जा तो 500 लाइक पर. अरे वाह भाई वाह. 500 इतने लाइक्स इतने रुपए खर्च कर दे. वाह भाई नाइस. let's go to Vantika's game. Okay, so Vantika still equal, not bad at all. Although I think she probably did not want her pawn to be on D5 because that gives black D6 pawn full liberty. Now it's perfectly safe. That pawn can also be weak. Although after knight takes, oh, she took with the pawn. Interesting choice. I would have taken with the knight to open my bishop up. Now this pawn is under huge pressure, and it's not easy to defend. Yeah, we have to move the knight now somewhere to bishop with the bishop. Defend with the bishop. Ukesh is not playing because Suraj bhai apparently कुछ internet का issue है उसका, and he could not join the tournament. Vishy is playing. Wesley So भाई. Hi Ram Wesley So. अब तो हार जा रे. Give me pizza on 500 likes is equivalent to buying those 500 likes. Exactly. क्या YouTube चैट में कमेंट्स होते हैं? होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं. रैपोर्ट भी है कैंडिडेट्स में. इंडीड भाई, रैपोर्ट अब रोमानिया के लिए खेल रहा है यार. बंदे ने टीम ही बदल दी. बंदे को कैंडिडेट्स पहुंचा, उसने टीम ही बदल दी भाई. लेट्स गो टू द गेम ऑफ Arigesi Arjun again, man. I want to look at this game. This game looks fun. White or black for Vishy? I think it's black for Vishy, so he will have to play very carefully. Ayun is a dark horse indeed. Although Chidaman also as well, yeah. क्या हाल भाई? बढ़िया यार. तुम बताओ अभिजीत भाई. आज वेस्ली हारेगा. आज सॉलिड खेलेगा क्या? आई थिंक वेस्ली विल बेसिकली प्ले अ गेम जहां पे ही इज नॉट ट्राइंग टू फोर्सफुली विन, ऑल्दो ही नोज कि इफ ही समहाउ विंस टुडे ही गेन्स सो लीड. सो ही विल प्ले अ गेम जहां पे ही इज अ स्लाइट एज एंड ही विल ट्राई टू पुश इन दैट स्लाइट एज. आई थिंक दैट्स व्हाट ही विल डू. India has 60 GMs and they are all alive. That's true, man. At some point that will not be true. That's kind of weird. भाई ड्रॉ ही हो जाए. भाई ड्रॉ भी चलेगा. हाँ ट्रू, बात तो सही है. ड्रॉ में 1 point is guaranteed. Hungary team is stronger than Romania. Yeah, but the thing is now it will change, right? Because Rapport is coming to Romania. आज कितने घंटे? आज ही पूरा 12:30 तक चैट. 12:30 बजे तक स्ट्रीम है. ये स्ट्रीम चलेगी 7:30 तक. फिर 7:30 से 8 तक मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, आधा घंटा. फिर 8 से 8:45 तक ताना और शिनक का स्ट्रीम. एंड देन 9:45 से लेके 12:30 तक अपनी स्ट्रीम. I will try to start at 8:30 today. I'll try to start earlier. I'll try to get out the Tana stream earlier if possible. Yesterday was also Vishy black, today also. No, yesterday Vishy was white, yeah. Have you tried hot chocolate? Yes, I have. It's really good. मजा आता है. Let's go. What's the issue, dude? Vidit or Nihal? Depends, यार. Online chess, Blitz, Bullet, Nihal. OTB chess या classical या long rapid, probably with it. देख लिया भाई, चेंज नहीं देख लिया. चैट, जितने लोग चैट में सब लोग हाई लिख दो भाई. कम ऑन. आई नो भाई लंच के बाद का टाइम है भाई, नींद आ रही है. कम ऑन चैट, जल्दी से हाई बोलो चैट में. जल्दी से भाई सबसे हाई लिख दो. लेट्स गो. Other disappointed in this round. Yeah, but ठीक है यार, he is the weakest player in this game, man. In this entire tournament, he is the lowest seed. क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? बढ़िया खेल रहा है यार वो. He's not playing so badly, to be honest. Vishy or Magnus? I would say Vishy. What's up with Gukesh? His internet connection is not something that's up.
Wesley told about the Olympic team. Yeah, we saw it. There's a tweet about the USS Federation also. So they have tweeted it out indeed. इतने लोग हाय लिख रहे हैं भाई, बढ़िया. भूल गए लगता है कुछ भी. अभिजीत सर गेम, अभिजीत सर की गेम देखते हैं यार. रुको. अभिजीत सर कहाँ है? I can't find his game. What? हाँ, here is his game. ओ भाई बहुत complicated है. And he's worse again against Luke as well. क्या सेंटर है भाई वाइट के पास. भाई क्या सेंटर है वाइट के, देख रहे हो तुम? पॉन्चेन देख रहे हो? क्रेजी भाई. Let's go to the game of Chidambaram. Chidambaram better against Guha, so he'll still try to come back in this tournament. Let's go, because I think there's a lot of pressure on a6, and white has more space as well, and there are double pawns as well. Let's go to the game of Vantika against Raunak. Vantika still trying to equalize here. I think she's fine, but it does feel like black is slowly trying to, you know, put some pressure here. That going to e4 and queen to f7 again to put some pressure here. So definitely Raunak trying to push, and now we have, you know, Arjun against Aradhya Garg, and Arjun is completely winning because black has a very bad bishop. The only thing is, how does this bishop come into the game? Once this bishop comes into the game is over. So इसके लिए ये रुक रिलेट पे रखना पड़ेगा. यो अनीश नायक जी, यो अक्षत भाई, आज अनीश नायक और मैं भाई एक कॉल पे थे साथ में. Something I thought will not happen for a long while, but आज अनीश नायक और मैं एक ही कॉल पे थे भाई. There's no way US is not winning the Olympiad. Caruana, Levon, Wesley, Dominguez, Shankland. Yeah, that's true, man. That's true. I have to agree. It's very difficult, but it's not guaranteed. It's not guaranteed, भाई. इतना ही बस भाई, इतना ही बस. आज एक ही कॉल पे थे हम, बस यही बोलना है भाई बस. SL versus and Setu versus Nihal and Gukesh. ये क्या है भाई? कोई टैग टीम चैंपियन चल रही है क्या? Why India is good at chess? What's your analytical view? I think India is a good at things where जहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है in general, and Vichy kind of inspired an entire generation of players, and that's why they are so strong. 2753 average भाई और ज़्यादा होगी भाई. Shankland को हटाओ because Shankland will not play. टॉप 4 की काउंट करो भाई, टॉप 4 की काउंट करो, फिर देखो कितनी एवरेज बनती है. कोई बात नहीं भाई, तीखा ज़्यादा डाल देंगे. ये क्या है भाई? आज भी वो टफ फाइट मिलेगी. निहाल और अर्जुन, आई विल हैव टू से फॉर नाउ अर्जुन मैन, ही इज द वन इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ OTB chess at least. But Nihal playing well in online chess, so it's kind of a trade-off. आप मैरिड तो नहीं हो, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड ने कैसे विश्वास किया? What? टिक्कू भाई टिक्की भाई, चैट के अपने मजे हैं भाई. टिक्कू भाई टिक्की कौन है? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? आज विशी सर को टफ फाइट मिलेगी. आई नो मैन. खाने में तीखा भाई, खाना ही नहीं मिल रहा है. कुछ ऑर्डर करें चैट? क्या ऑर्डर करें यार? चैट तुम बताओ क्या ऑर्डर करें? भूख लग रही है यार, कुछ और करने का मन तो कर रहा है. हाँ वही करें, मैकडी का वो पिज्ज़ा भाई, क्रेजी वाला, वो जो मैक स्पाइसी पनीर. मन तो बहुत कर रहा है ऑर्डर करने का यार. आई हैव टू से बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का. नॉट, आई डोंट वांट टू ईट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट अब खुद तो बना नहीं सकता भाई. शेफ और स्ट्रीमिंग इज नॉट सपोज टू वर्क टुगेदर अनलेस यू आर कुकिंग स्ट्रीमर. आई डोंट नो व्हाटएवर. स्विगी ओपी भाई, लेट्स गो स्विगी. गार्लिक ब्रेड फ्रॉम डोमिनोज. गार्लिक ब्रेड यार, हाँ इट्स अ गुड सजेशन एक्चुअली, नॉट सो बैड, बट खाली गार्लिक डिलीवर नहीं करते वो. ऑर्डर पाव भाजी नहीं, पाव भाजी का टाइम नहीं. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ स्नैक काइंड ऑफ टाइम यार. बंदी को बोलो बनाने के लिए, बंदी नहीं है घर पे यार. बंदी है भी कि नहीं पता नहीं. मैकडॉनल्ड्स का बाहर का थोड़ी है, वो तो अपना ही है. ये क्या मतलब है भाई? आई वाज सपोर्टिंग क्राउड फंडिंग कैंपेन फॉर Arjun's chess a few years ago. Glad he's doing well. That's great, Tushar bhai. Yeah, he's doing really well. Although nowadays, you know, like, you know, Nihal and Prag have taken over the popularity contest, but Arvind has always been there. He's always been a strong player. केले दूध पी लो. अरे यार, अगर यूएस को हराना है तो निखिल कामत को ओलंपियाड खिला देंगे. हाँ, अगर अपने नाम और देश की बेइज्जती कराएंगे तो दैट वुड बी अ गुड सजेशन. पोको पैंट्स, व्हाट इज पोको पैंट भाई? वो मैंने कहीं पैंट्स वो है ना कुछ. आप वेज हो? नॉट रियली, बट आई मोस्टली हैव वेज फूड. आई थिंक इट्स नॉट लाइक अ टॉप थिंग ऑन माई माइंड. दूध रोटी खाओ. व्हाट? दूध रोटी क्या है भाई? अनीश नायक भाई, व्हाई आर यू अप टू आफ्टर नागिन डांस, स्विमिंग डांस? भाई अनीश नायक जी आजकल कॉल्स पे जा रहे हैं भाई. ही इज ऑन इंपॉर्टेंट कॉल्स विद इंपॉर्टेंट पीपल. कहाँ? हाँ कामत गैमेट. ये क्या था भाई? साहिल भाई नॉन वेज है बिल्कुल भाई, ऑलवेज. श्री कृष्णा कितने खुश है ना. ही इज लाइक केला खाओ. इनको लग रहा है कितना फनी जो क्रैक कर लिया उन्होंने. लाइक ऑडियंस पूरा मतलब क्रेजी हो जाएगी भाई. लाइक ऑडियंस फूल बरसाएगी श्री कृष्णा के लिए भाई. इतना क्रेजी जॉक मारा भाई उन्होंने.
स्टॉक से फिश मंगाओ, वाह. By the way, black is still trying to hold on, but I mean now bishop g7, yeah, let's go. Finally bishop can come into the game. Let's go भाई. कोई अच्छी टीम है इंडिया एंड यूएस के अलावा? आई थिंक अजरबैजान स्ट्रांग है, पोलैंड स्ट्रांग है, तो दीज टू टीम्स आर स्ट्रांग. और भी होंगे एक दो, बट आई थिंक इंडिया शुड बी स्ट्रांगर ओवरऑल. बिकॉज उन टीम्स में एक या दो प्लेयर बहुत स्ट्रांग है एंड बाकी की टीम्स में लोअर बोर्ड्स वीक है. सो हमारी टीम काफी स्ट्रांग है ओवरऑल. डोमिनोज जिंदगी पार्सल भाई. डोमिनोज ना, इफ यू चेक इट, इफ यू हैड माय एड्रेस, डोमिनोज मेरे घर से 50 मीटर पर डिलीवर करता है, लेकिन मेरे घर पर डिलीवर नहीं करता. सो मैं वो 50 मीटर दूर वाली लोकेशन डालता हूं जब मुझे पिज्जा मंगाना होता है. तो इट्स लाइक, मतलब दैट्स लेम. डोमिनोज कुछ करो यार फिक्स. रशिया नहीं खेल रही, चाइना भी नहीं खेल रही यार. चाइना मोस्ट लाइकली नहीं खेल रही. रशिया फॉर श्योर इज नॉट प्लेइंग, चाइना मोस्ट लाइकली इज नॉट प्लेइंग. सर भाई स्टॉकफिश के नाम स्टॉकफिश रखना चाहिए क्या? नहीं यार. जैसे रैपोर्ट हंगरी की जगह जुबैन से खेलेगा, क्या अनीश भी नीदरलैंड्स की जगह अब इंडिया से खेल सकता है? ही कुड, अगर उसको स्पॉन्सरशिप करोड़ों की मिल जाए, who knows. How much time do you give to your own chess? Not much in the last few days, dude. I mean, I streamed for 9 hours yesterday, so I doubt I had time to give to my own chess. भाई सेम भाई, मेरे घर से भी 50 मीटर पे आता है. एग्जैक्टली. बाय द वे हृदय गंग ने ना थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैटर्स. नाउ देयर आर ऑपोजिट कलर बिशप्स एंड द किंग इज सेफ ऑन 8. लाइक ही समहाउ पुश्ड हिज पॉन्स एंड ही हैज गेन्ड सम काउंटर प्ले नाउ, लाइक क्वीन a7 एंड थ्रेटनिंग क्वीन a3. सो मे बी हृदय हैज नॉट लॉस्ट नाउ. इतना पैसा है भाई यूएस के पास, सब चेस प्लेयर उधर जाते हैं. एग्जैक्टली. सेम मेरे घर पे भी 50 मीटर डोमिनोज, इसलिए शिफ्टिंग अप. शिफ्टिंग अप. आई मीन अरे रन किशन भाई, थैंक्स फॉर सुपर यार 201. थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट. अरे मतलब तुम वो छोड़ो भाई, यूएस का एड रेवेन्यू फॉर एग्जांपल, इंडिया में फॉर 4000 व्यूज यू गेट 100 रुपीज, राइट? दैट्स द एड रेवेन्यू. इन यूएस फॉर 4000 व्यूज you would probably get like at least 500 rupees or even 1000 in some cases. Like that's how much it changes. यार मतलब यूएस का अलग ही है भाई. मेरे घर पर डोमिनोज आता ही नहीं. अच्छी बात है भाई, अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं है भाई. गुलाब जामुन के पकोड़े खाओ, वाह वाह. गुलाब जामुन के पकोड़े भाई, मतलब पेट खराब करने की पूरी स्ट्रेटेजी. It's for your hilarious reactions that the child enjoys asking you weird questions including me. भाई पिकाचू मिलाए कह रहा है साई कृष्णा. भाई वो आप ही हो. चैट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ नॉलेज, इफ यू फाइंड ओनली वन पिकाचू इन चैट, इट्स यूजुअली यू. सो थोड़ा ध्यान रखे भाई. एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ज्यादा है यूएस में, इसलिए पेपर भी ज्यादा है. एग्जैक्टली. यूट्यूब इज इंडियन. नहीं भाई, गुकेश का भाई प्रिंट मैसेज पढ़े. कार्लसन को पैसे नहीं देता कोई अपने लिए खेलने के लिए. भाई कार्लसन को भूख पैसा है भाई, कुछ टेस्ट नहीं उसको. दिमाग का हो बकरे का. व्हाट द हेल इज दैट? चैट लेट्स गेट टू 500 लाइक्स भाई, जल्दी से. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. 5 लाइक कर दो भाई. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब गाइस, लेट्स गो. भाई कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले बंदी पटाने के कम फोकस और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस भाई. 5 रुपए की पेप्सी भाई, कल तो 60 रुपए की थी भाई. Can someone tell what happened to Gukesh? Why he is withdrawn from the tournament because of internet issues? Do you think chess will get solved one day? I don't think so. अगर solve हुई तो draw ही होगी यार. Chat क्या मंगाऊं मैं यार? What should I order man? स्विगी से कुछ ऑर्डर करने का मन कर रहा है. एंड मेरा पहला रेस्टोरेंट जो सामने आया डोमिनोज आया. डोनर से मंगा सकते हैं यार. मतलब मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है. मीठा खाने की ना हैबिट हो जाती है. Once you start eating sweet, you get accustomed to it. So I think I will not order a sweet something. I'll order like, I think वही मैक्स स्पाइसी पनीर ऑर्डर करता हूँ. That's the best man. That's the best. Yum 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 yum. चेकआउट, चलो चेकआउट करते हैं. समोसा चाट. समोसा उस दिन खाया था यार, कुछ दिन पहले. आई थिंक मैंने 1-2 हफ्ते पहले खाया था. आज तो चेंज. अरे बॉट आ गए, स्ट्रीम पूरी लैग कर रही है. नहीं भाई, पोल डाल दो. स्टार हिटिंग स्वीट एंड बॉट गेम. अच्छा बॉट आया था क्या सच में? ओह माय गॉड, अच्छा सच में आया था. By the way, let's go to the game of Raunak here. Raunak is starting to push, man. I don't like Vantika's pawn structure. The rook on a3 also looks a bit weird. The d5 pawn is weak. Very good knight on e5, so Raunak pushing. Let's go to the game of
चिदम्बरम नाउ, ओ लो भाई चिदम्बरम तो जीत रहा है यार, खत्म गेम. The king on e8 looks very weak. This pawn weak, this pawn weak, this square weak, this pin dangerous. Let's go to Arjun game again. Chicken noodles, lasagna. I've never had lasagna, by the way. According to Nash, every 2-player game with financial strategies has a Nash. So chess, if solved, will be 90% we draw. Okay. Might consider ordering a healthy protein salad. भाई यार, I mean अगर बाहर से order कर रहे हैं, तो who orders a protein salad, dude? Like, I mean, if I have to eat salad, I'll make it at home. Like, I don't understand logic by ordering a salad. I mean, yeah, if you're a fitness model, makes sense. Nachos खाओ. 4,100 रुपये का मतलब तो 4 मिलियन पे 1 लाख हो गया. Yeah, but that means कि वो, हाँ, 4 मिलियन पे 1 लाख हुआ ना? हाँ. नहीं. कितना हुआ? मैथ्स करेगा कोई? भाई ये अरविंद चिदम्बरम जबरदस्त फॉर्म में है. ट्रू भाई, ट्रू इंडीड. कोई कैलकुलेशन कर लो यार, 4 मिलियन पे कितना हुआ यार? 4,000 का 100 कितना हुआ? 1,000 10 का फैक्टर और 40 डिवाइड करना है. हाँ भाई, नहीं 40 लाख, हाँ लाख हो गया भाई. मेरी मैथ्स इतनी बेकार हो गई क्या? आई हैव बीटन अर्जुन 3 टाइम्स. भाई हॉकी से मारना ये नहीं बोलते यार. हमारा टिक्कू मॉडल से कम है क्या? या भाई मॉडल से कम है क्या बंदा? तभी तो मैं पिज्जा मंगा रहा हूँ. व्हाई इज चाइना नॉट प्लेइंग? बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस. अरे भाई ये तो हो गया भाई, खत्म. I think black had to take with the pawn apparently, but rook takes के बाद I think rook takes, pawn takes and chat. Rook takes, pawn takes. Can you find? यहाँ पे king c2 एक अच्छी मूव white के लिए. That is ridiculous. King to c2. Who would play king to c2? That is just insane. That is insane. Let's see if white plays king to c2. If he plays king c2 तो मजा आ जाएगा भाई. Russia banned है यार. I request you to not talk about food, please. I will buy. I'm ordering food, chat. I'm ordering food. Okay, कोई कूपन अप्लाई नहीं हो रहा भाई. Shit यार. No coupon, man. Crap. No coupon. Crap. रुको. कूपन के बिना स्विगी पर ऑर्डर करने की आदत नहीं है मुझे यार. आदत ही नहीं रही यार. कूपन लगना चाहिए यार. अच्छी फीलिंग आती है. Oh, he played queen to d3 and now queen to f5. And now king c2 again, the best move. Will he find king c2, chat? Will he find king c2? That's the best move in the position. Come on, king c2, let's go. पूरा की टीम में भाई डूडा है एंड वड़ाचिक है भाई. 2 very strong players. सोचो अब वाले जाने ये क्या है भाई. भाई मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो. वाह. कभी वायलेंट फाइट हुई है किसी से? Not really, man. I'm a very calm guy. He plays rook to c2. That's not the same. I think king c2 was just a brilliant move, dude. What a move, king c2. Beauty. Tikku Behan, you are my sister from another father. Okay. Gotcha. If he finds king c2, he'll be a top player. Yeah, king c2 was possible to find though, man. Because you basically have to see, can black force through f4? Can the bishop get to this diagonal? But he can't. As long as the bishop is f4, you can't play bishop f5, and that's why king c2 was very strong. The idea is to blockade this pawn. Now the rook is blocking the pawn, and that means कि मेरा rook tied down है. Black wants to give this pawn with c2. या उसको pawn देना है और queen e1 खेलना है, and that's why my entire rook is being wasted to stop a pawn. That's the issue. डूडा फिर लड़ेगा इंडियंस को भाई. वीडी बदला लेगा ना इस बार. डोंट वरी भाई, वीडी बदला लेगा भाई. वीडी बदला लेगा डूडा से. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई इस बार. डोंट वरी चैट, इस बार वीडी बदला लेगा. अच्छा खासा बदला लेगा भाई. ऐसा बदला डूडा से डूडा रो पड़ेगा भाई. डूडा विल लिटरली स्टार्ट क्राइंग. डोंट वरी. Prediction to play Olympiad. Yeah man, I'm hoping for it. Bishop ये नहीं खेलेंगे ना. We'll not play bishop e5 by the way. He plays bishop d7. He's trying to come here, I think. 18 रन से खेलेगा ना यार. भाई पांडा खाते हो क्या? व्हाट? अरे एक बार आपकी स्विगी और डिटेल्स बता देना. एक जाने ने. नहीं मैं नहीं बताऊंगा यार. आई विल नॉट लेट यू नो माय स्विगी डिटेल्स. नो चांस भाई, नो चांस. मैं कर ही नहीं ऑर्डर भाई. किंग खाओ. लो भाई. जाता ही नहीं है. मैं खाने के लिए बोर्ड से हटा रहा भाई. निकलता ही नहीं है किंग भाई. आई कांट मूव फ्रॉम द बोर्ड चैट. इट्स लॉक. चेन से बंधा हुआ. आई कांट मूव द किंग चैट. आई डोंट सी दिस, but I can't move the king from the board. It's not moving from the board, bhai. I don't know why that's the case, bhai. It's not moving from the board. I tried my best.
हिल क्यों नहीं रहा है वैसे यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. How can white build more pressure on c3? I think there is not much pressure to be built up because there is no way you can put pressure because you don't want to move the bishop. If you move the bishop, I will immediately play f4 and then bishop f5 at some point. That will be dangerous. So what you can do is maybe play rook e2 and then king c2 and then move the rook in. Say that for now. Morphy. f3, bishop g3, bishop e1 for white. Yeah, but जब तुम bishop g3 खेलोगे वो f4 खेल देगा and then the bishop will come to f5 and तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुम्हें भाई. Let's not do this. मैं सो के उठ गई, आप अभी तक स्ट्रीमिंग कर रहे हो. Hats off. गौरी जी आप रात को 12 बजे जब सोने जा रहे हो तभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. There is one spot left at the Singfield Cup. Who do you think will join? Any Indian player? Tushar, I have not seen the lineup of the Singfield Cup so far. I think it's in July, right? Or maybe August, I think. I don't know exact dates. I'll have to confirm this. Let me check what the dates are. I have it written down. Singfield Cup is in... Singfield Cup. Where is Singfield Cup? September 1 to 16. So I'm not sure if any Indian will join. Let's hope so. Let's hope so. आज भी आफ्टर पार्टी होगी. हाँ, आज भी होगी. What will be the best move for black? Honestly, I think black can only hold, man. Black is lost. There is no way he can do anything. White plays queen to f3, putting some pressure here. But black can play rook e8 and try to come to e4. Maybe that's the plan, yeah? Try to enter with the rook now. Forget about this pawn. बाहर में गया है pawn. What's the longest stream? I think consecutive stream मुझे पता नहीं है, but ओवरऑल दिन में स्ट्रीम आई थिंक कल वाली हो सकती है. 9 घंटा मैंने शायद कभी ना किया हो स्ट्रीम. You hard work a lot, keep working hard, and you'll be amongst the best Indian chess streams along with Saman Saga bhai. Thanks for Jatin for the kind words. Can I play Queen's Gambit long term? Yes, you can play Queen's Gambit long term भाई. पूरी टीवी सीरीज बन के उसके ऊपर आपका करियर तो बन ही सकता है. I guess. विदित गुजराती में बदला लेकर रहेगा भाई. साला लगाने की क्या जरूरत थी भाई, उसकी बिना बोल देते भाई. There was no point of adding Salah at the end. Rook e8, rook e1. There's no rook e1 bhai because rook is on c2. If you play rook e2, I can probably still do check. Sacrifice a pawn. Future of TV is online live streams. Yeah, it might be true, man. It might be true. Sala sasta, Sala adds emotions. By the way, rook to c6 played. Let's go rook e2 now. It's time for rook e2, man. Let's go. It's time to activate the rook and put the king on c2 and then move the rook in. And once the rook gets in, it's over. फरीदाबाद में मर्डर हुआ साहिल भाई हुआ होगा यार, मुझे नहीं पता यार. होपफुली किसी जाम का नहीं हुआ होगा. किसका मर्डर हुआ भाई फरीदाबाद में? गूगल करते हैं यार को. क्या चक्कर है यार, आजकल हो क्या रहा है मार्केट में यार. लोग मर्डर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मजाक चल रहा है. कुछ दिख तो नहीं रहा मर्डर यार मुझे फरीदाबाद में फिलहाल. तुम्हें कहाँ दिख गया यार? फॉर ब्लैक e8 e1. I mean yeah, but still how do you get to e8? Once you play this, I'll play rook e2. Use some martial things. Yeah, man. I don't know. Like people are killing others as if मतलब कोई hunting game चल रही है. It's so weird to me. What's the most enjoyable tourist spot ever you've been to? I have not traveled much as a tourist. I've traveled a lot as a chess player and I've only played tournaments. But I have to say कि I know I will enjoy Switzerland the most. I've never been to Switzerland, but I know I'll enjoy it the most. So even if I've not been there, I would say Switzerland is the craziest, man. It's so beautiful, man. So many things to do. Someday I'll go there for sure. c2 check, I'll just take with the rook, man. I just take with the rook back. And if queen e1 check, I have bishop c1 back. So I save my king that way. I know at least enjoyable is country with S. Yes, least and most enjoyable both with S. Las Vegas is very enjoyable. That's true, man. But it's not because of the location. I mean, it's not because of the location. Yeah, it's because of the people. Yeah, people there go with a crazy mindset. Not because of the location. अमीर टिक्कू नहीं हूँ भाई मैं. अगर अमीर होता तो मैं भी स्विट्जरलैंड में बैठा होता ना यार. योगेश के ओपोनेंट्स को कितने पॉइंट्स मिलेंगे और आई थिंक हर किसी को 0 मिलेगा हर मेक भाई. You will enjoy Switzerland will enjoy you. I think it will enjoy me usually. Okay, that makes no sense. What's your rating? My fit rating is 2201 भाई. Drawn? नहीं draw नहीं है भाई. Draw नहीं है यार. I don't think this is a draw. At least I hope not. I hope not भाई. I hope not. Okay, all looks chill.
Chat, to be honest, so far we have seen Arjun come back, we have seen Nihal play well, we have seen Raunak play well. One briefly Raunak's game. Who do you think is the favorite so far? Abhi tak kya lag raha hai, chat? Raunak is also winning his game. He's going to win this game and take the lead again. So who do you think is your favorite so far, chat? क्या लगता है? अब तक के लिए तुम्हारा favorite कौन सा player है? बताओ chat. Who's your favorite? So let's go back to Arjun game now. क्या चल रहा है भाई? Nihal, Raunak, Nihal, Sahil Adani, OP, Nihal, nice. So Nihal के बहुत fan है भाई. I have to agree with you. Nihal does look like one of the favorites. Chat, he does look like one of the favorites. Gukesh is my favorite. Gukesh is also, but Gukesh is less tournament bhai. He has little tournament, so Gukesh cannot win this. Unfortunately, he's at the bottom of the table now. Don't call us chats. You can call us friends. I don't know, man. Friend sounds. It sounds a bit weird. I don't know why. Ek banda, I think it's because one guy in the chat kept said friends with that heart emoji. I don't know if it was a guy or a bot. That's why it's become cringe for me. This friends wala ye cheese. I think chat is very cool. Chat is very cool. Friends sounds so informal and prox. Yeah, but it's no, don't say friends. Exactly. Have you been to any trek? I am not the adventurous guy. I am not that adventurous. I have not been to many treks, but I would love to go somewhere. Basically, क्या है मेरे ना सारे shoes dancing shoes है यार, because I love to dance. So they are not meant for trekking. And whenever I go, I do some stupid stuff. I fall down somewhere, and then I think कि भाई let's not go to another trek anymore. पुष्पा बस ये सब झुकेगी नहीं बोल सकता था. पुष्पा, you're saying this because you have no friends. अरे यार ये क्या है भाई लाइफ क्राइसिस मत लाओ यार मेरा. चेस प्लेयर हो, इससे ज़्यादा क्या एडवेंचर करोगे, ऊपर से स्ट्रीमर हो यार. सही है यार. डांसिंग मतलब विच आर वेरी लो फ्रिक्शन यार, बिकॉज आई लाइक टू मून वॉक राइट. सो फ्रिक्शन कम होगा तो अच्छा मून वॉक होता है. दैट्स व्हाई आई कॉल देम डांसिंग शूज विद लो फ्रिक्शन. सो व्हेन यू गो ऑन अ ट्रैक यू नीड दैट फ्रिक्शन यार टू होल्ड ऑन टू समथिंग. डांस वीडियो इनकमिंग. भाई डांस वीडियो ऑलरेडी थी भाई. जो सेकंड चैनल से डांस वीडियो मैंने हटा दी. फिर मैं तो कह रहा हूँ एक थर्ड चैनल खोल के ना अपनी सारी डांस वीडियोस पे डाल देता हूँ. क्या बोलते हो चैट? मजे में. व्हाट्सएप पे कॉपीराइट क्लेम लगेगा, बट ठीक है भाई डाल देते हैं मजे में. क्या फर्क क्या जाता है. कॉल अस ब्रोज. ओ माय गॉड. आई थिंक चैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड भाई. चैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड. साहिल हैज मोर वाचिंग देन तानिया. नाइस. मैंने जैसे कल समझाया था यार, व्हेन यू पुट ऑन अ सूट द वाचिंग गोज डाउन. सो डोंट वरी भाई. इट्स ऑब्वियसली हमेशा कम वाचिंग होती है. मूनॉक भी डाली है. अर्जुन कशिंग 3 पॉइंट्स अगेन 12 now. यार अर्जुन विनिंग 3 in a row मैन. 3 in a row. ठीक है भाई. तो मैं एक और चैनल डाल देता हूँ अपना. उसमें चैनल्स की लिस्ट में चेक कर लेना भाई आज रात तक. उसमें सब्सक्राइब कर लेना. आई विल पुट आउट अ कपल ऑफ डांस वीडियोस. जो पुरानी है बाद में नहीं बना दूंगा. आई डोंट हैव फ्रेंड्स. ए हाई फाइव लोन भाई. इज इट रेटेड टूर्नामेंट? यस, ऑलवेज रेटेड भाई. $100,000 एट स्टेक. साहिल डांस नहीं भाई. साहिल चैनल नाम दूंगा. साहिल कॉमेडी डांस असिस्ट. भाई सन वॉक इन्वेंट करो भाई. सन वॉक में गर्मी लगेगी यार. इट्स टू हॉट. By the way, Bishop C1, yeah, very risky move because now F4 can happen. Not sure if he should allow F4. Not so sure. You hardly look like a dancer. Rohan bhai, yeah, but that's because I've gained a lot of weight since the pandemic and since I've started playing chess. I was super fit during my college and Infosys days. I want to get back there, but as long as I have 9 hours of streaming, it's difficult. Tikku Nitya Pradarshan, nice. Chat, by the way, F4 played, so he blocks the F5 pawn, and now this will happen. Arjun crushing, man. Let's go to the. By the way, Raunak has one chat. Raunak has one. So Vantika has resigned. Raunak goes to top of the time. Oh, 17/21. Raunak क्या पेल रहा है भाई. Let's go to Chidambaram. Oh, क्या pieces है भाई Chidambaram के. What crazy pieces, dude. What crazy pieces. So Chidambaram will also win. Let's go to the game of Leon against Abhijit. Abhijit completely lost. किसने बोला Abhijit जीत रहा है भाई? Abhijit is losing to Leon. Abhijit losing once more. Not a good tournament for Abhijit Gupta, man. I really feel for him. He played so well in Sharjah Masters and he's getting destroyed here for no reason. For some reason, I guess. And now we go to the Arjun game again.
Infosys hires many people from other branches and they give them a chance to change fields, but they also pay them very low. So, and the job at Infosys sucks. Back from shoot now, time for gym in 30 minutes. I thought I'll see your stream till then. Nice, yeah. Can you do Jupiter walk? Even a Mars will suffice. Nice. Nihal was playing against Gukesh, so Gukesh is withdrawn, so that's why it was a walkover. Yo, Manglish bhai. Human walk. Nihal has been Nihal ka walkover ho gaya. And the only question is, how do you finish him off? I guess Bishop E1, Rook E1, Rook E3 should do it. That's good enough, right? You pick up this pawn and black resigns, right? I mean, that's over. You pick up this pawn and you maybe don't even exchange queens. You will have a pass pawn here. Yeah. Rook E3, let's go. आगे बॉट्स कहाँ है बॉट्स? अरे यार ये बॉट्स की क्या इशू है यार? AI safe replaced secretary today. Replaced? I think temporary pause पे था ना? It was not replaced, right? I don't think so. It was replaced. I don't know exactly why. Maybe temporary replace किया होगा. It is possible temporary replace किया हो. That is possible. I don't see any news on this. Maybe I am wrong here, but anyways, cool, chill. Check website. अच्छा website पे क्या? Oh. Why Arjun is not there in the table? Arjun is not in the table. रुको भाई table पे आते हैं इसको Arjun को. पधारो Arjun भाई. आगे table पर Arjun भाई. Hello. Rook E2 must be a blunder. But why? I mean, just Rook E. Let's Bishop E1 and Rook E3. No, he's winning the pawn on the spot, and that should be over. I feel it should be over. He's trying to enter with the queen, but black will block. Yeah, maybe now G6 wins because if G6 takes, I pick up the bishop. And that's over. So G6 wins for white, I think. Who won the first leg? Arjun actually won the first leg. So he wins the second one. That will give him almost a guaranteed chance to win the entire tournament as long as he plays average chess. So also only top 8 qualify for the next leg. So you also have to play maximum number of legs to qualify. So if you only play one, you have no chance. President is going to replace secretary. So president को replace कर रहा है भाई. Who is replacing the president then? Undescribed Raunak as incredibly talent underrated for sure. Grandmaster ने managed टिक्कू भाई करण भाई शांति रखें यार. What do you think future went to tries so early compared to Indian youngsters? I don't know, man. I mean, he's talented for sure. He worked hard. He went from 2580 to literally 2700 literally 1 year. That's crazy improvement, man. Yes, ये rated है सारे tournaments. यार OTB rated नहीं है, but online rated होंगे technically chess rated में. Congrats for your baby. बात तब stream हो जाए करेंगे भाई for sure someday जब 6 तक आप बन जाएंगे तो. मैं किसी भी ओपनिंग को देखता हूँ लगता है ये याद नहीं रहेगा क्या करूँ. तो भाई पहले एक से स्टार्ट करो ना, एक अच्छे सीखो पहले. Will you stream Prague? Yes. No, the court case was only against secretary election. अच्छा, so president नहीं मतलब मेरा point है कि तो president दोनों ही काम कर रहा है क्या? That's what I meant. Dance channel name टिक्कू के अजीब हरकतें. Moonwalk ही नाम रख दूंगा ना यार. Moonwalk ही नाम रख दूंगा चैनल का नाम Moonwalk. That sounds cool. गेमिंग चेयर हटा के बात तभी डाल दो भाई. लेकिन यार मैं नहा लिया आज के लिए यार, आज के लिए हो गया. Why did Gukesh withdraw? Because of time issues, man. He withdrew because time issue नहीं, sorry, internet issues. लंदन के फायदे क्या हैं? लंदन के फायदे ये हैं कि अगर आप लंदन के फायदे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ फायदा ये है कि इट्स वेरी सेफ. यू विल नेवर लूज अ गेम इफ यू प्ले कामली एंड यू ऑलवेज गेट टैकिंग चांसेस. Chat, do like the stream. Let's go to 500 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. हमारी फैमिली में शामिल हो जाए, मजे करेंगे साथ में. What happened to Nihal Gukesh game? Gukesh has withdrawn. Yeah, he has withdrawn. Next OnlyFans stream को मैं कभी नहीं यार. Let's go queen to d3, repair queen to b5 check. Give a check from this side, and that should be game over. Let's see how Arjun plays this. By the way, Raunak has won chat, Leon has won, Chidambaram has won. So all the players on top still winning, the bottom players losing. So this is turning out to a field of two separate sections. Some people continuously losing, some people continuously winning. Currently no one is secretary. He said he will place as per the laws. Higher security जिसको वे नहीं करना चाहते हैं. Okay. टिक्कू समोसा स्लिप नॉट स्कैम. भाई मैंने ऑर्डर कर दिया है पिज्जा नहीं सॉरी बर्गर ऑर्डर कर दिया मैकडी से. इट शुड अराइव. आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम इट विल टेक बट आई होप इट अराइव सून. अरे यार आधा घंटा दिखा रहा है यार, बहुत भूख लगी है डूड. व्हाट हैपेंड टू गुकेश? गुकेश भाई सो गया यार, मस्त सो गया वो. आप विड्रॉ करो भाई. मैं कहा नेम दैट चैनल टिक्कू नहीं यार. दैट साउंड्स लाइक अ टाइम बॉम्ब. मुझे ऑर्डर करा है नहीं यार.
E4 ओपनिंग का कौन सा बुक लूं? E4 ओपनिंग का बुक आई थिंक वो होती है ना, निगी की बुक्स अच्छी हैं यार. आई थिंक these are good books. ग्रैंडमास्टर सीरीज की ओपनिंग सीरीज है. Justice for Samosa. Oh, by the way, Queen E2. Oh, King D2 he played. He unpinned the bishop now. So his plan is check and resigns. Chat, you will not believe this. Queen G3 is supposed to be equal now. And Erigasi Arjun has blundered the game spectacularly. And now Aradhya Garg is back in the game. That is just insane. Hydrates versus what is this by? I don't know what is this by. This is insane, dude. रुको भाई, उधर टोपी. अरे यार, अर्जुन भाई ने लोल कर दिया यार. He lost this now. I mean, he will draw this now. अर्जुन हगू गैस, ये क्या है भाई? अरे he is not, क्या बोल रहे हैं यार? अरे his internet is not working यार. लाल वाली सॉस की बोतल लेके भाई पानी की यार. अरे कम ऑन, अरे कम ऑन क्या है भाई? अर्जुन पेरी पेरी. यार मुझे ऐसा हाई सा फील हो रहा है फॉर सम रीजन. ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? इफ यू आर टायर्ड तो यू फील हाई. दिस हैज हैपेंड बिकॉज़ मुझे बहुत ऐसे हाई फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है कुछ गलत पी के बैठा हूं. आई डोंट नो व्हाई. मैं चंडीगढ़ में हूं, जला क्यों रहे हो भाई? ठीक है यार, तुम हो चंडीगढ़ में. Although Arjun will still push, yeah, because I think he is safe. He cannot lose this one still. It happens to me, really? Yeah, it happens, right? You feel high. You feel a bit high. नशा करके बैठे हो टिक. अरे नहीं भैया, वो आपकी गर्लफ्रेंड का काम है. जो हमें से चुरा के लेके गए थे. चुरा के गर्लफ्रेंड मेरा कदम नशा करे. ये मजबूर है पर आप नहीं. हाँ भाई. Stand up once in an hour as well. Stand up यार. ये बात तो है. मामा अर्थ का शैम्पू यूज करो, मस्त पैसा गिरेगा बालों में से और कलर भी मस्त होगा बालों का. वाह, दैट्स नाइस ना. किक मिल रहा है भाई. किक नहीं चाहिए यार मुझे. फुटबॉल नहीं खेल रहे. एनसीबी लेट कमिंग. ऑल्दो दिस इज डिफिकल्ट टू विन मैन. व्हाइट विल स्टे ऑन द लाइट स्क्वायर्स. या ही विल स्टे ऑन द लाइट स्क्वायर्स एंड ताकि पीछे चेक ना. बस पीछे चेक नहीं चाहिए. यू वांट टू अवॉइड द बिशप चेक. दैट्स व्हाट यू बेसिकली वांट. नींबू चाट. ओह, ही ब्लंडर्ड. अर्जुन इज अगेन विनिंग. बिशप b4 चेक. अरे भाई ये क्या कर दिया है तूने? Now he is again lost and Arjun is again winning भाई. Again another twist in this battle. Don't you get exhausted? I do. I don't mind it though, it's fine. But I think मेरे को थोड़ा high लग रहा है. That's a bit weird. And now it's at queen h7 check. And the problem is अगर king यहाँ आएगा तो कुछ यहाँ check आएगा and it's dangerous. And king e6, I think even d5 check is possible. But even queen e7 looks deadly. आपका स्टैमिना बढ़िया है. आई नो भाई. आई एब्सोल्युटली नो अबाउट इट. आई एब्सोल्युटली नो अबाउट इट. नो टाइम फॉर Adhya. Yeah, that's also bad, man. Time pressure indeed. I think he'll blunder now. I think he'll blunder. Queen g7 should be lost because this I will capture the a3 pawn as well. And if he plays king e6, queen e7, king f5. Yeah, he plays this, but it's lost. It's lost now. He will size exes know about it. I am not sure they know. That's the unfortunate thing. Time pressure. Yeah, man, that's true. Just take on g7, man, and take on a3, and it's over. Or maybe king e3 first, yeah, saving this pawn. भाई चैट कितनी स्लो है भाई. 300 लोग देख रहे हैं चैट. तुम भी मेरी तरह हाई हो क्या? Come on chat, let's go. Let's go chat. Time pleasure. Yeah, that sounds like a better way to do it. Time pleasure sounds fun. भाई. सारी chat high है भाई. Chat, if you're high, say hi. If you're high, chat, say hi. Come on. If you're feeling high, say hi. पहले समोसा खिलाओ फिर टाइप करेंगे. 69 नहीं भाई. हाय लिखो फिर हाय से हाय. रेव असिस्ट. अरे रेव पार्टी करते हैं भाई, मजा आएगा. साहिल नायर जी हाय है मेरी तरह. बिल्कुल बढ़िया. अक्षत जी भी हाय है, बहुत बढ़िया. क्वाइस भी हाय है. देबो ताथी, सो मेनी पीपल हाय. ऑसम. आई फील यू मैन. मॉडरेटर भी हाय है भाई. ऑसम.
बैकग्राउंड में सुन रहा हूँ एग्जैक्टली आई थिंक काफी लोग वही कर रहे हैं भाई नो चैट को जापानीज बुलेट ट्रेन मत बनवाओ ये क्या यार एलिगेटर भी अच्छा अरे वाह 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 ये क्या कर दिया भाई खत्म चैट स्लीप इवन आई एम स्लीपी आई डोंट नो व्हाई एंड आई एम नॉट टायर्ड आई कुड डांस फॉर 5 hours राइट नाउ I just feel high. I just feel high for some reason. I don't know why. मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे कुछ पी के रखी हुआ मेरा सर ऐसे हो रहा है मुझे फॉर सम रीजन एनसीपी इनकम भाई कुछ था क्या भाई इस चीज में ये क्या खेला अर्जुन ने अर्जुन मुझे बोर कर दिया भाई अर्जुन जीतेगा भाई जीतेगा अर्जुन जीतेगा विद 3 पॉइंट्स प्लीज डांस नहीं भैया नॉट ऑन स्ट्रीम इक्वल क्यों दिखा रहा है वो बार हाई है यार वो भी हाई है आज रात को आओगे बिल्कुल शिवांश भाई आएंगे पानी था या कुछ और पानी है यार इस राउंड में फन नहीं है आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन नॉर्वे चेस एट दिस पॉइंट आई हैव टू अग्री बट आई थिंक कल मजा आएगा आई टेल यू व्हाई बिकॉज कल निहाल और अर्जुन का मैच है एंड सो ऑन सो अभी क्या अभी स्टेक्स कम है ना वी ओनली एंड निहाल इज नॉट प्लेइंग दिस राउंड सो इट काइंड ऑफ बिकम्स लेस स्टेक्स दैट्स व्हाई इट्स नॉट एज इंटरेस्टिंग बट आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज आई वांट टू सी हु विंस आई वांट टू सी हु विंस why AD not playing this tournament AD I don't know VD is not playing because he's playing the Prague Masters. चश्मा निकालो नॉर्मल हो जाएगा ट्राई आप क्या आप लॉरेंस बिश्नोई नहीं भाई why did the chicken cross the road why did the chicken cross the road I don't know yeah maybe there was a KFC on that road maybe I don't know but चलो बबलू ठेका के इंजन ही ऐसे हो रहा था स्टैंड या इंजन इज हाई आई एम हाई लेट्स गो किंग C6 मैन छोड़ो उस पे आधे को ये भी जान दो सब जान दो भाई बस ये पॉन पुश करो आज रेस्ट नहीं भाई आज भी मैच है कल रेस्ट डे आज मैच है भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है विशी अगेंस्ट वेस्ली सो आई थिंक द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर विशी इन दिस एंटायर टूर्नामेंट वेरी इंपॉर्टेंट अर्जुन 3/3 इंडीड बिकॉज रोड ज्यादा स्मूथ नाइस मेरी आर्ट मैम बोल रही थी किंग पास आ सकता है विदाउट 1 स्क्वायर गैप नहीं भाई आर्ट मैम कुछ नहीं आता यार आर्ट मैम सक्स अभी मुझे आर्ट मैम याद है भाई क्या सिखाती थी मैं स्कूल में क्या ही वेस्ट ऑफ टाइम था भाई वो मैं कौन सा मतलब वो पेंटर बन गया यार साइबर चेस कोचिंग भी करते हो क्या करता हूँ यार अभी लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास यार आई वुड सजेस्ट यू नो चेकिंग आउट कोर्सेज इंस्टेड मिस्टर मिल्क भाई या मिक भाई those will be better return on value भाई किशोर दा का गाना गा दो यार मेरे को गाने आते नहीं यार my throat is dead really dead टिक्कू सर गोवा हुआ कभी आएंगे यार बट मैंने सुना है आजकल मरमेड कम्युनिटी गोवा में बहुत फैली हुई है अनीश नायक बहुत फैला हुआ है सो आई एम बिट स्कैर्ड यार मुझे भी खींच के ले गए तो मेरे को मरमेड नहीं बनना यार मिक है मिल्क नहीं हाँ मिक माइक व्हाटएवर ये बार हार्ट चलो भाई B8 क्वींस एंड आराध्या रिजाइंस भाई लेट्स गो yep he resigns now and with this Legacy Arjun has won his game as well chat and that should be over okay come on Aradhya come on dude come on you can't be serious here yeah he resigns so कल स्ट्रीम करी थी अनीश नायक ने ओके मैंने देखी नहीं यार देखूंगा मैं हमारी आर्ट मैम ने लस्ट और लव पढ़ाया था सही में oh my god आर्ट मैम तुम्हारी काफी हॉर्नी लग रही है भाई let's go to the game of next round chat next round has started let's go to the final round of today round 8 we have Gukesh against Raunak. Raunak gets a free point in this round and we have Arjun against Guha and Nihal finally coming back against Chidambaram अरे भाई ये गेम बहुत क्रेजी होगी भाई Nihal against Chidambaram let's go Tikku Mermaid somebody please photoshop it please hey idea मत दो अरे that's he भाई he's he wow हम प्रोटेक्ट करेंगे नहीं यार प्रोटेक्शन चाहिए नहीं यार दिस फकिंग बार गिव्स हार्ट अटैक अरे यार चैट भाई डू लाइक द स्ट्रीम यार कम ऑन चैट 500 लाइक कर दो ना यार एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब जाएंगे आपका अपने सब्सक्राइब बटन होगा उस पे उंगली रखो और पुची करके दबा दो यार लेट्स गो Standings, yes, standings. My bad, dudes. So Raunak on 17 now leading the event. Chidambaram on 15. That's crazy. And Puranik on 14. Nihal on 15. This is a bit weird because Nihal की Gukesh के points add नहीं हुए हैं. So we cannot take these rankings for granted. इसमें I think जिन्होंने Gukesh से खेला है उनके points कम हो जाएंगे बाद में. So I think we'll look at that later. For now, Raunak is in sole lead here. Crazy form से Raunak भाई क्या खेल रहा है लौंडा.
and he's getting a walkover in this round. सब रेट चालू करो भाई. सब रेट पे इतना बड़ी ऑडियंस नहीं है रे. कौन ही मीम डालेगा रे. मीम तो मैं खुद ही हूं. विल ही प्ले लंडन नाउ? विल ही प्ले लंडन नाउ? आई थिंक इट्स कमिंग. I think it's coming. London coming, chat. Let's go. London, 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 London. Yes, yes. देखा chat. अगर किसी चीज को दिल से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उसके साथ मिलाने लग जाती है भाई. That's facts. Evidence. Predict candidate standings 1 to 8. If I could, I would probably start betting online, Tushar bhai. But I would only predict like top 3. I think top 3 में you'll definitely have Caruana, you'll definitely have Ding, and third person could be anybody else. The order depends on luck quite a bit. शिव भाई कहते हैं, oh no, Nihal lost. Nice भाई, nice. Only Nihal plays it. I also played भाई. ये वाला मैच अच्छा होगा निहाल से अरविंद. Yeah, that will be a crazy match because Arvind has to win this. Yeah, if he loses, his chance to win this tournament go drastically down. ये 4 दिन चलेगा. आज सेकंड डे भाई, कल परसों चलेगा ये. Can Arjun win this tournament? Arjun can भाई, बिल्कुल. Your favorite opening against Sicilian? I don't play 1e4 यार. So my opening assistant is nothing because I play 1d4, so I don't face it. Then opening is just like its name. You mean classy? You mean cool? सेल्फ बर्न हो, those are rare. रौनक वर्सेस निहाल कब होगा भाई? भाई वो 6 तारीख को यार. और इस टूर्नामेंट में आई थिंक इट्स, लेट्स चेक चैट. कल के पहले राउंड में, कल का पहला मैच ही है भाई अर्जुन वर्सेस निहाल सरीन. पहला मैच ही वही है, अर्जुन अगेंस्ट निहाल सरीन. कल का पहला मैच. देन सेकेंड मैच इज अर्जुन अगेंस्ट रौनक. अरे भाई. फिर थर्ड मैच इज okay, third match is normal only, and fourth match is Nihal against Aravindh. Okay, बाकी तो मैच नॉर्मल है, but I think कल के पहले तो मैच तो बहुत ही क्रेजी है भाई. ये मैच इंटरेस्टिंग है. Can Nihal same losing position? भाई Nihal will win this losing position भाई, and he will prove to you how London is a forced win. It's a forced win chat. सबको पेल देगा मेरा अर्जुन. Yes. मेरे निहाल अर्जुन आएंगे. भाई नो गुकेश. अरे भाई गुकेश इज विड्रॉन यार. इज दिस टुडेस लास्ट मैच? यस, इट्स टुडेस लास्ट मैच. आज का आखिरी भाई, आज का आखिरी. ये ओटीपी है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन है यार. एंड नाउ दिस इज अ वेरी सोल्स्ड बाय अरविंद यार. बेसिकली ब्लैक डज नॉट प्ले d5 because he does not give white the e5 square. If he plays d5, then knight 5 would be a problem, yeah? So that's why black plays d6 and simply develops his pieces very normally. And white does not have any clear plan. He will probably play a4 at some point. But it's not easy for white to make too much progress. क्या हुआ गुकेश को? उसका नेट नहीं चल रहा यार. उसका नेट नहीं चल रहा, so he withdrew. Nihal Raunak is the last match of the tournament. Oh, that will be crazy. टिक्कू टॉक्स. नाइस. एक दिन स्कूल बंद क्योंकि टिक्कू की टिक्की नहीं मिली. नाइस. कौन सी क्लास में भाई आप? लगता है किंडरगार्टन में लग रहे हो. ग्रनफील्ड डिफेंस अच्छा है क्या? बहुत सही यार, बहुत बढ़िया यार. लेट्स गो a4 भाई, लेट्स गो a4. ही प्लेस a4. ओह, ही प्लेड a4. चश्मा निकालते ही लो हो गए मतलब. अरे यार भाई यार, कम ऑन यार निहाल भाई, कम ऑन. लेट्स गो टू द अर्जुन गेम. क्या चल रहा है यार? अर्जुन गेम देखते हैं. अच्छा, गेम लेट खत्म हुई, शायद लेट स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स गो टू निहाल्स गेम. B3 Boncloud or London, which is the worst? Worst is Boncloud, then it's B3, and then London. London is the best by. I mean, if you have to choose Sicilian or London always. देखो भाई, आप कौन सी फील्ड में जॉब करते हो? किसी भी फील्ड में नहीं भाई. लंदन सिस्टम में कुछ नॉवेल्टी लाओ. वी कैन कॉल इट टिक्कू लंदन आला जवाहर लंदन. कुछ लाएंगे भाई फॉर श्योर एट सम पॉइंट. करण जी कह रहे लंदन इज वर्स्ट. इनको तो ऑफ कोर्स मेरी हर चीज से नफरत है. मेरी गर्लफ्रेंड से भी नफरत है. इनको तब भी चुरा ली इन्होंने. क्यों चुराई बे? नफरत तो है भाई. लंदन इतना बेकार क्यों है? हाउ टू लर्न कैटलान फॉर फ्री? आई डोंट नो मैन. यू कैन सर्च फॉर यूट्यूब वीडियोस ऑन इट. दैट्स वन वे. I to g5. Okay, that's a plan I've not seen before.
What's the plan of? I think knight c4 is the plan. I guess that should be the plan. Nothing else. There's no attack here, man. There's no attack. Just I kick the knight back. Imagine there will be a टिक्कू variation in London. Oh my god, I'll go crazy, dude. लंदन देखो बोरिंग तो है भाई. ब्लैक ने बोरिंग खेला. ब्लैक की हिम्मत d5 खेला ना. हिम्मत क्यों नहीं कर रहा d5 खेलने? खेल d5. हिम्मत d5 खेलना. ब्लैक के पास बॉल्स नहीं. डजंट मीन कि व्हाइट does not have guts. 69 रुपीज का कोर्स कहाँ यार? वो ये तो यार स्कैम हो जाएगा ना यार. बाउंस लड़ी क्या ही थोड़ी निकालूं मैं. लंदन ओपनिंग टिक्कू अटैक. आई थिंक इट विल लंदन ओपनिंग टिक्कू वेरिएशन. दैट साउंड्स मोर अप्रोप्रिएट. Calculation tips in chess, please. First step would be to calculate force moves and checks first. I think you should focus on that. Name 5 opening defense universities. Berlin would be one. I think Berlin ke baad Czech opening is one. Then you have Italian also, I think, is one. Then you have Spanish. Then you have और कौन सी है? वियना. यार छाटने से वियना बोला. सही बात है. एटलीस्ट 5 टिप तो बताओ भाई. एक तो फॉलो करो पहले. B3 इज बेस्ट. नहीं यार, लंदन ही भूल गया. अरे माय बैड, मैं लंदन ही भूल गया यार. अच्छी Am I even Sahil Tikku anymore? Who is this guy? ये कौन है भाई आदमी? लंदन ही आदमी रहा यार. मॉस्को में वेरिएशन है. प्रॉपर ओपनिंग नहीं है. Anyways, let's move on. Queen b3 played by Nihal Sareen. So this pawn is attacked, and you can of course just play rook a b8 here. If I take on b6, you can take on b2. But that's all safe. So rook a b8 I think is the only move. You can also play this, but that makes less sense. Who is leading the tournament? I think it's Raunak. This is our Tikku. दिल्ली के ऊपर बनाओ. दिल्ली गैम्बिट. दिल्ली गैम्बिट जहाँ पे बोर्ड पे बैठते ही प्लेयर बोलता है तू जानता है कौन हूँ मैं? दिल्ली से हूँ. That's the दिल्ली गैम्बिट भाई. ओपोनेंट भाग जाता है डर के. Does chess player socialize during or after OTB tournaments? I'm sure they socialize, yeah. I'm sure. Very sure, भाई. Very sure. लंदन भी लाइक तुम तो तेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे भाई. परदेसी जाना नहीं भाई. मैं भी बोल सकता यार. फॉग ऑफ वॉर इज चेस डेली वेरिएशन. टिक्कू इफ एवर गर्ल. ओके सिस्टम में इसलिए साहिल भूल गया. वकांडा गैम्बिट तो नहीं है कोई अब तक. कश्मीर गैम्बिट भी है नहीं यार. वी शुड हैव वन. बताओ ना 5 टिप भाई. 5 टिप. पहला टिप हो गया भाई, फोकस ऑन फोर्सिंग मूव्स. सेकंड, don't calculate the same variation like 5 times. Third would be buy some book on calculation. I think by Agard is a good book on calculation. It's a really good book. I think Ramesh sir ने भी recently निकाली है, because I think बातें करना बड़ा आसान है calculation के बारे में. You need to actually solve some puzzles and try to solve it that way. अरे मंदर भाई, thanks for becoming a Tikki भाई. इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा यार Tikki fans का. But thanks for becoming a member भाई. It helps a lot, bhai. Thanks a lot. If anyone's a beginner, he should not learn because he will get bored by chess. I beg to disagree with that. If you have the bishop d6 variation, there's a lot of attack there. How to research chess पढ़ी है? I think I've read a part of it many years back. थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, पूरी नहीं पढ़ी. Leningrad versus Sicilian any day, man. बेस्ट है भाई. थैंक्स लॉट यार. चैट रुको भाई, रुको. ओके, वी आर बैक चैट. लेट्स गो भाई. वी आर ऑल बैक. वर्कआउट कर लिया भाई. 2 किलो लूज हो गए मेरे. लेट्स गो नाउ चैट. लेट्स गो. कहाँ थे हम? डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा आ गई है साहिल सर के बंदर. yesterday Wang Hao said he doesn't feel bad which nobody does. लंदन बहुत बोरिंग है. प्लीज एफ ऑफ. ये क्या हो रहा है? फ्लेक्सिंग नहीं भाई, बस मसल शेयरिंग बोलते हैं उसको. बाय द वे लेट्स गो रूक e1. ब्लैक स्ट्रगलिंग. d6 pawn weak, e6 pawn weak, b6 pawn weak, सब कुछ weak. लेट्स गो.
मैं इतना फास्ट क्यों बोलता हूँ? आई थिंक माई माइंड थिंक्स रियली फास्ट फॉर सम रीजन एंड आई स्पीक रियली फास्ट. Like my mind goes and words can't catch up. अर्जुन गेम प्लीज भाई, अर्जुन गेम देख लेते हैं यार, अर्जुन गेम देख लेते हैं यार. लेट्स गो टू अर्जुन गेम भाई. ये तो कोले आ गया रे. छी 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 छी. कोले काइंड ऑफ जुकर और स्ट्रक्चर. छी 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 छी. इससे बेटर तो लंदन खेल लेते यार. ये क्या कर रहा है बिशप B2 पे? छी 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 छी. Anyways, so I think Arjun is probably going to be fine here in this game, and he should be, if anything, better here. Rook C8 के बाद, so Arjun should be absolutely fine. Because white, I mean, the queen on C2 looks awkward. The bishop B2 is kind of blocked by its own pawns. He would of course take on C5, but then black would have these hanging pawns he can use every D4 sack. So I think Arjun is doing fine. Let's do Nihal's game again. Kole for drawing it. Drawing nahi hai, but I think it's kind of passive. Yeah, it's kind of passive. If people roast the London, I think they definitely roast the Kole as well. Chess rankings prove that men are intellectually superior than women on average, कह रहे हैं रोहन जी. आपका मैसेज YouTube ने लिटरली हाइड कर दिया था भाई. जस्ट इमेजिन हाउ कॉन्ट्रोवर्शियल दैट इज. सो दैट्स नॉट ट्रू. चेस में कम लड़कियां टॉप पे हैं बिकॉज लेस फीमेल प्लेयर्स प्ले चेस. दैट्स द ओनली रीजन. निहाल जीतेगा क्या? पॉसिबल तो है बिकॉज आई थिंक ब्लैक को ना ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना. यू कैन नॉट मूव द बिशप बिकॉज दिस पॉन कैन बी हैंगिंग. यू कैन नॉट मूव द रूक बिकॉज दिस पॉन कैन बी हैंगिंग. यू कैन नॉट मूव द बिशप बिकॉज दिस पॉन इज हैंगिंग. So many pawns are kind of, a bit loose, and at some point when some pieces get exchanged तो कोई ना कोई pawn weak होगा. इतना फास्ट बोलते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रीम देखते हो. Do his impression. I don't watch stream at all, by the way. Chat स्ट्रीम लाइक कर दो प्लीज ना कर दो ना. 5 लाइक. लेट्स गो. 500 हो गए. 600 कर दो. एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस. निहाल जीतेगा क्या भाई? जीतना चाहिए यार. टिक्कू मस्क. कोले तो साहिल भी नहीं खेलता. एग्जैक्टली. कोले सो बोरिंग यार. इमेजिन करो. Okay, now queen B4 could be a move, tempting black into going D5. That would be really good temptation. Let's go भाई. 5 डिफेंस सब कर दिया. Oh my god. थर्ड चैनल का नाम खेला गैंग नहीं यार. रेयरिंग मत टिकट. Why Divya's not playing this tournament? Because Divya might be busy yaar. Nihal got 0 points for Worko, 3 points. I think Nihal got 0 points. But basically everybody will get 0 points. For now, the people who played Gukesh yesterday have some points there. They'll be removed later on. ये बताओ कि रैपिड का रेटिंग कैसे बढ़ाएं? हमारा पजल में रेटिंग 2100 पहुंच गया लेकिन रैपिड में 1100 है. भाई 2100 1100 भाई होता है यार. It happens. You're not focusing on strategic play. You're focusing on tactical play. Focus on middle games. Learn basic principles about how to move the pieces and so on. You can search any book middle game के ऊपर. That will really help you. You need some practice, man. I think tactics alone will not go very far. Dare for you commentate like you naturally never. Naturally never का मतलब क्या भाई? भाई रैपिड फायर फ्रेंच और प्रक. फ्रेंच D5 नाइट F6 गायको राइलोपेस. गायको कौन सा होता है? ओ राइलोपेस. E4 D4 H3 A3 क्वीन साइड किंग साइड क्वीन थ्री बिशप क्वीन टू बिशप 3 क्वीन थ्री बिशप 3. स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं यार आज नहीं, मन नहीं है. ओके लेट्स गो भाई. Queen B4. Okay, let's go to the game. Some of the game, man. Let's go to Vantika's game for a change. Okay, Vantika के पास फिर से king side खुला हुआ पूरा. And Surya is looking better with some weak H5 pawns. Open F file. And some active pieces. Knight to D4. Bishop to H6 maybe at some point. Bishop D3 also going here. So Vantika looks like under some pressure. Let's do the game of Abhijit Gupta, who's having a terrible tournament so far. And it's not changing much because he's again slightly worse against Vasakanar after knight takes g3, f takes g3. Let's go to the game of Gukesh का तो हो नहीं रहा है. Let's go to the game of Chidambaram भाई. Okay, ये तो हमने गेम देखी थी. Let's go to the game of Mendonca against Puranik. भाई ये क्या गेम है यार? पूरा king side खाली होगा for some reason. I don't know how this happened. Probably roughly balanced. किसी हिसाब से E4 के against least theory opening कौन सी है? E4, E5 would be the least theory because उसमें you can play solid chess. You will not lose if you play normal chess. You don't remember too much. अभी तो भी जिंक्स कर दिया भाई. वो कल भी बहुत हारा, ठीक है ना? कल भी बहुत हारा था भाई वो. तो हमने कुछ जिंक्स नहीं किया. रफली बैलेंस बोल के बार ऊपर.
वो E5 के बाद हुआ ना भाई, मेरे बोलते उसने E5 खेल दिया भाई, इसलिए नाइट F5 आ रहा है, पहले बैलेंस ही था भाई, ये देखो, देखा, आई एम नेवर रॉन्ग भाई, बट ओके, आई एम ऑलवेज रॉन्ग, बट स्टिल नाइट F5 now is a very strong move. Let's go to Nihal's game again. Oh, he plays queen b4, and now black should not play d5. Chat question for you: why should black not play d5? Is it not good to attack the queen? Why should you not attack the queen? Come on chat, should you play d5 or not? Why not? Standings game ground के बाद देखेंगे यार. Where is my burger by the way यार? बर्गर दिखा भाई, 14 मिनट अब तक, मजाक है क्या भाई? इतना टाइम, कितना टाइम पहले ऑर्डर किया था यार, ये तो गलती है यार, भूख लग रही है. इट वीकन्स e5, क्वीन टेक्स b5, भाई रुक जाएगा. अभी इज नॉट फीलिंग वेल आफ्टर कमिंग फ्रॉम मैच, दैट्स व्हाई ओके. Bishop h2 diagonal grows e5. There are many reasons. First of all, the bishop's diagonal will attack the rook now. That's one thing. For example, d5 here, I can simply move the queen. I can take on b5 now. That's one thing, and the rook will have to move. And also one detail, you know, strategically, for example, कोई कह रहा था कि मेरे puzzle rating 2100 है and my rapid is 1100. It also blocks this bishop. Like even if, you know, the queen went back to b3, let's say, it wasn't like a winning position for white. This blocks the bishop, and that means white is better. White is better. I have two very strong bishops, and your bishop on b7 is absolutely stupid. So that's why, regardless of tactical and positional reasons, you should not play d5 here, and black should simply play the rook somewhere. Maybe this rook somewhere. Yep. By rank best to worst if you're playing against Caro, French, or Puck. Caro, French, or Puck. I love playing against. It's fine. I don't play against the French and the Caro because I don't play 1e4. But there's one version of London system which transposes to the Caro, so I have some experience. Black has to wait. Black has to first of all somehow save this pawn as well. So queen g5 makes some sense. Defending this pawn, also threatening mate in 1. Good threat there. You could also play rook e d8 because this pawn is also hanging. So and you know, moves like bishop b5 look very risky after moves like bishop c6. So maybe white will not go for this. He goes rook e d8, saving the d6 pawn. Good move. Arjun की rank क्या है? Arjun की rank I think is like third or fourth now. I don't like French. Yeah, but I like how dynamic this is. It's very dynamic. देखो भाई, just for curiosity, लाइस के पैसे मिलते हैं या नहीं? नहीं भाई, लाइस के पैसे क्यों मिलेंगे? फिर तो बढ़िया है भाई, फिर लाइक करके पैसे कमाओ. I really felt bad for Maxime. He was not able to double long side castle. Reduce feels bad. Double long side castle मतलब फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे रौनक है यार. Okay, brief look at Arjun's game. Arjun is black. He's playing Mitraba. He plays b5, but Mitraba has a decent position. Yeah, he played similar setup against me as well. Bishop on g2, bishop on b2, and he has a normal position. Maybe knight a5 now, attacking the bishop is logical. Naturally, क्या होता है यार? Don't you think every player playing with the guy who lost the game should be given 1 point if any player withdraws? It's kind of weird, right? Because some players defeated him and some players do not play against him. So there's no correct answer there. Somebody will be pissed. चाहे कुछ भी कर लो, somebody will be pissed. There's no doubt. Who Mitra won against me यार? He won against me. I blundered in time pressure. So blitz game 3+2 था, तो मैंने time pressure में गलती कर दी. Let's go to the game of Nihal Sarin again, and okay, nothing has happened yet. Arjun nearly up in every match. Yeah, he has 3-0 today, man. He has 3-0 today. तीनों गेम जीता है, वो चौथी भी जीतने के चांसेस पूरे हैं. Have it defeated Carlson? नहीं यार. मित्रा वाले गेम में बच्चों वाली चीजें क्यों करी थी यार? टाइम घड़ी में 1 सेकंड था मेरे पास भाई, 1 सेकंड था यार. 1 सेकंड में हो जाता है. गलती नहीं, ब्लंडर बोलो भाई. ब्लंडर का हिंदी वर्जन क्या होता है? गलती तो होता है. व्हाट्स द हिंदी ऑफ ब्लंडर? ये 4 दिन है यार, ये 4 दिन है. कल था, आज है, कल है, परसों है. कितने क्या था? साई भाई क्या डेर भाई, क्या डेर. पाप, ओ माय गॉड, पाप तो नहीं होगा यार.
आप इसी सर के मैच है क्या? हाँ यार आज भी है, क्विज सेक में हो जाता है, मतलब आप चाहे जीएम बनो या नहीं, हमारा फेवरेट चेस स्ट्रीमर आप ही रहोगे यार। थैंक्स जेवाई फॉर द काइंड वर्ड्स। बवंडर नहीं यार, बड़ी फूल मींस ब्लंडर भाई, बड़ी फूल इज इंग्लिश आई थिंक। सेकंड कौन है एनएमजी? सेकंड यार आई थिंक इज निहाल, लेट मी कंफर्म। इस चिदम्बरम, बट आई थिंक चिदम्बरम के 3 पॉइंट गुकेश से आए हैं ना, तो सब ट्रैक हो जाएंगे तो 12 पॉइंट जाएंगे उसके, तो आई थिंक निहाल इज सेकंड फॉर नाउ। I remember Bhakti some game by Arjun's position. Okay, I don't remember that game. Kenny G won. Okay. Galti is mistake. Blunder is Hutiapa. I don't think so. That's a translation for anybody who's looking not to abuse someone. So I disagree. Sad for Gukesh. Why Gukesh? ठीक है. I mean he'll play some tournament. It's fine. He's playing the Olympiad, dude. He doesn't care too much. I think Nihal, Gukesh, Arjun, and Raunak are all fine. मैं मैक्सिम किंगीफाई की लूजिंग स्ट्रीक के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। Didn't he just play queen b4? ये क्या है भाई? Queen b4, rook d8, queen b3. What? But why? ये क्या था भाई? Okay, that's I can't understand that one, but okay, we'll see. Blunder means king से king check. भाई वो तो एक ही बंदे ने किया आज तक, वो तो legendary game है. You check Levon's minute in 3 for moves once. It was a shocker. Oh, okay. What happened to Gukesh? Gukesh is not playing because of net connection. He could not find internet today, so he's withdrawn. By the way, b4 played now, and regardless of what you either take or play c4, let it be. I think black is equalized. Okay, queen c2, putting the queen here. But what was queen b4, queen b3? मेरे को समझ नहीं आया यार. I could not understand it. Like it makes no sense in my head, at least. You like Hikaru? I mean, I have nothing against Hikaru. Not a big fan of, I would say, but not a hater either. Arvind plays good man. Yeah, he plays well, good chess for sure. Okay, now rook d8 looks interesting. Yeah, rook d8 putting pressure on c3. He takes first. Now he'll play here, I think. At what position was Gukesh after last day? I think he was second last only. He was not playing well anyway. So I think it's not a big deal. But yeah, some players will be pissed off. People who actually won against him, they'll be very mad. Waiting for 100k subs. Thanks for Jai. Bro, don't you think chess mostly has become more about memory and preparation? I think I answered that question earlier. It has kind of, but it still has some logic there, because you have to, after all, play half of the game yourself. What happened to Gukesh title? Nice. Among Nihal, Parag and Arjun, who think is better in classical format? For now, it has to be Arjun, dude. We've not seen Parag play classical chess, so we still don't know about him. Arjun winning again, really? Oh my god, let's have a look. Okay, so Mitrava has kind of played f4, which is a bit of over expansion, I feel, because you have the e4 square, and black has two very strong bishops pointed towards black's king, and even the knight joining in now. So also this d file is also not so comfortable, and knight on a5 is not doing, I mean, it's not doing much. So I think yeah, Arjun looks better, although this is not done yet. This is not done yet because the game is still very complicated for inside to be clearly better, I think. So we chalega, we game lamba chalega, it will not be so clear. Let's go to Nihal's game again. He plays bishop d5, and now of course c4 should be played, otherwise I think this will be a backward pawn. He'll next play rook c8, and then you can't play c4 ever, at least not with the full surety. So let's play c4 now. Strongest player will defeat it. A strongest player I would say OTV में I think 25 वो था Lucas Van Forest, और online में I think वो था Bartosz I think was the strongest player. I'm not sure though. Am I being regular? Am I being regular? पता नहीं यार. I would love to play as black in Arjun's game. Yeah, looks better for sure. ये लो भाई, क्या है भाई ये भाई, ये इतने सारे बॉट्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है.
Okay, Bichajiti solves the back rank issue now. The king can go to h2. But this is a slow game. Let's go Arjun game. This looks fancier. Eric Rosen को भी हराया है ना? हाँ, उसको भी हराया. But I think he had a time. I had a time match there, so that's the main difference. Have you defeated any Super G like Hikaru Magnus? नहीं यार, I'm not that strong Shang भाई. इतना तो ज़्यादा हो गया यार. Is Lucas brother Jordan? Yeah, he's the brother of Jordan. Yes. Yeah, C4 is playable indeed. It's playable भाई. इतनी इन बॉट्स की कैश कर यार, ये बॉट्स नहीं कहाँ से यार, बहुत ज़्यादा हो गया है भाई. इंक्रीज नंबर लाइक एक्सपोनेंशियली, लाइक हर स्ट्रीम में पता नहीं कितने सारे पहुंच जाते हैं. मेरा बर्गर नहीं आ रहा बस. ओ बर्गर आ रहा है 3 मिनट में. नाइस. What do you think? Who's the next world champion? I expect the next world champion to be one out of Ding, Caruana, or maybe Hikaru as well. Let's see. Yo Cham TV. बर्गर में स्पाइसी पनीर मंगाया है, मजा आएगा. आई लव दैट बर्गर. आप अब कॉमेडी शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते यार? टाइम नहीं है अभी यार बनाने का. बनाऊंगा फॉर श्योर एट सम पॉइंट. अगर शॉर्ट्स बनाऊंगा ना, आई विल पुट इट ऑन इंस्टाग्राम नाउ, बिकॉज आई थिंक इंस्टाग्राम इज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट्स आई थिंक देन यूट्यूब. हु इज लास्ट इन दिस? लास्ट गुकेश ही है बिकॉज ही लेफ्ट द टूर्नामेंट. हे थैंक्स लियोन भाई, लोन भाई. फेवरेट ओपनिंग लंडन सिस्टम या क्वींस गैम्बिट, वन ऑफ दीस श्योर. इसलिए इनकॉग्निटो यूज करना चाहिए भाई. इनकॉग्निटो कैसे यूज करें यार, वो भी है ना. मैंने अच्छा तुम उस सेंस में कह रहे हो क्या? अरे यार तुम उस सेंस में कह रहे हो. छी यार, छी भाई, ऐसा काम नहीं करता मैं. भाई गुकेश लेफ्ट. भाई गुकेश लेफ्ट. गुकेश क्यों किया रे तूने? कोई बताओ रे चैट, कोई बताओ रे. भाई गुकेश लेफ्ट. Okay, now Bishop even played, and Black can probably even play G5 now and open up the king side, yeah, because it looks like he will have some attacking chances. Title change मुझे लग रहा करना पड़ेगा. I know generally पूछे भाई, I know. मुकेश क्यों नहीं किया? छी मत करो. सेल्फ लव इज वेरी नॉर्मल. ये क्या है यार? भाई मेरा बर्गर आया कि नहीं आया यार? आई नीड सम एनर्जी डूड, कम ऑन. माय एनर्जी इज इन योर हैंड्स. बर्गर पड़ी. ये बर्गर वाला बंदा मेरे घर से लिटरली 50 मिनट दूर पे बाइक पार्क करके बैठा हुआ है. होपफुली भाई आ गया होगा ऊपर. आई हैव ऑलरेडी पिन्ड इट आयुष भाई. मुकेश क्यों नहीं खेल? I think this might be the new Can VD win Tata Steel. Why is Gukesh not playing? Gukesh भाई क्यों नहीं? अरे ये क्या हो गया भाई? ये ब्लंडर कर दिया भाई इसने. बर्गर वाला आपकी स्ट्रीम देख रहा है भाई. आजा यार, दे दे बर्गर मुझे. भाई ये क्या था यार? इस अरे चैट मूव देखो. Queen takes G2, Knight takes E3, chat white to play. White to play only move to hold equality. Come on chat. White to play. मेरा बर्गर आ गया. Yes, तुम मूव फाइन करो भाई. भाई बर्गर तो आया ही नहीं यार. कहाँ है मेरा बर्गर? ऊपर से मॉम ने कुछ और खाने को दे दिया है. बताओ यार, पेरेंट्स का अभी भी ख्याल करते हैं तुम्हारा. क्वीन G7 इंडीड. क्वीन टेक्स G7 as a move and king के बाद knight takes F5 check. King goes to G6 and knight takes G6 and the game is equal. Yes, this is going to be a draw chat. He has taken on E3. Let's see if white can find Queen G7. Chat like the stream bhai. Let's get to 600 likes if possible before the stream ends. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel guys. Family में शामिल हो जाओ भाई, मजा आ जाएगा यार. मैं क्या खाऊंगा यार? गलती कर दी क्या बर्गर मंगा के मैंने? पेल
पेट दर्द करेगा, उफ, कैमरा खा के आओ, कैमरा खा के आओ, व्हाट? Why Gukesh is not playing India versus South Africa series? Pin this, we have to deliver breakers to silence the one left. भाई नहीं भाई, कुछ पिन नहीं करना भाई, चैट सस्पेंस में मरेगी। जो नई चैट आएगी ना, सस्पेंस में रहेंगे वो लोग। उनको पता नहीं अब कोई पूछेगा ना गुकेश व्हाई इज नॉट प्लेइंग, पता नहीं भाई, गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, खत्म। शाम भाई और स्मार्ट बन रहे हो हैं? चैट में तो मुझे खाते हुए देखो भाई, चिल करो। ओवर भाई, ओवर गेम इज ओवर भाई। क्या खा रहे हो? कश्मीरी ब्रेड खा रहा हूँ यार, मेरा बर्गर तो दिया ही नहीं गया मुझे, कश्मीरी ब्रेड खा रहा हूँ यार, टेस्टी होती है। Knight F5, Rook D1 check। निहाल गेम चलते भाई। निहाल की क्या इक्वल गेम है रे, ओ माय गॉड, कितनी इक्वल है रे, इससे इक्वल तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है भाई। लेट्स गो बैक टू दिस क्रेजी गेम भाई। बार इज डांसिंग, ओके नाइस। माइक पास लगे ऐसा मत करो, लुक भाई। क्या करके तुम्हारे, I am not as good as Amran chat. I'm sorry, I apologize. Let's go to the game. Rook king of front takes, check, takes. सब कुछ मार दिया रे। Arjun is back in form chat, 4 wins in a row. Arjun is back in form. He has won 4 games in a row. It's over man. क्या खेल रहा है अर्जुन यार। निहाल गेम ड्रॉ गया। This is dead draw. I mean, maybe he'll try to push, but it's supposed to be equal, 5 pawns each, same side of the board. I mean, almost. It's supposed to be a draw. I think इसी गेम मस्त है भाई। क्या खेला यार भाई, लंदन खेला, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये भी है, मुझे अपने स्ट्रीम पे बुलाओ कभी। क्यों भाई, आप स्मार्ट दिखते हो क्या? Can you tell us about this tournament? बस $1 लाख स्टेक पे है इस टूर्नामेंट में। That should be enough. Arjun is not 2700 भाई। टिक्कू ये क्या है भाई? बोर्ड वाले विजिट को दिक्कत तो नहीं होगी ना, सामने 2780 जीएम आएंगे ना भाई, वही तो है ना। यस टू राइज अप टू द ओकेजन, दैट्स द थिंग। छोटी बच्ची हो के, यस। $1 लाख कितना होता है? कर लो कैलकुलेट भाई। Do you watch stand-up comedians? I do, man. I do watch a lot of stand-up comedians. I've seen a lot of starting में ट्रेवर नोआ ये सब देखता था, तब से चॉइस में थोड़ी चेंज हो गई है।
ASMR बनाओ चेस छोड़ के, नहीं यार. Maybe bishop e4 here looks strong. Setting up mating net यार. Rook bishop e4 check and king e3. I press it. 70 लाख होता है लगभग. Exactly. क्या हुआ बार को? बार हाई है भाई, बार को छोड़ो. बार बहुत हाई है. What is the time format of this Olympiad? I'm not sure exactly. I think this is the longest time control. Olympiad means the longest time control. जितना लंबा होता है उतना लंबा. आयुष 2200 तिकू भाई Blitz awesome यार. Have you defeated any GM? Yes. प्रखर समय ट्विटर पे संदीप के शॉट्स लेते हुए. क्या बात कर रहे हो? Really? शॉट्स लिए क्या? कौन से शॉट्स भाई? Let me check प्रखर ने क्या डाला है ट्विटर पे. ऐसा क्या डाल दिया यार? संदीप की तो भाई लग पड़ी. My bad. पहली लग गई. क्या किया भाई? ऐसा क्या शॉट्स लिए भाई? मुझे बताओ यार. I'm kind of curious. I don't see anything भाई. कुछ देखा नहीं मैंने भाई. कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा मुझे. Unfortunately, I can't see anything. इंस्टा स्टोरी देखा. इंस्टा स्टोरी है क्या? ओके. शादी क्यों कर रहे हो? लव योर कंटेंट बाय द वे. शादी नहीं कर रहा भाई. रुकेश वन खेलो ना यार. रुकेश वन एंड जस्ट फिनिश इट ऑफ. खत्म. ओ ये क्या हुआ? ओके आई वेंट बैक. रुको. यप. ओनली फैन बनाओ. काफी फॉलोइंग होगी. नहीं चाहिए यार. इस समय गैम्बिट कोर्स बनाओ ना यार. नॉट इंटरेस्टेड. आई रीच 3000 इन ब्लिट्स. ओ माय गॉड. आपके पास तो आर्टिकल अभी आएगा चेस कॉम पे. अमेरिका इज जस्ट लाइक कार्लसन्स ओलंपियाड, जस्ट वन साइडेड. आई मीन डूड इट्स लाइक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि इट्स नॉट इवन अ बैटल. लाइक उनको बैन करो यार अमेरिका को खेलने से ओलंपियाड. इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लेके आ रहे हैं यार. मतलब कुछ काम धंधा करो यार. मतलब क्या तुम ओलंपियाड में इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लेके आ रहे हो? काम करो ना अपना. आप सैंडी भाई जैसा नहीं होना. कैमरा पे देवता एंड BTS अ बुली. हु सैंडी भाई है पहले तो. निहाल का गेम डेड ड्रॉ. आई थिंक इट वाज अ डेड ड्रॉ एट सम पॉइंट. लेट मी चेक. ओके थोड़ा चेंज तो हो गया बिकॉज नाउ इज अ पास पॉन बट शुड बी अ ड्रॉ मैन स्टिल. आई डोंट सी हाउ ही विल पुश ऑल द वे. वेरी डिफिकल्ट डू दिस बिकॉज ब्लैक के पास भी अपने पॉन्स मस्त है. किंग सेफ है. US talent खरीद लेता है. Look at Aronian. Yeah man, but it makes sense for Aronian, no, because he gets more sponsorships. He can earn more money. He can put more money into coaching. He has more resources, more तारीफ उसकी ज़्यादा होगी. He gets more recognition. So of course he'll do it. MC वालों को 150 काटो मतलब. कल वेस्ली सो ने कहा many players do not want to play in India and many are not coming. Is it true? ये कब बोला उसने यार? I have not heard about this. I don't think it will be about India here. I don't think so. कि मतलब लोग इंडिया नहीं आना चाहेंगे. अरे ने तेल लगा. ये क्या है? टीम क्या क्या है में भाई? सारी दुनिया के 190 देश खेलेंगे रफली भाई. इमेजिन करो. स्टैंडिंग्स देखेंगे भाई. आई थिंक स्टैंडिंग बाय द वे अब तक कोई भी गेम खत्म नहीं हुई. क्रेजी स्टैंडिंग्स ये है यार. फिलहाल के सदवानी इज ऑन टॉप एंड निहाल एंड पुरनिक एंड चिदम्बरम कैचिंग अप बिहाइंड हिम. ये टूर का फाइनल परसों है यार. 4 दिन चलेगा बस. मैक्सिम सेड ही विल थिंक ही विल फॉल इल दैट्स व्हाई ही इजंट प्लेइंग. हाँ मैक्सिम ने कहा था. आई हर्ड बट दैट्स अ बिट वियर्ड राइट. Your comments on cracking getting honors from government. I mean, his sucking balls worked, yeah. Okay, maybe Queen C1 now. Well, Nihal has to push the pawn all the way to C7. Maybe then he has some chances. Otherwise, but Queen C1, there's Rook A8 and setting Rook A1, so not comfortable either. चलो कभी तो मेरा चैट पड़ा. सैंडी भाई संदीप महेश्वरी. अच्छा 5 राउंड के खाने से भी इल तो कुछ भी हो सकता है. वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है यार? यार बहुत भूख लगी है भाई. बहुत भूख लगी है यार. ब्रेड खा रहा हूं. नहीं करना रे फक. तू जाना यार. क्या है भाई ये? क्वीन सी ऑन रुके रुकी वन. या दैट्स द आइडिया आई गेस. मैक्सी
But I don't know, man. Like the thing is, कि मतलब why they would not want to come to India? I don't see any reason not to. I think government scheme से slow हो गया क्या burger पता नहीं यार. I think आप ही क्या हो घर पे क्या पता. अब stream के बाद ही खाऊंगा यार. 7:30 बजे. 18 plus नहीं है. When will I become mod? Can I redeem Dark Steel? No and yes. Novice में कितने rounds हैं and who is Vishy playing today? Novice में 9 rounds हैं and Vishy is playing Wesley So today and आज बहुत important game because I think Wesley So is second right now at 4.5 points or 6 points I think. So we need to push him back. Yeah, if he can push him back and win at the same time, that will be awesome. Now he'll play Queen C and roll up one push to. Yeah, that's also true. Yeah, I could totally just play this. This will be a draw chat. Let's go to Arjun game. खत्म हो गया क्या? They're still playing. I mean, which is ridiculous. So Guha is still fighting on for some reason. I mean, just Rook B2 wins on the spot. I think King here. Check. King here. King here. King C3. Maybe there is reason to play on. It's not trivial, yeah. जब मैं बॉट बनाऊंगा आपकी स्ट्रीम ही रेड करूंगा भाई. नहीं करना यार. प्राइस फॉर नॉविचेस होगा यार, कम से कम लाखों रुपए होगा यार, करोड़ रुपए होगा. Which if I played now, okay. Why will Black will not trade? Why will play Bishop D5? Bishop का गेम कितने बजे आज? 8:30 बजे है. We'll again start around 8:45 I think the stream. मैं जैसे ही स्ट्रीम एंड करूँगा I think 10 मिनट में I will schedule the Vishy stream and then I will go to, I think I will have dinner and then I'll go to Tanya stream at 8 and then I'll be here again at 8:45. अब से कर रहा हूँ. आपने दिल तोड़ दिया मेरा बोलकर. भाई तुम मेरा रोज दिल तोड़ते यार लर्नेट्स में गाली देकर. भाई you think commentating and seeing so many games has improved the game too? I don't know man, maybe at least it keeps my game up to date. Yeah, I'm not out of touch for sure, but I'm not sure if it's improved or maybe it has to somehow help for sure because I'm technically analyzing the game, so it definitely helps. You want to see burger? By burger तो पेट में ही रहेगा सीधा. Nihal has drawn. I told you it's a draw. Nihal drew. He has drawn, dead draw. Messi said about the reasons, heat reasons. Emil and Messi said the same reason for Chennai Heat. That would be a reason though, man. It is a genuine reason, right? By the way, indeed, Guha has resigned because the bishop is lost. The king cannot defend the bishop. King C3, rook takes D5. So Arjun has won. Nihal has drawn. Let's go to the game of Chidambaram का Nihal से draw हुआ है. I think Raunak's game becomes. Raunak played Gukesh. So I think we already have all the players here who have kind of played the main thing. Matlab, you already know the standings pretty much, the top standings. Let's have a look at the standings right now. So I think in the standings chat we have Raunak Sadhwani, who's on absolute top still, and he's cruising through for now. Nobody is catching up to him. Then you have Chidambaram, who's kind of still fighting, although his 3 points is subtracted from here, so he'll be on 13, but still in the league. Then you have Nihal and Arjun, both trying to battle as well. So I think it's going to be a battle between Raunak, Arvind, Nihal and Arjun, yeah, and Puranik kind of. So these 5 players will be the ones battling. I think all top players kind of reach the top now. It's kind of more logical. Although some players lag behind. Of course, Abhijit is a surprise, yeah. He's scored 1 point in the day. 1 point. Vantika playing okay. Aradhya playing well, I think. And yeah, Guha also playing well. Baki theek khel rahe, I think. So I think I can end the stream now, chat. We know the results pretty much. आपका पीसी सेटअप कितने पैसे का है यार? आई थिंक धीरे करके लिया है मैंने. माइक धीरे लिया है. पहले मैंने आई थिंक ड्यूएल माइक लिया था, फिर लैपटॉप लिया था कुछ टाइम बाद, फिर मैंने कैमरा लिया था कुछ टाइम बाद, फिर ये लिया बहुत टाइम बाद. अरे भाई बॉट भाई जा रहा हूँ मैं भाई, जा रहा हूँ बॉट भाई, जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ भाई. कितने बॉट है रे, कितने बॉट है रे. ठीक है चैट, आई विल सी यू एट 8 PM ऑन तानिया स्ट्रीम. I'm not sure if I'll stream myself or not. Regardless, 8 बजे वहाँ मिलूंगा. And then 8:45 we'll be here with the Norway Chess Tournament. Bye chat. Do like the stream before you leave and do subscribe if you're here for the first time. I'll see you soon. Take care. Keep smiling. Shabba khair. Bye bye. Bye bye.